and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon. It's the final day of this cricket tournament. Nazim is a new batter in, but he's in non-strikers, and Rauf, the bowler, has got a lot of responsibility to tighten up the screws. This time Hakim, a very cool customer as far as the cricket is concerned. He knows exactly what to do in this situation like this. He just tipped that one down to mid-wicket region for a easy single. With that single, score number moves on to 32 on the board. That means 7 more runs required for the victory, and remaining 11 balls. And now it's going to be a very interesting strategy. I want to see the captain of Team Matrix. They wanted to put some extra fielder inside the ring to put pressure. Now 5 fielders inside the ring to put some pressure onto the batter. This time catch, it is a ball, and the dash is taken. Aman, the fielder, down at deep extra cover region, charging to that one. Once it looks like ball will going to slip out of the hands of the fielder, but ball of course slipped out of his hand, but Aman couldn't manage, just not really missed the opportunity in the second attempt. Kept the eye on the ball. Second attempt he completed the catch, and Nazim back into pavilion as a golden duck.
What just we are talking about, cricket is game of glorious uncertainty, and especially coming to this cricket ground, it's not so easy. If you think that it's getting 7 runs in remaining 10 balls, it's so easy. But so you can see that if you read the pages of the history of this particular cricket ground, you can get so many example, even less than 7, less than 6, which is depended by the bowler. Even it was looks like that chasing team will going to win this match is comfortably, but one wicket will going to change the complexion of this game. Parvez is a new batter in. Rauf strikes. Can he able to get one more here to put some pressure onto the opposition? Wait and see. Rauf bowling, right arm over the wicket. Driven, catch it is a call, but Parvez played that one very sensibly, just wide of that bowler. Bowler's back drive down to deep, long on revision with that single scope and numbers on to 33. 6 more runs required for the victory. 9 deliveries remaining. Akim back on strike. Rauf bowling away from us, taking his own time to deliver the ball past umpire Mohan Iyadi. This time again, a nice looking drive there from Akim. He is a very good cricketer. He's a cool customer, perfect personality to handle the pressure situation like this. One more single with that single scope and moves on to 34 on the board. Just 5 more runs required for the victory, and still 2 more deliveries left in this over. 8 balls, 5 required, and the new batter Parvez is on strike now. Rauf bowling away from us. Right arm over the wicket. Parvez this time they wanted a single there and dotted delivery. This time Parvez wanted to push the ball to the cover point region because of that slower one ball by Rauf. Very good thinking from the bowler's point of view, that he bowled a slower one, and the bowler batter placed that one back to bowler, and there is no chance at all for any run. 7 balls, 5 required. Rauf again, right arm over the wicket, going for the sweep shot, straight to the field, and it's going to be a suicider. Absolutely a suicider. Now pressure is on. Great piece of bowling there from Rauf. Really is justifying the addition of the captain of Team Matrix. Bowled a beautiful over of just 3 runs and picked up a wicket as well, one run out. So now match is absolutely, it's balanced. I've already mentioned this is not a kind of ground you can get a run easily. This is a kind of ground even 5 runs in 6 balls, definitely going to be a hard work required from the batters. Team Matrix has got opportunity. Just like I mentioned, cricket is game of glorious uncertainty. It's unpredictable game. You can't say anything cricket until you're bowling the last delivery of the over, and until you are going to get a last run for the victory. It's very difficult to say which team is going to win this match. It's going to be a very interesting last over. And after that long discussion, they're just thinking about the bowler who can be the better to handle the pressure in the last over to restrict the 5 runs. It's none other than jersey number 33, Naushad. He's been asked to bowl the last over, and wait and see how we're going to play with the Akim, the experienced Akim. But good point to see here is for the team KFC Kodikal that Akim is on strike and Shifaz is on non-strikers end. A very interesting game of cricket from the morning itself. It's going to be what I'm talking about. The early morning itself, I mentioned that this is going to be one of the most fascinating day of cricket, and we are going to witness in this last over which team will going to handle the pressure. Here is the first ball. Right number on the wicket. Akim drives that one down to deep long on range and running hard, looking for the second. Very difficult to get. In comes the throw. Wide throw coming from the fielder. This is what you're talking about. Akim is all about. Being the experience is not important, but converting that experience into performance is always going to be a key for the success. Being the experienced campaigner for the side of KFC Kodikal, Akim knows that losing a wicket or not, it doesn't matter, but he need to get back into the strike. And 2 runs completed, that means 3 runs required for the victory in the remaining 5 deliveries. That couple of runs will go to release the pressure from the batter. Naushad. Right above the, oh my goodness, it looks like the bowler, I think so, is gone. Akim is bowled around the legs, too far across the line of the delivery, wanted to flick that one off his legs.
Sometime it's always, if you have any amount of pressure, any amount of experience you have got, but the condition of the game is always going to be a key to how to handle the pressure. After getting a 2 runs in a first ball, Hakim just thinking about why to take a risk. Just I wanted to flick the ball off his legs to get the single, but the ball which is almost in his midline leg stump, and now shot bowled a beauty. Once again twist in the match. The wicket in the previous delivery is going to make a twist in the match because another 3 more runs required for the victory in 4 deliveries. If the match will go into ended in a tie, then winner will going to decide by tossing the coin. The luck will going to be the luck will go into judge if the match will go into ended in a tie. 3 to get, 4 to go. New batter coming to the middle is Dakshit. Now shot. Right arm over the gate, slashes that one. That going to be a release the pressure. 2 runs required for the victory. 3 balls remaining. She falls back on strike. Now shot, can he able to get the magic delivery here? Of course, after getting a wicket of Hakim, he seems to be one of the most confident bowler, because it's not so easy to pick the wicket of Hakim there. Then he just wanted to get 1 or 2 very good deliveries for his team. 1 for tie, 2 for win, 3 to go. Absolutely a fantastic match is in progress. The morning itself, it's going to be a very good match for the cricket lovers. Of course, a number of viewers enjoying the game of cricket in the morning itself here. Naushad will go into ball the decider delivery. 4th delivery. Right arm over the wicket. Going for the single. Chance of run out. Needed to hit the stump. Misses the stump. They completed single. Looking for the 2. In comes a throw. That's it. KFC Kodikal won the match. KFC Kodikal won the match by 2 deliveries to spare. And what could be a chance of run out there for Naushad? He not only misses the stumps, but he produced that extra run in the form of overthrow. So Team Matrix slight a bit of disappointed with the result, but they played a very good game of cricket. It's not so easy to defend a small total like a 39 against a big team like KFC Kodikal, but they hold that now till the end, but unfortunately they couldn't manage to defend this total. But can they win defend this total if they manage to hit some stumps? They miss some opportunity. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ 4 ಆಟಗಾರರ ಸಹಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟಾರ್ಪಿಡೋಸ್ ಖಾನಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. So now it's the time to announce the man of the match. Always we are just looking towards those who are getting more runs. They are giving that the man of the match. But sometimes the matches like this, the low scoring game matches like this, there is a big contribution from the bowlers. And you will never miss that opportunity to encourage the bowlers, because
the bowler who got fantastic 2 overs for team KFC Codical, the very young, talented Shifaz, who is judged as the man of the match for his outstanding 2 over spell. 2 overs, no maiden, conceded 7 runs and picked up 3 wickets, and he scored very important 2 runs in that final over, so that he is judged as a man of the match of the first match of the day number 2 of this prestigious Nazar Champions 2024. And may I request Mr. Shifaz to please come here and collect your man of the match award from the president of Nazar 9th block. Shafa will go into present man of the match award for the bowler Shifaz. ದಯಮಾಡಿ ಶಿಫಾಜ್ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಡೈಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶಫಾ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನಾ. So may I request, yes, the cameraman is covering that presentation. Shafa presenting that man of the match award for Shifaz, is a very young, talented bowler for the side of KFC Codical, has got a fantastic journey, and first match itself he's been outstanding in his bowling, and he's deserved this man of the match award. Thank you. We'll take a short break here, and after a short break, my friend Mr. Gopi will going to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you. So the chance is given to the captain of Torpedoes Khana to choose batting or fielding because of Gorian boys players delayed to make a sign in the official chart. Because of that, the option is given to the captain of Torpedoes Khana about the decision whether it's a bat or ball. So Torpedoes Khana, after won the toss, they elected to field first. And the match number 2 of this day 2 of the prestigious cricket tournament, Nazar Champions Trophy 2024, is now coming up live exclusively right in front of you within a just short while between Gori Young Boys versus Torpedoes Khana.
This cricket tournament, Nazar Champions Trophy 2024 is now going to begin, and that match is now starts with just while. Before that, I have to announce some donors' name. Nazar Champions Trophy 2024. The best wishes came from Mr. Inayat Ali, KPCC General Secretary, Mr. Dawood AAC Engineering, Rakib Bismillah Scrap, Safa President of Nazar, Zamir Jeddah KSA, Car Paradise Rizwan Firoz KSA, Dawood BMR, Asif Saudi Arabia, Protect Hafiz Katipalla, Chaipati Mangalore, Today Sports Club 9th Block, Junaid AP Transport, Ahmad Kabir Dubai, Rahim Abu Dhabi, Javed Dubai, Rehzad Saudi Arabia, Riaz BK Gold Rizwan, Kabir Car 9th Block, Mansoor KC 9th Block, Hotel Empire Chokabetu, Shabir Qatar, Baby Care Farooq, Sadiq Hindustan Timbers, and our some other best wishes came from Kabir Mangalore, Mansoor KC, Siddiq KM, Bashir KM, Farooq 9th, Yasin Munna Hamid Zubair, and Hasanar. So thankful to all the persons who gave their best wishes to the success of this tournament, Nazar Champions Trophy 2024, and once again thank you to all the persons who gave their best wishes to the success of this cricket tournament, Nazar Champions Trophy 2024. Straight away coming back to the match number 2 of the day 2 of this prestigious cricket tournament. The big match is now coming up, and Gorian boys will take over Torpedoes Khana, and new CCL from the center that the captain of Torpedoes Khana, after won the toss, they elected to field first, and because of that their fielders are now spread out on the field, and the openers for Gorian boys are Riaz and Ravi, the openers. Meantime, the ball is taken by the bowler, I think Sharan starts the fresh proceedings from the commentator box, and then we are just waiting for the first ball of the match. So we are just waiting for the first ball of the match, and first power play over is now going to start. Bright sunshiny morning. It's already 15 past 10, and the match number 2 of the day 2 of this prestigious cricket tournament is now going to begin between the Gorian boys versus Torpedoes Khana. We are expecting some good battle in this match. We are looking forward to some good battle in this match. Two top seeded teams are clashing each other in this match, and let's see what will happening when the match progresses. So the first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त शरण तैयार और रियाज इस वक्त सामना करते हुए, और अंपायर हरीश पटेल ने इशारा किया कि पारी की शुरुआत हो, तो ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त शरण तैयार। एक बेहतर मैच यहां पर शुरू होने जा रहा है टोरपेडोस खाना और गोरियन बॉयज के बीच। और पहली गेंद फर्स्ट बॉल दाहिना तो ओवर द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, थोड़ा सा मिस जजमेंट रियाज द्वारा, गेंद को छोड़ दिया कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। सही निर्णय, सही गेंद, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद ड्राइव किया रियाज ने इस वक्त कवर पॉइंट पर, बल्लेबाज रवि के लिए खतरा यहां पर पैदा हो चुका है, और इसी के साथ यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा तृतीय अंपायर के लिए यहां पर मांग की गई है, और देखना यह है कि तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं। तो यहां पर तो रवि जो कि काफी हद तक आगे निकल चुके थे, और देखना यह है कि जब विकेट उखाड़े गए थे गेंद से या हाथ से, तो तब तक क्या हुआ है असल में कुछ देर बाद यहां पर कुछ क्षणों में यहां पर पता चलेगा।
तो सब कुछ सुरक्षित और बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर सुरक्षित वापस हाथ से विकेटों को उखाड़ा गया था इस वक्त, और शरण इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, शरण अपनी ओर की पहले अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज रियाज के लिए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, एक बार फिर से सही गेंद घोषित और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और 3 गेंदें इस वक्त शरण 3 डॉट गेंदें फेंक चुके हैं। एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए वो यहां पर कर चुके हैं। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए शरण, ये गेंद रियाज के लिए ड्राइव करते हैं मिड ऑफ पर, तेजी के साथ रियाज दौड़ पड़ा और मिड ऑफ पर जो फील्डर तनवीर, गेंद उनके हाथों से छूटी और इस छूट का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने तेजी के साथ 1 रन चुरा लिया और 1 रन के 7 रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। 1 रन बिना किसी नुकसान के यहां पर जोड़ चुका है गोरी यंग बॉयज। और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, इस वक्त गोरी यंग बॉयज को जरूरत है एक बेहतर शुरुआत की, और रियाज और रवि उनमें यह क्षमता मौजूद है कि वो एक बेहतर शुरुआत टीम को दे सकते हैं। खासकर यहाँ पर ऐसा देखना पड़ेगा अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक, ये दोनों आरंभिक बल्लेबाज गोरी यंग बॉयज के किस तरह यहाँ पर आरंभिक शुरुआत दे पाते हैं। तो शरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के लिए इस वक्त फील्डर, और इससे पहले कि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। हालांकि टॉप एज पर गेंद जरूर टकराई थी रवि की, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए और 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में यहां पर जुड़ता हुआ, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर। पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी है। शरण, यह गेंद इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ निकाला, इस वक्त डीप मिड विकेट पर गेंद जाते हुए इम्तियाज जो फील्डर थे, काफी लंबा दौड़ अश्विन फील्डर थे जो कि जिन्हें काफी लंबा दौड़ इस वक्त लगाना पड़ा, लेकिन गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल, बेहतरीन तरीके से गेंद को स्कूप कर दिया था इस वक्त रवि ने, और 2 रनों के साथ इस वक्त संतुष्ट। पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है, 5 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। यहाँ पर गोरी यंग बॉयज टॉस हारने के बाद टॉर्पेडोज काना के खिलाफ पहले बल्लेबाजी पर उतरा था, वह 5 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर स्कोर्ड बाय गोरी यंग बॉयज आफ्टर बीइंग लूजिंग द टॉस एंड पुट इट टू बैट बाय टॉर्पेडोज काना इन द मैच नंबर 2 ऑफ द डे 2 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट नजर चैंपियंस ट्रॉफी 2024। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो गेंदबाज सिनन इस वक्त गेंदबाजी यहां पर प्रारंभ करते हुए, और दूसरा ओवर गोरी यंग बॉयज की पारी में यहाँ पर शुरू होता हुआ। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है, और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप का कहर भी मैदान पर बढ़ता नजर आता हुआ, और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतर मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है गोरी यंग बॉयज और टॉर्पेडोज काना के बीच में। सिनन ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार रियाज के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चूंकि गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाया, इस बीच बाई का इशारा अंपायर का, और बाई के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर फॉर गोरी यंग बॉयज। क्वाइट क्रिकेट इज नाउ गोइंग ऑन हियर राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स ऑफ गोरी यंग बॉयज। और इस बीच सिनन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, रवि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा, और सिनन दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रवि के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी इस वक्त, ऑप्शन से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। क्रीज पर मौजूद ये दोनों सलामी बल्लेबाज गोरी यंग बॉयज के रियाज और रवि कदमों को क्रीज पर जमाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए, और इस बीच सिनन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद रवि के लिए लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को उछालना चाहता, चूंकि विकेट कीपर के हाथों में गेंद निशाना टकरा चुका है इस वक्त, लेकिन रियाज वहां पर पहुंच चुके हैं इससे पहले कि निशाना स्टंप पर टकराए, तो बाई के रूप में ये रन उनके खाते में जुड़ चुका है, और आखिरकार इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 7 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और इस वक्त अंपायर विकेटों को सही करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। दर्शकों की संख्या इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती नजर आती हुई, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में भी
वृद्धि होती जाएगी। और इस बीच फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए टॉर्पेडोज खाना के कप्तान और एक खिलाड़ी को, एक अतिरिक्त खिलाड़ी को इस वक्त स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच तैनात किया गया है। और इस बीच ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन दिस टाइम, एक्स्ट्रा क्विकर, द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड एट द लास्ट मोमेंट। गेंद को ठीक तरह से खेलने के प्रयास में चूके रियाज, लेकिन एक रन होना जरूर मिला। इससे पहले के शॉर्ट पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया जाता और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर सिनन एक बेहतर रन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रवि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन चूके पूरी तरह और आखिरकार ऐसा कहना पड़ेगा गेंद अंतिम क्षण में कुछ हद तक उछाल लेते हुए रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके और उनका विकेट यहां पर गिरता हुआ और इसी के साथ पहला विकेट खो चुका है। रवि की पारी समाप्त और 8 रनों के ऊपर पहला विकेट खो चुका है इस वक्त। और गेंदबाज सिनन इस वक्त विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। बोल्ड आउट के रूप में विकेट गिर चुका है। रवि का 4 रन उन्होंने बनाए और आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए उनका स्थान ग्रहण करते हुए नए बल्लेबाज शिवराज, तकनीकी तौर पर बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। गोरी यंग बॉयज के लिए टेक्निकली परफेक्ट, 100% परफेक्ट बल्लेबाज तकनीकी तौर पर और इस वक्त मैदान पर उतरते हुए काफी जिम्मेदारियों के साथ नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से। और इस वक्त देखते हैं वो रियाज के साथ मिलकर किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर करते हैं। तो सिनन इस वक्त विकेट प्राप्त कर चुके, काफी बेहतरीन ओवर उनका अब तक साबित हो चुका है। और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए और पावर प्ले खत्म होने से पहले की अंतिम गेंद लेकर सिनन इस वक्त तैयार है। तो इस बीच फील्डिंग में जमावट करते हुए अभी भी 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद पावर प्ले के अंतर्गत और सिरन इस वक्त तैयार। नए बल्लेबाज शिवराज के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया इस वक्त, यह देखते हुए कि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है। वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस बीच सिनन दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर। विकेट कीपर चूके 2 कदम आगे जरूर बल्लेबाजों ने बढ़ाए थे लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित सही गेंद घोषित। शिवराज इस वक्त अंपायर की ओर देखते हुए एक बार उन्होंने वाइड की लाइन की ओर देखा, दोबारा अंपायर की ओर देखा, लेकिन यहाँ पर सही गेंद घोषित है। और यहाँ पर अंपायर ने तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त मांग की है कि इस वक्त क्या ये वाइड है या नहीं है देखने के लिए। अब देखते हैं तृतीय अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं। So right after this match, one more fantastic match is now coming up. Young Prince Urua will take over KFC Kodikal in the next match. Big match, one more big match is now coming up right after this match. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. तो यहाँ पर इस वक्त तीसरे अंपायर उस निर्धार का परिशीलन यहाँ पर करते हुए और आखिरकार वाइड यहाँ पर घोषित किया गया है। तो वाइड घोषित किया गया है, 1 रन उनके खाते में जुड़ेंगे और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है
10 रनों पर 2 अंकों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तो एक गेंद अभी भी बाकी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकली थी और इस बीच तृतीय अंपायर पुष्पराज ने इसका परिशीलन करने के बाद इसे वाइड घोषित किया है। तो गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, सिनन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ अराउंड द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार। ये गेंद शिवराज के लिए ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक, गेंद पहुंची वाइड लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। वहां पर एक ही रन की संभावना थी, लेकिन दूसरे रन के लिए काफी तेजी के साथ बल्लेबाज मुड़े और यशस्वी तम दूसरा रन प्राप्त करने में सफल। और वाइड लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर अश्विन थे कुछ हद तक धीमे थे, तो इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर लिए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। एंड 7 runs came from this over for Gori Young Boys innings and after 2 overs they are still searching for the right track. It's 12 for the loss of the wicket of Ravi और इस बीच तीसरा ओवर शुरू होता हुआ शरण अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार सामना करते हुए रियाज। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए केवल 4 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। और इस बीच शरण फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए मिड विकेट, स्क्वायर लेग, पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद और कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, इस वक्त कवर पॉइंट इस वक्त पीछे की ओर जाता हुआ डीप कवर पॉइंट पर और ओवर की पहली गेंद लेकर शरण इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ। ये गेंद पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद तक पहुंचना चाहा लेकिन नहीं पहुंच पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 10 रनों पर, माफ कीजिए 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। शरण फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद कौन साइड पर मोड़ना चाहता, मोड़ नहीं पाए, सिर्फ बाई का इशारा विकेट कीपर चूके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर, 13 रनों पर, माफ कीजिए 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और शरण एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए इस बार सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शिवराज, ये गेंद चिप किया, इस बार मौका हो सकता है कवर पॉइंट, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है शिवराज का। ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट चेक द शॉट एट द लास्ट मोमेंट, अपने स्ट्रोक को चेक कर लिया था, अपने स्ट्रोक को रोक लिया था और गेंद को हवे में इस वक्त उछाला था और कवर पॉइंट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें कुछ ज्यादा मेहनत मुशक्कत करनी नहीं पड़ी, अपने आगे की ओर आते हुए इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ लपका और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 गिर चुका है। शिवराज की पारी समाप्त, 2 रन बनाने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए और 13 रनों के ऊपर गोरी यंग बॉयज अपना दूसरा विकेट खो चुका है। 13 for the loss of 2 wicket for Gori Young Boys at this situation, and now Shivraj departs. So number 4 batsman, one more technically very sound batsman is now comes out to the middle, Abhilash. और एक तकनीकी बल्लेबाज का निर्गमन होने के बाद दूसरे तकनीकी यानी टेक्निकल बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है अभिलाष, जो कि शिवराज का स्थान ग्रहण यहां पर करते हुए और इस वक्त शरण गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और इस बीच वो गेंदबाजी करेंगे अभिलाष के लिए। तो क्योंकि अभिलाष इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज है, उनके लिए इस वक्त ठीक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक फील्डर पीछे की और इस वक्त जाते हुए डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान एक फील्डर तैनात, लॉन्ग ऑफ बिल्कुल सीधा और एक्स्ट्रा कवर कोई एक्स्ट्रा कवर मौजूद नहीं और डीप कवर पॉइंट 2 स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त मौजूद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और इस वक्त लॉन्ग ऑफ को 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया और एक्स्ट्रा कवर फील्डर के इस वक्त पीछे भेजा जा रहा है वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक डीप एक्स्ट्रा कवर के दरमियान। और इस बीच शरण इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ राउंड द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिलाष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो फील्डिंग का मुआयना इस वक्त करते हुए अभिलाष और अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। और शरण दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और ये गेंद इस बार अभिलाष के लिए गेंद को ड्राइव करना और यहां पर
यहाँ पर हेलो हेलो हेलो। तो इस वक्त हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3 हेलो। So welcome back once again after being some technical disturbance। और जहां तक सवाल है 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त रन्स बन चुके हैं 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 overs completed 17 on the board, 2 wickets lost for Goreangwad, just searching for the right track at this situation। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और लंबे कद के खिलाड़ी जो कि गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से मुबीर और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रियाज जो कि अपना बल्ला यानी बैट बदलने के बाद अपने स्वस्थान पर इस वक्त लौटते हुए निस्संदेह जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है इस वक्त गोरियांगवाज के लिए कम से कम 50 के आंकड़े तक पहुंचना होगा या फिर 50 का आंकड़ा पार करना होगा, क्योंकि टॉर्पेडोज खाना के पास जो सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है उस लाइनअप पर अगर दबाव डालना है तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देना होगा। तो देखते हैं क्या होता है। 4th ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स। पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार मुबीर गेंदबाजी करते हुए, रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त तैनात और ओवर की पहली गेंद लेकर मुबीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। फर्स्ट बॉल, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए बेहतर कलेक्शन विकेट कीपर द्वारा वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका। कुल मिलाकर 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। स्टिल 3 overs लेफ्ट आफ्टर दिस वन और गेंदबाज मुबीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी। जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट पॉइंट फ्रॉम द बॉलर मुबीर बॉल्ड स्लो डिलीवरी और रियाज ने गेंद को छोड़ दिया, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार मुबीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट पंच किया था। इस वक्त डीप कवर पॉइंट पर 1 रन मिलेगा। रियाज दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। थ्रो पहुंच चुका नॉन स्ट्राइकर एंड पर और दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। रन ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए इस वक्त गोरियांग बॉयज के लिए और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए टॉर्पेडोज काना के गेंदबाज और इस बीच अभिलाष सामना करने के लिए तैयार।
और मुबीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट अभिलाष के लिए, इस बार ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ दिया, तकनीकी तौर पर बेहतरीन स्ट्रोक कलाइयों के साथ ऑफ द रिस्ट गेंद को इस वक्त मोड़ा था डीप स्क्वायर लेग पर। बल्लेबाज अभिलाष ने 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और मुबीर एक बेहतर लिंक तो लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज रियाज के लिए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार धीमी गेंद को खेला जरूर है लेकिन ठीक ठाक नहीं, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज काफी आगे निकल आए थे और इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर एट दिस सिचुएशन। तो अभिलाष 4-5 कदम आगे निकल चुके थे, हालांकि एन मौके पर वो क्रीज पर कदम खींच चुके हैं नहीं, देखना पड़ेगा इस वक्त। तृतीय अंपायर पुष्पराज जो कि इस वक्त यहाँ पर उसका परिशीलन करते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, KFC Kodikal will takes over Young Friends Urva in the next match, and because of that I request once again all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. So the scoreboard stays at 20 for the loss of 2 wicket, and this is the over number 4 in progress in their innings. Not out is the call, and the batsman survived. So the scoreboard stays at 20 for the loss of 2 wicket. Still a couple of ball left in this over. और गेंदबाज इस वक्त मुबीर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए रियाज के लिए, और रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। निस्संदेह एक साझेदार यानी पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त जरूरत गोरियन बॉयज को। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और मुबीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन पर, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल। और आफ्टर फर्स्ट बॉल पहले टिप्पे के बाद गेंद को कलेक्ट किया गया लॉन्ग ऑन फील्डर द्वारा। इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। और इस बीच मुबीर इस ओवर में अंतिम बार अभिलाष के लिए बाएं हाथ, माफ कीजिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिलाष के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त खेलना चाहे, लगभग जमीन के सहारे गेंद आई थी खेलने के प्रयास में, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति 4 ओवर के मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 22 for the loss of 2 wicket after completion of 4 overs scored by Gori Young Boys with a run rate of exactly 5.5 runs per over, and still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining in the innings. देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है। तो इससे पहले कि 5वां ओवर पर माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे एक और काबिल दोस्त जनाब अब्दुल समद को राज्य भाषा कन्नड़ में आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। आइए समद भाई, धन्यवाद, थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿ ಅವರೇ. ನಜರ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದತ್ತ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ. ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತನ್ನ 4 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 2 ವಿಕೆಟನ್ನು ರವಿ ಪಡ್ಡಾಯವರು ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್ರವರ ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದ ಈ ಮೈದಾನದ ಮುಕ್ಕು ಮೂಲೆಯನ್ನರಿತ ರಿಯಾಜ್ ಗೋರಿ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಾರಿಸ್. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು, 5ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಮೋಹನ್ ಯಾಡಿ ಗೂಟವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ
ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ. ಹರೀಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ರಿಯಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ವಾಸಿಂ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಡಿದರು. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ವಾಸಿಂ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ಮೂರನೇ ಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಯಾಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ನೇರ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾರಿಸ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಿಯಾಜ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬಂದ ರಿಯಾಜ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 7 ರನ್ನಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿ 5ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮತ ರವಿ ಪಡ್ಡಾ ಇವರು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಶಿವರಾಜ್, ಈ ಪರಿಸರದ ಕಾತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ತದನಂತರ ರಿಯಾಜ್ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಣ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಗೌರವದ ಮೊತ್ತದತ್ತ ದಾಪು ಕಾಲಿಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರ ಆಟ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರಿಸ್ ವಿಶ್ವಾಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ 30 ವರ್ಷಗಳ ಆ ಇತಿಹಾಸ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ. ಕರ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಕರ್ಣ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ತಟಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ 5ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಗೋರಿಯವರನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖೇನ. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಹಾರಿಸ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ರವರ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 5ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮೈದಾನದ ಎಲ್ಲಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಅರಿತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ 2 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ರಿಯಾಜ್ ರವರಂತಹ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇದು ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 24 ಬಂದಿದೆ 30 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ 30ರ ಮುಂದೆ 24 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 12 ಎಸೆತದ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 49 ನಂಬರಿನ ಬನಿಯಾನುದಾರ ಈ ಪರಿಸರದ ವೀರ ಇದು ಸಿನಾನ್. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದವರು, ಅನುಭವಿ ಈ ಸಿನಾನ್ ರವರಲ್ಲಿದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸಿನಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಆಟಗಾರ ಈ ಅಭಿಲಾಷ್. ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಾನ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ, ಅಭಿಲಾಷ್ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿಯವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಸಿನಾನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಅಶ್ರಫ್ ಮುತ್ತೂರು ಆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಾನ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿನಾನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿನಾನ್. ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂದು ರೂಪದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಸಿನಾನ್ ರವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿನಾನ್ ರವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನನ್ನ ಬದಲಿಸುವುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ 2 ಚೆಂಡು ಅವರಿಂದ ಆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೋ
ತದನಂತರ ಅವರದ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನೀಡುವವರು ಈ ಅಭಿಲಾಷ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಅರಿತೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಿನಾನ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಮುಬೀರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ 3 ಎಸೆತಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 9 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಾರಿಸ್ ರವರ ಓವರ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಾನ್ ರವರ 3 ಎಸೆತ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು 2 ಮಾತ್ರ. ಇದು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಮ್ಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. 4 ಎಸೆತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಾನ್ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಆಟಗಾರನ ಚಲನವಲನವನ್ನರಿತು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪಿಚ್ಚಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಸಿನಾನ್ 4ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 24 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ಕರ್ನಾರ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಯಾಜ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ, ಅಡ್ಡೂರಿನ ಹುಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಡ್ಡೂರಿನ ಕಣ್ಮಣಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಆ ಅಡ್ಡೂರಿನ ಜನತೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಈ ಫಯಾಜ್ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಿನಾನ್. ಫಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕೂಡಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಎಂದು ಫೇವರೇಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಸಿನಾನ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೋಹನ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಾನ್. 5ನೇ ಬಾರಿ ಫಯಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಾನ್. ಇದು 6ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾದ ಹಿಂದೆ ಡಗ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವ ದಿಗ್ಗಜ ಬಶೀರ್, ದಿಗ್ಗಜ ಶರೀಫ್ ಕೊಪ್ಪರಪಾಡಿ, ಶಮೀಮ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರೂಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಆ ಸಂತೋಷದ ನಗು ಬಂದಿರಬಹುದು ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಇಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಾನ್ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವೇಗದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಸಿನಾನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. 6ನೇ ಓವರ್ ಮೇಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ 4 ಎಸೆತವನ್ನ ಅಭಿಲಾಷ್ ಆಡಿದ್ರು, ತದನಂತರದ 2 ಎಸೆತವನ್ನ ಫಯಾಜ್ ಆಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಆ 6 ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ. 6 ಓವರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 24 ಓಟಗಳು. ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಆ ಸರ್ಕಲಿನ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತ. ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಆಟಗಾರ ಕರ್ಣ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 1 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 4 ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಆ ಒಂದು ವೀರಾವೇಶದ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದವರು ಕರ್ಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೂರಿನ ಹುಲಿ. ಈ ಜೋಡಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಲಿದೀತು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾರಿಸ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಇದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಟ ಇದು. 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ, 2 ಓಟವನ್ನ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಆಟ. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಕೈಯನ್ನ ತಪ್ಪುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾರಿಸ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 2, 26 ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋರಿ ತಂಡದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರನನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ. ಹಾರಿಸ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತ್ಯದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೈಚಳಕ ಹಾರಿಸ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಫಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾರ್ ಅವರು ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಗೋರಿ ತಂಡದ ಡಗೌಟಲ್ಲಿ ದಿನಾಕರನ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋರಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾರಿಸ್ 4ನೇ ಬಾರಿ ಗೂಟವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಹಾರಿಸ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 27 ಓಟ. ಓಟ ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಹಾರಿಸ್ ಫಯಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಗೋರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರಿಸ್ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಲೇ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಫಯಾಜ್, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಾಗ 1 ಓಟ ಬೈ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ. 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 28 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 5ನೇ 6ನೇ 7ನೇ ಈ 3 ಓವರ್ಗಳು ಟಾರ್ಪಡೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರ ಹಾರಿಸ್ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಸೆತವನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಣ ಈ ಬಾರಿ ಆ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29 ಬಂದಿದೆ. 30 ರನ್ನಿನ ಸವಾಲನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮೊನ್ನೆಯ ರಾತ್ರಿ ತೋಡಾರು ಬಂಗಬೆಟ್ಟು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತೋಡಾರ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿತು. ಅದರ ಸೇಡು ಈ ಪಂದ್ಯವಾಗುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಆ ಗೆದ್ದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಗೋರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಲಿದೀತು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ವೀಕ್ಷಕೋರಣೆಯನ್ನ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ 2 ತಂಡ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ. ಒಟ್ಟು ಸತೀಶ್.
Thank you very much, Abdul Samad Kadipala, and we are into the innings of team Torpedoes Khana. And not a big total to chase down, but you cannot say in this particular cricket ground it's going to be a big or small, because we can get, so I've already mentioned about this particular cricket ground, even less than 25 also they depended. They can get some examples. And coming to the Gori Young Boys, just like Abdul Samad Kadipal mentioned about one of the hunting ground as far as Gori Young Boys is concerned. Of course, every team has got some favorite grounds, and seeing the performance in this particular cricket ground, Gori Young Boys absolutely they clinches some prestigious titles in this particular cricket ground, and suddenly they going to be our favorites whenever there is a cricket tournament in this particular cricket ground. The Gori Young Boys always considered as one of the favorite team to come to the final. But here I think a lot of hard work is required from the bowlers, because once again the temperament, the quality of the bowling of Gori Young Boys will going to be tested, because the Torpedoes Khana also has got some very good bowling department. They're playing with their home condition, and Ashraf, the batsman, will go into first delivery. Oh, what a shot! Glorious, crashing extra cover drive down to deep, extra cover boundary for 4 runs. The moment the ball left the bat of Ashraf, ball went like a tracer bullet. The man in a terrific form. After that, his innings in Guttigar Stadium at Sulia. And that what we're talking about, Veera Maruti Trophy, when it's 29 required from the last over. The man who finished the match is on strike, and this is the result when you are having a terrific form. Again, the first ball itself he got a boundary, the second ball he got a single, and this goes Koban Namozan to 5 on the board without loss of any wicket. The good start again for Torpedoes Khana, and the opening batters Ashraf and Harris. The two opening batters, the two very experienced campaigner for the side of Torpedoes Khana. There in a hunt. Fayaz again bowling right arm over the wicket. Harris knows that what is the job of him after getting a 5 runs in 2 deliveries. Just no need to panic at all. Just peddling that one by playing that horizontal bat down to deep third man region. Little bit correction, the short third man, there is a little bit protection in the behind the wicket, so that one single added to total 6 on the board without loss of any wicket. A very good start here for Torpedoes Khana. Fayaz, right arm over the wicket bounce. Again Ashraf going for the expansive drive, but not quite getting that hold up that one properly, but good enough for him to come to the second there, and because of that slight bit of slow fielding there by the fielder at the backward point region, both the batters completed 2 valuable runs. We are not having a regular players for the team Gori Young Boys. We are not seeing the informed batsman for Gori Young Boys. Prajval, what we are talking about, one more single been added total with that single scope and Namuzan to 9. But one more big drawback for Gori Young Boys is that Naufal, one of the big all-rounder, is also missing today in this playing 11 of Gori Young Boys. Again they're going for the lofty drive, beautifully driven down to widest long of boundary for 4 runs. This time Harris joining the party. The intention is very clear from the batters of Torpedoes Khana that need to exploit the condition of the fielding restriction in the power play, and they lofted that one down to deep long, widest long of for 4 runs. 13 on the board. The biggest problem in the present cricket is that too much cricket. We are not having the regular players today because of the yesterday night they played cricket, and it's not so easy for the players to maintain their level of fitness. And welcome to Nandan Kulshekar, one of the biggest supporter of underarm cricket, and even one of his favorite team which is playing in the one of the favorite team Gori Young Boys for Nandan Kulshekar just came here. I request all the players of Young Friends who are please report here immediately to sign the official chart for the next match. They will going to play against team KFC Kodikal. They then lovely delivery, slower one there from Sahil, the very young talented bowler, one of the revolution I want to say in the bowling department of Gori Young Boys. This young bowler did a great job in the last 2 seasons, especially in the previous season. He did a great job for the success of Gori Young Boys in the bowling department. Right arm over the wicket bounce, driven that one very nicely. Huge gap between bowler and extra cover before Riaz to run across his right ball, just defeating his hand, and ball went to the hands of a deep long off. Ample time for the batter to complete the single. Now they're adding one more fielder down to mid off. We can see that 4 fielders inside the ring, very close together. Short mid off, short extra cover, short cow point, backward point. No fielder in the deep because the power play is in progress.
Right arm over the wicket. They pedal that one very nicely. Harris by playing horizontal bat. He's so good in that particular cricketing stroke. He knows that in this particular cricket ground, the even singles definitely very valuable. And with that addition of that singles, Coburn moves on to 15 on the board. And they are very much on their right track. And the 15 runs, half of the job is already done. In the second over is in progress. Again, going to be a delivery which is outside and off temper. Too much. We can see that it's very difficult for the batsman to reach that delivery. Maybe that line little bit wider, and bowler can enjoy that line. Bowling that line is very difficult. Even good young boys struggle to get reach that delivery when it's pitched outside the run of off. And again, a lovely delivery there from Shahil, just using that depthness of that line in the outside the line of off stump and defeating the bat of Ashraf. And little correction, yes, Ashraf, and the scoreboard is 15 on the board. Sahil, final time in this over. Right arm over the wicket to Ashraf. Ashraf left it, but fielder is in the long off. He'll going to take this one. Ashraf couldn't manage to get the placement right. He know exactly this is a power play. He wanted to get the one more big shot, but couldn't manage to get the placement right. Danger man Ashraf departs. It's 15 for the loss of one wicket. But after getting a very good start, Ashraf back into pavilion. Sahil strikes in the last delivery of the over. It's 15 for the loss of one wicket. ದಯಮಾಡಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. So one more good match is going to commence after this match. The Gori Young Boys has got a very good season, a particular season, because they started their journey very well in the season by becoming the runner-up in the Koti Chennai Trophy 2023. It's the first tournament which is played in a UCG cricket ground. The Young Friends Guru has become the champion in that match, in that tournament, and afterwards Gori Young Boys 2 times they become the runner-ups, and it's a good season, and especially for Gori Young Boys and for Tarpados Khan also. They got a very good season. And outside the run of off stump, again a total misjudgment of the line by the batter, and Ashik is the one more young talented bowler in the side of Gori Young Boys. Starts with the dotted delivery. Right arm over the wicket, going for the big reverse sweep in the negation. Looks like he's got a little bit bat onto that to get the single down to third man region. And before the wicketkeeper going back, Shivaraj, ample time for the batter to complete the single. With that single, score number down to 16 on the board for the loss of one wicket. Ashik again bowling with a short run up, right arm over the wicket. Bows this time driven, very beautiful. He slashes that one down to deep cow point for Eugene, boundary for 4. And Simtiaz is a master of playing such kind of cricketing stroke. You know exactly there is no fielder in the deep cow point region. But coming to this cricket ground particularly, this is a quick outfield. We go into that offside region, especially in the morning till 12 o'clock. We can get boundary very easily, that cow point region, because the flow of the wind is left of our community box. And boundary comes up, and score numbers on to 20 on the board. Ashik bowls, this time Imtiaz cuts, but straight to the hands of that short third man region fielder. No question of any run and no need to panic at all. A very good score on the board, 20. Just a 10 more runs required for the victory for the team Tarpados Khana. Imtiaz facing Ashik. Very interesting. Imtiaz once he stopped, now Ashik while delivering the ball he stops, and now we're going Ashik balls right arm over the wicket. Again slashes that one straight to the answer field. A chance of run out is created, but both the batters has got a very good understanding between the wicket, especially the batter Harris running towards the dangerous end and completed that single. 21 on the board. For the latecomers, you're watching the match number 2 of the day number final of this prestigious Nazar's Challenge Trophy 2024. This time, what a shot! Oh, that was a glorious. Unfortunate, I'm sorry for that. He will go to only single for that. This is what a kind of cricket ground. Sometime even the big stroke will going to give only 1 run, because behind the wicket is a little opportunity for the batter to get the runs. If it is in a UCG cricket ground, any ground, that might be a 6. But here he will going to get only single then. But it's good enough for the team Tarpados Khana. The 22, which is the total score now, and another 8 more runs required for the victory. Just talking about the too much cricket in the present day, it's really going to be a big challenge for the players to maintain their level of fitness, because the playing under daylight is different, and playing under natural light, that is a floodlight, is a different ball game. Because and without having enough
sleep, it's very difficult, isn't it? Because if you're not having a sound sleep, then very difficult to perform 100% in the ground. And that's always going to be the biggest problem for the players in the present cricket, that too much cricket. Again, Imtiaz going for the quick single in the negation, and they responded very well by partner Harris, and with that single score, the moves on to 23 on the board for the loss of 1 wicket. Sahil again bowling with a short run off, right arm over the wicket, delivers. Slower one, but he got that slower one very well. Played it beautifully. Ball running, and at last Karna has got a slight bit of footwork in the negation to stop the boundary. And before that, batsman has got ample time to complete 2 valuable runs. This time Harris played that one very nicely. The reverse sweep, one of his favorite shot, and Scoba now jumps into quarter century, 25, just 5 runs away from the victory. Sahil. Driven across the line, straight to the end of short mid wicket, but enough time for both the batters to complete the single. Harris is looking so good so far. The man is not really having that much of good form, but definitely he will going to grab this opportunity, because now he's hitting the ball very well. So it's the right time for him to grab his natural form, what he's knowing for, and he's getting runs very well from the bat. It's a good sign for the Torpedoes Khana that Harris back in the form, and his score moves on to 27 on the board. Now 3 more runs required for the victory. Sahil again with a short run up, bowling away from us, right arm over the wicket. This time, what you're talking about, Harris need to capitalize that form what he has got, and he got a distance. And he finished the match in a style where he hitting that one into the deep mid wicket and deep square leg region boundary for 6. So that's it, comprehensive victory for Torpedoes Khana against Gori Young Boys. Gori Young Boys just faced the penalty that he didn't got enough strength in their playing 11, missing some top players, top all-rounders, and resulting here that it's going to be a one-sided match. It's a comprehensive victory for Torpedoes Khana that will going to give a lot of confidence for the Torpedoes Khana. And let's wait and see now. It's going to be a time to announce that the man of the match of this match. Now is the time for announce the man of the match award. Man of the match award certainly it goes to man who finished the match in a style with the 6. Just I'm talking about is not having just a good, very not in a good form, but he got a form back in this particular match. It's none other than Harris. He's just as a man of the match, not only for his batting but for his outstanding 2 overs. He bowled a very good 2 overs and picked up a 1 wicket with a very economical rate. So that I request Harris, please come here to collect your man of the match award from our chief guest. Torpedoes Khana ತಂಡದ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಡಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಿನಾನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So Gori Young Boys has quite a disappointment finish for this particular tournament, Nazar Challenge Champions Trophy 2024. They're being the favorite of this cricket tournament, but didn't got that much of potential in their playing 11, especially the man in form Prajwal and Naufal missing this match. And the Gori Young Boys definitely will going to have a lack of good players in the side. And Torpedoes Khana, they played a very good game of cricket to clinch the first victory in this first match of this prestigious cricket tournament. We'll take a short break, and one more match, good match will go into commence between Young Friends Suruva versus KFC Kodikal. And before that match will go into commence, we'll take a short break, and after short break my friend Mr. Gopi will go to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you. ದಯಮಾಡಿ Harris
ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ So it's time for the presentation of man of the match, Harris. Rizwan BK will going to present this man of the match award for Harris for his all-round performance, and congratulations Harris, and better luck for the next match, and thank you so much Rizwan. Hello.
Hello. Yeah, real. Chinese. Halal. Hal. 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 So KFC cricketers are now going to field first at the situation against Young Friends Surua, and that match, the match number 3 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Nazar Champions Trophy 2024 is now coming up live and exclusively right in front of you within just a short while. And we are just waiting for the first ball of the match. Today 2 matches has been ended. First match, KFC registered a thrilling victory against Team Matrix in the last over, and after that Ghana defeated Goryang Boys easily in the second match, and they are through to the next round of this tournament with this victory. And now one more big match is now coming up. Young Friends Urwa will take over KFC Kodikal, and that match starts within just a short while.
Right, the match number 3. One more big match is now going to start between Young Friends Uruva versus KFC Kodikal. And news is here from the center that KFC Kodikal are now fielding first, and because of that, the openers of Young Friends Uruva at the crease are Santosh Bantwal and Arshad, the most destructive opening pair in Andram cricket. One of the most destructing pair in Andram cricket is out in the middle, and the ball is taken by the bowler Shakir, very talented all-rounder for KFC Kodikal. Is now starts the fresh proceedings, and now we are just waiting for the first ball of the match. Match number three of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Nazar Champions Trophy 2024 now is now going to start under this bright and shiny afternoon. It's already 30 past 11, and umpire Harish Patel signal to start off the match, and now the first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार शाकिर और संतोष बंटवाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ. बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है. ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त छोड़ दिया था. लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. 2 रन बिना किसी नुकसान के यंग फ्रेंड्स उरुवा के लिए इस वक्त बन चुके हैं, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद. और जैसे ही अरशद स्ट्राइक पर आए, इस वक्त फील्डिंग का व्यू को इस वक्त कुछ बदल दिया गया. स्क्वायर लेग फील्डर को इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर तैनात किया गया. एक फील्डर डीप मिड विकेट पर मौजूद. कुल मिलाकर 2 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात है. 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त मौजूद है. तो शाकिर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बात से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा. एक बार फिर से अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त शाकिर तराशते हुए 2 लगातार वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं, और 4 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में यहाँ पर प्रदान वो कर चुके हैं यंग फ्रेंड्स उरुवा के लिए. 4 रन बिना किसी नुकसान के, और शाकिर एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. संतोष बंटवाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और वाइड के बारे में कुछ हद तक दुविधा है शाकिर को. कुछ बातचीत वो करते हुए इस वक्त विकेट कीपर हकीम के साथ है, और यहाँ पर खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. तो तीसरा मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है. एक बेहतरीन मैच, एक जबरदस्त मैच यंग फ्रेंड्स और KFC कोडिकल के बीच, और दोनों संतुलित टीमें. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज शाकिर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए संतोष के लिए पैरों पर गेंद टकराई. अरशद काफी आगे निकला, एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को वहां पर फील्ड करके थ्रो करते हुए विकेट कीपर नॉन स्ट्राइक रन पर, और इस बीच बल्लेबाज को रन न लेने का कोई मौका नहीं. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर, और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार शाकिर. गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो द विकेट रिवर्स शॉट गेंद को खेला, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. इट्स 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और जहां तक स्ट्राइक का सवाल है तो अरशद बजाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथों बढ़ता विकेट, यह गेंद अरशद के लिए बेहतर गेंद थी शाकिर की. फॉरवर्ड शॉट लेग पर जब तक विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का बाई के रूप में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस फॉर यंग फ्रेंड्स उरुवा. शाकिर एक लंबा ओवर उनका प्रगति पर. पहला पावर प्ले ओवर यंग फ्रेंड्स उरुवा की पारी में इस वक्त प्रगति पर, और शाकिर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. रिवर्स शॉट गेंद को खेला, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और फिर से एक बार शाकिर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे अपने सही लय रिदम को प्राप्त करते हुए शाकिर इस बीच ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ. बैकवर्ड स्कोर लेग सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती है, और गेंद डीप बैकवर्ड स्कोर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त कुछ हद तक इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद के इस वक्त स्कूप कर दिया था, और खासकर ऐसे स्ट्रोक्स खेलने में संतोष बंटवाल माहिर है. यहाँ पर पावर प्ले का फायदा उन्होंने उठाया, एनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद के इस वक्त उछाल दिया था स्क्वायर लेग फील्डर के सिर के ऊपर से. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर काफी लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक फील्डर पहुंच नहीं पाए, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर. स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर. अगली गेंद पर वाइड इस वक्त गेंदबाज शाकिर ने फेंकी, देखा कि गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही है, और इस बीच
2 रन 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और अरशद बजाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है और इस बीच शाकिर ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, लेकिन फील्डर मौजूद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के। फर्स्ट ओवर हैज बीन केम्स टू एन एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर young friends who are batted first. They managed to score 13 runs on the board. This is an absolutely fantastic start for them. 13 runs scored in the first over and still in overall calculation. 6 overs remaining in overall calculation in their innings. Just talking about the good score is concerned for young friends who they have to reach at least 50 runs mark if they have to post a competitive टारगेट इन फ्रंट ऑफ KFC कोडिकल when they coming to bat. और यहाँ पर देखने वाली बात है कि अरशद के पैर में कुछ हद तक दर्द वो महसूस करते हुए कुछ हद तक चोट आई है, शायद क्रैम्प इस वक्त क्रैम्प से सफर करते हुए और यहाँ पर उनका इलाज जो कि जारी है, खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो दोनों संतुलित टीमें इस श्रृंखला में इस वक्त भिड़ रही है और इस मैच के बाद वन मोर गुड मैच, एब्सोल्युटली वन मोर गुड मैच इज नाउ कमिंग अप. Torpedoes Khana will takes over NM Bangalore in the next match and that match is now coming up live and exclusively right in front of you right after this match. एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला का नजर चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है नजर स्पोर्ट्स क्लब 9th ब्लॉक ने अपने 20वें वर्षगांठ पर इन द celebration of their 20th anniversary. They are conducting a prestigious cricket tournament, Nazar Champions Trophy 2024, which proudly presented by Nazar Sports Club 9th Block. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त अपने पैर पर पट्टी पहनने के बाद इस वक्त अरशद अपने बल्लेबाजी के मार्ग पर उतरते हुए और यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हुए निजाम ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार है। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ 7 फील्डर स्टोर इनसाइड द 20-yard सर्कल एज फार द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पावर प्ले इज कंसर्न्ड। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का तो निजाम इस वक्त सामना गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अरशद बजाल सामना करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट, दो खिलाड़ी ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद है और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त निजाम तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार अरशद के लिए स्कूप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। ऑफ द रिस्ट गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ उछाल दिया एंड फील्ड क्लियर करते हुए और डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे। हालांकि उन्होंने दौड़ जरूर लगाए लेकिन गेंद उनसे कोसों दूर और सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी है लॉन्ग ऑन से बाहर 4 रनों के लिए। थोड़ा सा वाइडर रेस्ट चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर 17 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेकंड ओवर। इनफैक्ट अगली गेंद ये गेंद स्वीप करना चाहा, बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम निजाम। The ball came along the ground at the last moment and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman and there is no possibility of any run. Fantastic delivery from the bowler Nizam. एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लेकिन फील्डर इस बार अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड करने में सफल है। हालांकि पहले प्रयत्न में गेंद उनके हाथों से छूटी और गेंद भी इतनी तेज रफ्तार के साथ उनकी ओर आई थी कि पहले प्रयत्न में गेंद को वो रोकने में असफल है लेकिन बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका जरूर अपने दूसरे प्रयत्न में। इससे पहले कि गेंद सीमा रेखा को पार करे और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर 18 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और संतोष बंटवाल इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। संतोष के लिए इस वक्त 2 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग के दरमियान एक फील्डर तैनात ठीक है सीमा रेखा के पास और 7 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद पावर प्ले के अंतर्गत। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए और निजाम इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष बंटवाल के लिए अगली गेंद लेकर तैयार और 4 से 5 कदम उनका रन अप दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लेकिन जगह नहीं बना पाया, प्लेसमेंट भी कुछ खास सही नहीं और गेंद सीधे पहुंचे मिड ऑफ पर और रन
इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 18 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। निजाम की गेंद ड्राइव किया साइड डाउन द ग्राउंड, लेकिन फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन पर सिर्फ एक मात्र रन मिलेगा इस बीच। हालांकि फॉलो थ्रू में अपने पैर के जरिए, अपने फुट के जरिए गेंद को रोकना चाहता गेंदबाज ने, लेकिन ठीक तरह से रोक नहीं पाया। जब तक गेंद को बैकअप किया जाता, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान स्ट्रेट हिट एरिया पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 19 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। एब्सोल्युटली गुड गोइंग ऑन हियर फॉर यंग फ्रेंड्स। और निजाम एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार अरशद बजाल सामना करते हुए निजाम की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद स्वीप किया इस वक्त, लेकिन ठीक तरह से नहीं, और स्क्वायर लेग फील्डर द्वारा मिसफील्ड, लेकिन बल्लेबाज एक ही रन से संतुष्ट होना चाहेंगे, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर। सो वन मोर गुड ओवर इन Young Friends Uruguay's point of view came to an end. 8 runs came from this over. 2 overs gone. After 2 overs, they are looking in a good situation. Young Friends Uruguay 20 without loss after 2 overs, and both openers are now playing very confidently. और जहाँ तक बचे हुए ओवर्स का सवाल है तो 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और दिखते ही इन बचे हुए 5 ओवर में यंग फ्रेंड्स उरुआ के बल्लेबाज अपने बचे हुए सर्व 10 विकेटों की मदद से और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। गेंदबाजी इस वक्त एक और ट्रम्प कार्ड गेंदबाज केएफसी कोडिकल की ओर से चेतन गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद बजाल। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। केवल 4 मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। एक्स्ट्रा कवर, गली, स्क्वायर लेग और मिड विकेट इस वक्त मौजूद, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद बजाल के लिए डीप बैक, स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद, और डीप कवर पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर के दरमियान एक फील्डर तैनात ठीक सीमा रेखा के पास। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त चेतन इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट अरशद के लिए, यह गेंद स्वीप किया इस वक्त, लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, गेंद पहुंची इस वक्त डीप बैक और स्क्वायर लेग पर, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर, लेकिन बल्लेबाज ने सिर्फ 1 रन से ही इस वक्त संतुष्ट होना मुनासिब समझा, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 21 रनों पर। 21 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। और चेतन इस वक्त गेंदबाजी करेंगे संतोष बंटवाल के लिए। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलते हुए, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि क्रीज पर मौजूद है। जब कभी भी लेफ्ट राइट बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन क्रीज पर मौजूद होता है तो सामने वाले टीम के कप्तान के लिए सिरदर्द पैदा हो जाता है, क्योंकि फील्डिंग की सजावट करना काफी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हर गेंद पर फील्डिंग में जमावट करते हुए केएफसी कोडिकल के कप्तान यह गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और वाइड का इशारा अंपायर का, और विकेट कीपर के पहुंच से बाहर। 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। रन्स आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए यंग फ्रेंड्स उरुवा के लिए, और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स उरुवा एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ। और इस बीच डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात, और चेतन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद टॉप एज, लेकिन फील्डर काफी पीछे तैनात डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर। इट्स 24 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्लोली एंड स्टडीली दिस ओपनिंग पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप फॉर यंग फ्रेंड्स उरुवा, और ये दोनों बल्लेबाज अब काफी हद तक आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच गेंदबाज चेतन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एंड प्ले दैट वन, ड्रिवन दैट वन परफेक्टली जस्ट वाइड ऑफ द बॉलर डाउन टू लॉन्ग ऑन, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुका है। इस 1 रन के साथ 25 कम्स अप फॉर यंग फ्रेंड्स उरुवा। 25 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और ಎನ್ಎಂ ವರ್ಸಸ್ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ. और इस बीच गेंदबाज दाहिने हाथ around the wicket, again swings this time but straight to fielder and deep backward square leg, not connected that one properly, and because of that he's got only a single for that stroke, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और
तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर निस्संदेह यहाँ पर कमबैक करना है केएफसी कोडिकल के गेंदबाजों को, तो इस वक्त एक घातक गेंदबाजी उन्हें करनी हुई, खासकर इस ओपनिंग जोड़ी को यहाँ पर उन्हें तोड़ना बेहद जरूरी बन चुका है इस वक्त। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ संतोष ने खेला इस वक्त डीप कवर पॉइंट और डीप बैकवर्ड थर्ड मैन के दरमियान में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 27 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और अंतिम बार इस ओवर में चेतन गेंदबाजी करते हुए, हर गेंद के बाद फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज चेतन, और इस बीच गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में अंतिम बार बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद बजाल के लिए, और तैयार इस वक्त दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद टॉप एज लेकिन 2 स्क्वायर, और गेंद इस वक्त नेट्स के बाहर हो चुकी है रास्ते पर। सिंगल रन ओनली एडेड टू द टोटल। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಂಡಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಬೀಗದ ಕೀ ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೀಗದ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So back to this game, 3 overs completed, 28 on the board, yet to lose any wicket, and this is an absolutely fantastic progressing here for young friends Urwa. And as far as the present run rate is concerned for them at the situation, exactly 9.33 runs per over. The present run rate is now progressing here for them. और शाकिर का जहां तक सवाल है तो खुद वो गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए अपना दूसरा ओवर पर आरंभ करते हुए, ये गेंद lifted, this time it's got the distance, it's a biggie. और संतोष यहाँ पर अपने बाजुओं को इस वक्त खोलते हुए, he just hit that one with an exquisite footwork and got that one right from the middle of the bat with a twisted bat. रिवर्स शॉट के जरिए इस स्ट्रोक को खेला था, कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए संतोष ने बेहतरीन स्ट्रोक। और इस बीच शाकिर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, संतोष के लिए ऑफ द टॉस गेंद को खेल दिया, इस वक्त बैकवर्ड स्कोर लेग की दिशा में 1 रन मिलेगा। और जो छक्का संतोष ने लगाया था, ऐसा कहना पड़ेगा पहले उन्होंने ठान लिया था कि इस गेंद को रिवर्स शॉट के जरिए इस वक्त खेलना है, और अपने इस योजना में 100% वो यश प्राप्त करते हुए छक्के को गेंद को उछालने में सफल। तो यहाँ पर 35 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। इस बार lifted, this time अरशद बजाल, and it's got the distance, 6 number 2 in this over. और यहाँ पर अरशद बजाल की अब पारी, और एक बार फिर से शाकिर काफी महंगे साबित होते हुए इस बार गेंद को कनेक्ट किया था मिडल ऑफ द बैट, और उछाल दिया डीप बैकवर्ड स्कोर लेग सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और स्कोर इस वक्त छलांग लगाकर पहुंच चुका है 41 रनों पर। 15 runs already scored in the first 13 runs scored in the first 3 deliveries of this over. शाकिर इस वक्त काफी महंगे यहाँ पर साबित होते हुए, और यंग फ्रेंड्स हुआ एक लंबे स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त तक के साथ 4 रनों के लिए। What a fantastic struck! This is an outstanding struck from the bat of अरशद बजाल। और ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को लगभग गोली की रफ्तार में इस वक्त मोड़ दिया। हालांकि डीप बैकवर्ड स्कोर लेग और डीप मिड विकेट पर फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन उन दोनों के बीच से गेंद ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट ट्रैवलिंग लाइक अ बुलेट। गेंद इस वक्त उछाल कर सीमा रेखा को बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। अगली गेंद उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास, लेकिन इस बार ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए। परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद इस वक्त फेंकी थी। 1 रन का इजाफा, 46 now. Still a ball left in this over. 18 runs already scored in this over. और शाकिर इस ओवर में अंतिम बार, और संतोष बंटवाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सब कुछ इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा के पक्ष में चलता हुआ। शाकिर ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस, गेंद को मोड़ा, स्क्वायर लेग पर, रन्स नहीं मिलेंगे। और शाकिर का महंगा स्पेल जो कि यहाँ पर समाप्त हो चुका। 30 runs considered by Shakir in his 2 overs, and because of this over, young friends Urwa are now dominating the openers. 4 overs gone, 46 on the board, exactly 11.5 runs per over. और निश्चित रूप से जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, यंग फ्रेंड्स उर्वा एक लंबे स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ। 3 ओवर का खेल बाकी। अब देखते हैं इन 3 ओवर में यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाज अपने
टीम की कुल रन संख्या को किस बुलंदी पर ले जा पाते हैं। तो पांचवा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ, लेकिन इससे पहले कि पांचवा ओवर शुरू हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे एक और काबिल दोस्त जनाब अब्दुल समद काटीपल्ला को आगे का आंखों देखा सुनाने के राज्य भाषा का दर में। आइए समद भाई, धन्यवाद, थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿಯವರೇ. ನಜರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ 46 ಓಟಗಳನ್ನು 24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಕೂಡಿಸಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ. ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಜಾಮ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ಓಟದ ತೃಪ್ತರಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರೀಶ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ನಿಜಾಮ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯ ಆಟ ಇದು ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ರವರದ್ದು. 1 ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. ನಿಜಾಮ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರ. ಹೋದ ಮೈದಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆ ಶೌರ್ಯದ ಆಟವನ್ನ ಆಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್. ಕೊನೆಗೂ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ರವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. ಹರ್ಷದ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷದ್ ರವರಿಂದ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ 23 ಓಟಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 2 ಬೌಂಡರಿಯ 23 ಓಟಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಎಂಬ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಆಟವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಿಜಾಮ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಶಾನವಾಜ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಹರ್ಷದ್ ಔಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನನ್ನೇ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ, ಈ ಸಮಯ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೇತನ್ ಚಂದನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. 50 ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ. 28 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಜಾಮ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ. ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಚಿನ ಓಟ, 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟವನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. ಎನ್ಎಂ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವ ಎನ್ಎಂ, ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಎರಡೂ ತಂಡ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ನಿಜಾಮ್ ತಮ್ಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. 2 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, 5ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 54 ಇದೆ. ಇನ್ನು 12 ಎಸೆತದ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಮೈದಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನ
ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಉಳಿದ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗಬಹುದು. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಾನವಾಜ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಊಹೆಗೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸೆಗಾರ ಚೇತನ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಗೂಟ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಚೇತನ್ ರವರ ಆರಂಭ. ಚೇತನ್ ರವರ ಆ ಎಸೆತದ ಶೈಲಿ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗರು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅವರ ಆ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶೈಲಿ ಈ ಚೇತನ್ ರವರದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹುಡುಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭವಿಷ್ಯದ ತಾರೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚುವ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ರವರ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಬಾಲಕ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೇತನ್, ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸಮ್ರಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೆಸರಿದು. ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮ್ರಾಜ್ ರವರ ಆಟ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರೋಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಡಿಪು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆ ತಲಕ್ಕಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರು ಈ ಸಮ್ರಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಮ್ರಾಜ್ ರವರಿಗೆ. ಆ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ 55 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್. 3ನೇ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ರವರಿಗೆ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೇತನ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ. ಇದು ಕ್ಯಾಚಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹೌದು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನೌಶಾದ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾಜಿಮ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬಂದ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ 1 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 2 ಅವಳಿ ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 20 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಟಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ರವರ ಜೊತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಅದುಮಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರಥಮ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 54 ಓಟಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಅದುಮಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರು ಕೂಡ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಈ ಮೈದಾನ, ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಮೈದಾನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೇತನ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ವೇದಿಕೆ ತುದಿಯಿಂದ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಚೇತನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿತ್ತೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನ ಒತ್ತುವುದರೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟ ಚೇತನ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 56ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಚೇತನ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮ್ರಾಜ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಚೇತನ್ ರವರದ್ದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಆ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಚೇತನ್. 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಸಮ್ರಾಜ್. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಕೀಂ ಬೈ ಮೂಲಕ 1 ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಚೇತನ್. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಈ ಮೈದಾನ, ಈ ಸಂದರ್ಭ, ಈ ಹವಾಮಾನ ಅದು ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಚೇತನ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ. ಇಮ್ರಾನ್ ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ
8 ಆಗಿದೆ. 7-6 ಓವರಿನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ, ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ, ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ, ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ, ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದವರು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದವರೆಯಾದ ಮನ್ಸೂರ್ ಕೆಸಿ. ಬಹಳ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಈ ಮನ್ಸೂರ್ ಕೆಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದವರು ಅವರು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಹಸನ್ಮುಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬಿಕೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದವರು ಫಿರೋಜ್ ಅಲ್ ಜುಬೈಲ್. ಫಿರೋಜ್ ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನ ರಕ್ಷಿತ್ ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಕ್ಷಿತ್ ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ 59ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿತ್ ಸಮ್ರಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಮ್ರಾಜ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾದ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಆಟ ಮೂಲಕ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಸಮ್ರಾಜ್. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಓಟ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಅರ್ಹರು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 1 ಶಾಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಶಾಟ್, ಒಂದು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಟವನ್ನ. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರ ದಕ್ಷಿತ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟ. ಆ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 61 ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಕಿರ್. ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆ ಚೆಂಡು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಶಾಕಿರ್ ಹಾಗೂ ಹಕೀಂ ರವರ ಮಾತು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಓರ್ವ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎನ್ನುವ ನಿಶಾನಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಅದು ಬೈ ಎನ್ನುವ ನಿಶಾನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಆಟಗಾರನ ದಂಡಿ ಗಾಳಿಗೆ ಅದು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎನ್ನುವ ನಿಶಾನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 61 ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿತ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಕ್ಷಿತ್ ರವರಿಗೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರಿಗೆ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಬೈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಸಮ್ರಾಜ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿತ್ ರವರ ಎಸೆತ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಸಮ್ರಾಜ್. 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟ ಸಮ್ರಾಜ್ ರವರ ಖಾತೆಯನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 7 ನಂಬರಿನ ಬನಿಯಾನುದಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಈ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುವಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಲವು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 65ರ ಸವಾಲನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಆರಂಭಿಕ ಆ ದಿಗ್ಗಜರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ 20 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್, 23 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ತಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಆಟವನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಅದರ
ಫಲವೇ 64 ಮಾಡಿ 65ರ ಸವಾಲನ್ನ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೈದಾನದ ಮುಕ್ಕು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಅರಿತವರು KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಅಂತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ತಮ್ಮ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬನ್ನಿ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. Hello. Thank you so much, Abdul Samad Katipala, for your wonderful commentary in our state language, sweet language, Kannada. And it's going to be a huge game. And especially coming to that target is concerned, it's going to be huge in the sense 65, which is going to be a target. And thanks to the innings of Arshad Bajal as well as Santosh Bantwal, the two very good opening batters are laid the foundation in the beginning itself. They are very, very aggressive, and they dominated that bowling department of KFC Kodikal, and they got a huge total of 64 and 65, which is going to be a target. And when you see how well the team KFC Kodikal will going to get this mountain of runs, and of course it seems to be a little bit a huge target, but in cricket anything can be possible. But just like Abdul Samad Katipala mentioned earlier, some teams definitely has got some name and fame in some particular cricket ground. Just like what Gori Young boys just were talking about, they have got some very good titles in this prestigious cricket ground. And even Young Friends Surua also got some very good records in this particular cricket ground, and wait and see how well they will going to continue their good performance in this particular cricket ground. But a lot of hard work is required for KFC Kodikal, and they are also got some good, very good players in the side, so that we are just expecting some great battle between these two teams. First ball, right arm over the Shakir tries that one, lack of placement, straight to the hands of Anif. Is a local boy in the picture at mid-on region. He's got opportunity to represent Young Friends Surua, as some players are missing in the playing 11, and Anif just getting some cheer from the crowds for that very good piece of fielding down at mid-on, and Shakir couldn't manage to defeat the fielder. This time Shakir plays just over that of that square leg fielder, ball which is just landed safely, and before the fielder from behind the square to run to his back, ample time for Shakir to complete that couple of runs. The ball looks like has got a little bit fingertips, and there is a three fielders. You can see that very close together, and the three fielders covered square leg umpire Harish Padil very close together, right and left, and looks like two bodyguards for Harish Padil. Again, they wanted to go for the reverse sweep. Shakir plays it that switch it quite nicely to that short gully region, and scoreboard numbers on to 3 on the board, 3 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Shahnawaz
One more very talented bowler for the side, very tall and very talented, and especially known for economical overs more than the wicket-taking bowlers. He is definitely going to be known as a very economical bowler. Now the man in form, Izaz, is one of the fantastic performer. He's on strike now. We're going to face Shahnawaz. Right over the wicket to Izaz. Izaz going for the expansive right, not quite getting hold of that one properly, and mistimed that one, but got opportunity to get the single there. With that single, scored Namuzan to 4 on the board for the without loss of any wicket. Needed some good start. Of course, the first 2 overs is going to be a very crucial for KFC Kodikal. At least they wanted to get to 20 to 25 runs in that 2 overs. Then gate will going to open for the team to get this huge total of 65 to win this match. Shahnawaz, 5th time in this over. Right arm over the lofted just over the infield. Protection is there in the deep long. What a good save there for the fielder. Absolutely fantastic. And very, very good piece of fielding there by the fielder. Almost looks like ball is going to be landed over the row for 1 bounce, but the fielder from the wideish long off almost run across to his right, saving certain boundaries. But Hanif has also tried level best. He's just running back and tried to get the ball, but unfortunately he just lost his balance. But fortunately nothing has happened. It looks like he's very fine, and scoreboard Namuzan to 6 on the board without loss of any wicket. Shakir has got a confident looking drive, but fails to get the boundary. 6 on the board. This time almost looks like the batter wanted to play that switch it, and the bowler bowling a very good line in the irrigation, just changing the line cleverly after completion of over number first, chasing a total score of 65 to win this match. Scoreboard is 6 on the board. That means 59 more runs required for the victory. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಓರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯುವಕರ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಳಿಗೆಗೆ ತನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆ ಹುರುಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಫಾ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಿಯಾಜ್ ರವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಅನ್ನ ಸಫಾರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಬ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವವರು, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇಂದು ಪಾತ್ರರು ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಫಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಶಾಲ್ ಅನ್ನ ಹೊದಿಸಿ ಅವರ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಊರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವ ಬಡ ಜನತೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಆ ಶಾಲನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವರ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ, ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಿಯಾಜ್ ರವರು ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕರ ಆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೋಟ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Thank you so much, Abdul Samad Katipalla. Absolutely, you are rightly mentioned. It's going to be the great pleasure for all of us having General Secretary of KPCC and respected Inayat Ali are joining here in our commentary box as a chief guest for this prestigious Nazar Champions Trophy 2024, which is proudly organized by Nazar Sports Club as they are celebrating their 20th anniversary. And definitely that will going to be most memorable moment for Nazar Sports Club 9th block, because in this busy schedule it's not easy, because definitely the politicians have a lot of busy schedules, but making time to
making time to join this cricket tournament. Definitely it is going to be almost the proud moment for all of us, having General Secretary of KPCC, respected Inayat Ali in this particular cricket tournament. So on behalf of all cricket lovers, on behalf of organizer, we would like to welcome him for this prestigious Nazar Champions Trophy 2024. Just coming back to this match, the decision which is going to be pending here, as I just wanted to see that caught behind the wicket umpire. How to see whether the wicketkeeper taken that catch very neatly or not. That's what the umpire Mohan Ayadi have to see, whether the ball which is landed in front of the wicketkeeper, all it is taken neatly or not. ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುರುಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿದ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತು ಅವರ ಆ ಸುಮಧುರ ಮಾತನ್ನ ಆಲಿಸೋಣ. ನಜರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2020-24 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಈ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶಫಾ ಅವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಿಯಾಜ್ ರವರೇ, ಈ ಭಾಗದ ಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಸತ್ತಾರ್ ರವರೇ, ಜಫರುಲ್ಲಾ ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಭಾಗದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತು ನಜಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ನೆಲೆನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸ್ತಾ, ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ತರ್ತಾ ಇರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಾಗುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಈ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನಿಟ್ಟು ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಸಾಮರಸ್ಯತೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಸಹಬಾಳ್ವೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದು ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಆ ಸೌಹಾರ್ದ ಮೆರೀಲಿ ಎಂಬ ಆ ಸುಂದರ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Thank you very much, yes, Inayat Ali sir, and thanks so much, Abdul Samad Katipalla. But meantime, the boundary which is coming from the bat of Izaz got just breaking the shackle in the second over. The managed to get the boundary there and scored Namuzan to 11 on the board. 11 for without loss of an wicket, chasing a total score of 65 to win this match. Looks like it's going to be the slight bit of a comeback from the batter of KFC Kodikal. Bowler Imtiaz, one more very experienced bowler. Sir, namaste, sir. So thank you very much, Inayat Ali sir, for your very valuable time with us. And again they're going for the shot. That lovely delivery indeed. The ball just missing that stump, leg stump of Shakir there. Ball almost coming into the batter. Batter wanted to get that one into downside position. Very lucky that ball just misses the stumps. The wicketkeeper behind the stump also missed it, so that they got a single there. With that single, score numbers on to 12 on the board. 12 without loss of any wicket in the over number. Second is in progress. Imtiaz again, one of the most experienced campaigner. Pass number Harish Padil, right arm over the wicket to Shakir. Shakir again going for the inside out cricketing stroke. Just wanted to play that one down to extra cover region. The intention is very clear that from Shakir, he knows that there is no field in the cover point and extra cover. He just wanted to make a little bit room to play the shot, but couldn't manage to get that timing behind the stroke. But he got a single for that. With that single, score numbers on to 13 on the board. Again, Imtiaz, right arm over the wicket. Bounce is up and over. Lovely shot into the deep extra cover region. I don't think the fielder will going to get that ball reaching to the fence. One bounce down to deep extra cover boundary for 4 runs. What the cricketing stroke, what Shakir is tried for, but Izaz is completed that stroke in the very next delivery.
because Shakir is in the previous over, he wanted to get that same stroke, that was inside out cricketing stroke, but Izaz in that occasion he got a perfect timing in that occasion, and he got the placement absolutely glorious, and with that boundary, score now jumps into 17 on the board. This is a much required productive over coming in favor of team KFC Kodikal, and they're chasing 65. They needed such kind of brave and gutsy batting, and Shakir and Izaz being the very experienced campaigner for the side of KFC Kodikal, they were not really giving, they were not going to give this match easily for young friends Raw. Shah Nawaz will going to continue from the commentary box and with a short run up. The first over is bowled a very tidy over, the over of just 6 runs in the first over, 11 runs came in the second over, and wait and see how many runs in this third over. And here is again Shah Nawaz, right arm over the wicket ball. Shakir swept that one very nicely down to deep mid-wicket region. Santosh Bantwal there in the mid-wicket region, quickly moving to the direction of the ball, so that both the batters completed a walkable single. With that single, Skoban Namuzan to 18 on the board, 18 for the loss without loss of any wicket. Just like what Santosh Bantwal and Arshad Bajal is laid the foundation for the first wicket, these two opening batters also trying for getting some good runs in the first wicket. There's a lovely shot across the line, plays it down to deep mid wicket region. Santosh Bantwal has a good arm, so that no question of taking a second and run there. One more single. With that single, Skoban Namuzan to 19 on the board in the over number 3 is in progress. 2 singles in 2 deliveries in this over of Shah Nawaz. Bowling third time in this over, past umpire Pushparaj. Coming down the track, using his feet, not quite getting hold of that one properly. This time a little bit hard work there from little bit fumble from the fielder at the long on region, and they're grabbing that opportunity quite easily by the fielder, by the batters, and Anif, who is standing at short mid-wicket, tried to get the ball to his hand. Again, the ball just missing his hand. Couple of runs which is taken there. With that couple of runs, Skoban Namuzan to 21 on the board for the without loss of any wicket in the over number 3 is in progress. Still long way to go. The 44 more runs required for the victory. And this is over number third is in progress. Again, Shakir plays that slog sweep shot. Ball is in there for a while. Once it looks like ball will going to carry to the fielder, but ball landed safely between deep square leg and the mid wicket. Unbounce collected by the fielder. And with that single, Skoban Namuzan to 22 on the board. 22 for the loss without loss of any wicket. Shah Nawaz to Izaz. Izaz that time going for the big swing on the onside region. One of his favourite. Always having a connection whenever he's trying for that cricketing stroke. But this time ball just missing his bat. Lucky escape for Shah Nawaz, because he's aiming towards a deep square like that is behind the square, and only Santosh is there in that square leg region, and there is a protection in that deep square leg in front of the square, not behind the square. Again going for the big swing, missed it completely. 2 dotted deliveries will going to put some pressure. Absolutely fantastic over from Shah Nawaz. I've already mentioned he's a kind of bowler who loves to bowl the economical overs, not the wicket taking overs, but again he's justifying. Still he's been outstanding in these limited over matches as far as the line and length is concerned. 3 gone after completion of over number 3, chasing a total score of 65 to win this match. Team KFC Kodikal are 22 on the board, and that means they need to get another 43 runs to win this match in the remaining 4 overs. That means asking run rate is really climbing up, almost 11 runs per over, just under 11 runs per over. Asking run rate here for KFC Kodikal to win this match. Nothing wrong with the fall of wickets, but certainly little bit problem with that asking run rate. 44 ರನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದ 4 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 22, 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್, beautifully ball. Absolutely, Shakir has got no clue whatsoever. Coming down the track, try to use his feet, and Arshad Bajal knows that, just changing the line, ball around the legs of the batter. Shakir just left the ball just did the magic and hits the stumps. The first wicket is back into pavilion. Quite unusual and kind of dismissal here from Shakir,
and I'm now really surprised why he's left the ball. And ball just missing it, hitting his leg stump. The wicket number first, which is back into pavilion of KFC Kodikal. Shakir departs. Huge wicket for Arshad Bajal, the man with the golden hand. So Arshad cleaned him up with the beauty of the delivery. Ball just is hitting his leg stump. The new batter in his Nazar. The man is in terrific form for KFC Kodikal, and especially in this particular cricket ground in that the previous tournament which is played in this cricket ground, BMR Trophy. Nizam absolutely played a magnificent cricket in this particular cricket ground. Chipped that one quite nicely down to mid-wicket region, but not more than a single. Therefore, the mid-wicket fielder has got ample time to collect the ball. And one more single. With that single, score moves on to 23. 42 more runs required for the victory. Izaz back on strike. This time again, plays it beautifully down to deep cover point. Boundary for 4 runs. Lovely shot. Good placement. This is the Izaz for you. Until you are having this man in the middle, I don't think the captain of Young Friends Urva will go into relax. What a glorious shot. That was an absolutely intelligent cricketing stroke there from Izaz. Have a look at the way that is just going back and just place it down to over the head of the backward point region. You know exactly where the fielder is. There is the fielder, the deep cover point and a deep widest long off. But you know exactly that the field is definitely the wind which is flowing in the direction of offside region. So he's just using the direction of the wind and clever thinking. The intelligent batting from Izaz, and he got a boundary for that. 27 on the board. Now we can see that slight bit of change in field now. Cover point going a little bit finer between backward point and cover point, and the fielder from long off is coming almost in towards the deep extra cover. There is no fielder in the deep long off, but the deep long on. This time driven that one catch, it is a call, but I already mentioned the fielder in the deep long off, little bit in the squarer. Absolutely good placement, good cricket there from Izaz. This is why I'm really loves to watch him, this man. I'm seeing him from last 10 years. One of the most delightful cricketer to watch when he was get going. Izaz is a very good cricketer, intelligent cricketer. Again, he got the placement right to get a couple of runs. And scoreboard moves on to 29 on the board. Arshad Bowseg swings and missed. This time he just wanted to play that cross-batted stroke. And everything is getting what he really wanted. But one stroke, what is his favorite, that is a slog sweep shot, he is missing that one several times. Arshad again, a good comeback. Again, beautifully ball, perfect one. Ball is hitting the non-striker's body. Nizam tried to avoid that stroke from Izaz, but couldn't manage to do that. But the single is taken. He will going to retain the strike after completion of over number 3, chasing a total score of 65 to win this match. 4 overs completed, correction, and scoreboard is 30 on the board. That means another 35 more runs required for the victory in 3 overs, and asking run rate to almost again just going higher and higher in each and every over. And Gopi certainly, and maybe it was a huge total to chase down the 65 for KFC Kodikal, but having Izaz in the middle, Nizam is, everybody knows, his caliber, is a man in form for the team KFC Kodikal, and definitely Gopi, the 3 overs going to be very crucial for both the teams. Of course, Young Friends still is looking in upper hand, but you can't underestimate these two batters in the middle. They can change the complexion of this game. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त 4 ओवर के समाप्ति के बाद इक्वल बैटल इज नाउ ऑन नाउ। जैसा कि आपने फरमाया सतीश, क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज एजाज और निजाम, जो कि इस वक्त अपना लय रिदम प्राप्त कर चुके हैं, और अगर अगले 2 ओवर में 3 ओवर का खेल बाकी है तो इस ओवर में कम से कम 12 से 15 रन अगर बनते हैं तो निस्संदेह कोडिकल इस मैच में वापस आ सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं इस ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इजाज इस वक्त सपना करते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। तो
तो पांचवा ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है और 31 रन बन चुके हैं और जहां तक लक्ष्य का सवाल है 66 रनों का लक्ष्य, तो 65 रनों का लक्ष्य और इस बीच गेंदबाज तैयार, ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेट एंड लाइन, जस्ट गॉन फॉर अ माइटी ही नॉट सक्सीडेड और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 31 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त रख चुका, 16 गेंदें बाकी हैं और रन से चाहिए इस वक्त 34, 34 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 16 बॉल्स। अगली गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाह, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 32 रनों पर, 32 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, इस वक्त केएफसी कोडिकल के बल्लेबाजों को चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस मैच में कमबैक यानी वापसी करने के लिए और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर अरशद बजाल और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद इस बार, लेकिन 2 स्क्वायर, he hit that one pretty hard. But at the last moment, just we had wait for the umpire decides a 6, and that is an absolutely fantastic strike. और ऐसा कहना पड़ेगा एजाज ने गेंद के इस वक्त ऑन साइड पर स्विंग कर दिया था, अगर थोड़ा सा भी गेंद स्क्वायर जाता, थोड़ा सा भी स्क्वायर जाता तो सिर्फ 1 रन मिल सकता था, लेकिन जिस बेहतर जजमेंट के साथ उन्होंने इस गेंद को उछाला निस्संदेह काबिले तारीफ है और इस छक्के के साथ दे आर नाउ अलाइव इन द गेम, 38 नाउ, सो 14 balls left and 27 more runs now they have to score for victory. So अब ऐसा कहना पड़ेगा एक और छक्का केएफसी कोडिकल को इस मैच में वापस पूरी तरह ला सकता है। तो इस बीच इंती गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट इजाजत के लिए गेंद को उछाल दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा, क्लीन कलेक्शन और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 39 रनों पर। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪಿಡೋಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ विनंती और इस बीच इंती इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट सामना करने के लिए तैयार निजाम, दाहिने हाथ की गेंदबाज इंती की गेंदों का यह गेंद इंती के लिए मौका हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आते हैं स्क्वायर लेग पर और ये क्या छूट चुका है, इस वक्त गेंद को लपक नहीं पाए और बल्लेबाज को यहाँ पर जीवदान के साथ 2 रन मिल चुके हैं और निश्चित रूप से ये 2 रन उनके लिए काफी बेशकीमती यहाँ पर साबित हो सकते हैं। तो ओवर नंबर 5 की समाप्ति हो चुकी है, 41 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर, 11 रन इस ओवर में बने, 11 रन स्कोर्ड फ्रॉम दिस ओवर। सतीश निश्चित रूप से यहाँ पर इस ओवर में 11 रन बने, लेकिन जॉब इज नॉट येट ओवर, 26 दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 2 ओवर्स, दैट मींस इन रिमेनिंग 12 डिलीवरीज और ऐसा कहना पड़ेगा ये जो ओवर शुरू होने जा रहा है इसमें अगर कम से कम 24 रन रिक्वायर्ड, इनफैक्ट पार्डन 24 रिक्वायर्ड, 24 रन चाहिए 12 गेंदों में और जहां तक सवाल है सतीश इस वक्त ये जो ओवर शुरू होने जा रहा है इस ओवर में अगर कम से कम एक 13-14 रन बनते तो निस्संदेह यहाँ पर केएफसी इस मैच में वापस आ सकता है। Well, absolutely, Gopi. But talking about that 6 wicket. What we are talking about this particular over, the previous over and over number 5 is also absolutely fourth over also they back in the game because of 2 sixes which came from the bat of respectively from the bat of Izaz and 2 sixes which came from the bat of Izaz, definitely changing the complexion of the game. And 12 runs per over, Gopi, it's manageable. And have a look at the Izaz, he is looking so confident in the middle and the highlight of his innings is that, Gopi, he is judging that the placement very well. It's not like he's going for the big shot every delivery, but he's converting every delivery as a scoring one. It's not necessary that he wanted to go for the big shot, but even is getting that couple of and placing the ball very well, and the match is now definitely going to be evenly poised. Exactly, Satish. जैसा कि आपने फरमाया, match is now going to definitely evenly poised. ये गेंद इस बार swing it. This time is going to distance. Yes, it does. It's a biggie. And with this 6, I must say, KFC Godigal are now back in the game. 49 the score. 18. In fact, it's a 16 required, and the ball is remaining 10. 10 गेंदे 16 रन और ये जो छक्का इस वक्त लग चुका है इजाज के बल्ले से निस्संदेह केएफसी कोडिकल को काफी हद तक इस मैच में वापस ला चुका है और मैच अब बराबरी पर रुक चुका है। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, चूंकि विकेट
विकेट कीपर चुके, गेंद जाते हुए शॉर्ट फाइन लेग पर एक बार रन मिलेंगे। रियाज माफ कीजिए, इजाज ऑफ द स्ट्राइक हो चुका है। जहां तक इजाज का सवाल है, निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा शीट एंकर्स रोल, मुख्य सूत्रधार की भूमिका यहां पर वो अदा करते हुए कि लंबी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए 15 रन और बनाने हैं। 50 कम्स अप फॉर केएफसी कोडिकल। ये गेंद इस बार गेंद उछाला, स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, मौका हो सकता है, फील्डर रोकी नहीं, कैच छूट चुका है। जीतन कोशिश की थी लड़ने की मामला नॉट स्ट्राइकर पर, लेकिन यहां पर इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। तो यहां पर देखना यह है कि इजाज जब विकेट उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज इजाज क्रीज पर अपना बल्ला लैंड कर चुके थे या नहीं, तो काफी मुश्किल सा मौका था लॉन्ग ऑफ पर फील्डर के लिए, लेकिन जीतों कोशिश वहां पर फील्डर ने जरूर की, लेकिन आखिरकार गेंद तक लपक नहीं पाए। तो यहां पर एक रन जरूर मिल चुके हैं, अगर इजाज रन आउट नहीं होते तो दूसरा भी रन मिल सकता है। तो यहां पर निस्संदेह सतीश इजाज का विकेट इज द मेन फैक्टर। यहां पर इजाज का विकेट यहां पर बचता है तो केएफसी कोडिकल के लिए काफी हद तक उम्मीदें बरकरार रहेंगे। अगर इजाज का विकेट इस गेंद पर गिरता है, यहां पर रनआउट के रूप में अगर गिरता है, तो निस्संदेह केएफसी कोडिकल के लिए काफी मुश्किलें बढ़ सकते हैं और यंग फ्रेंड्स के लिए राहत भरी सांस उनके कप्तान ले सकते हैं। Well, Gopi, it definitely going to be, it is going to be a big fish in the net if it is going to be run out. But just seeing the body language of batter Izaz, looks like he is safe, but his body language is not good enough. I want to see that the third umpire, whether he is going to be getting evidence enough to give the decision whether the batsman is safe or not. Just wait and see. But what innings Gopi is playing, absolutely never looks like the one stage when it was 65 is going to be a target for the team KFC Kodigkal, which is going to be achievable. But Shakir and Izaz, the way that they're constructed that innings has been outstanding. Just like for young friends who are opening batter, Santosh Bantwal and Arshad Bajal, they laid the foundation. Similar kind of start which is given by the opening batters. So not out signal coming from the third umpire Mohan Ayyad. This is going to be relaxed. They are going to relax that supporters of KFC Kodigkal that Izaz is a key man in this situation. He's a safe, and not only that he is a safe, Gopi, they got a very important one run also, that they got 2 runs. Now the equation I want to see here, 13 to get and 8 balls remaining. Still this match is going to be anybody's game. बिल्कुल सतीश, this match is going to be anybody's game at this situation. Now Ijaz इस वक्त बच चुके, he is batting on 34 at the non-striker and absolutely fantastic innings came from him, coming from him. In fact 2 sixes and 3 boundaries hit by Ijaz so far. अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक विकेट के ऊपर से उन्होंने खतरा स्पीड चल, लेकिन एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित यहाँ पर डॉट गेंद यहाँ पर गिर चुका है। गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा था अंतिम क्षण में, लेकिन आखिरकार गेंद को ठीक तरह से स्वीप नहीं कर पाया और विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी जरूर, लेकिन दूसरे पैर में तेजी के साथ गेंद पर लपकते हुए विकेट कीपर। 7 गेंदे 13 रन चाहिए, 13 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 7 बॉल्स। ये गेंद टॉप एज मौका हो सकता है इस वक्त स्क्वायर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए अंतिम क्षण में इस कैच को लपकने में सफल बेहतर तरीके से, और इसी के साथ एट लास्ट द पार्टनरशिप हैज बीन ब्रोकन। तो निजाम का विकेट गिर चुका है, 52 for the loss of 2 wicket and well supporting role came from Nizam. He scored only 6 runs but he supported very well to Ijaz and after being a long partnership, this partnership has been broken and now they are 52 now. So इस ओवर में सतीश 11 रन बने और चौथे ओवर में 5वें ओवर में 11 रन बने थे और छठे ओवर में भी 11 रन बना, तो 22 रन स्कोर फ्रॉम द लास्ट ओवर, 13 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर। अंतिम ओवर में 13 रन चाहिए विजय के लिए और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा केएफसी कोडिकल के लिए मुमकिन है अगर यहाँ पर इजाज स्ट्राइक पर आते हैं तो। Absolutely, he will coming to the striker because over which is comes to run and he will going to be in the striker's hand. 6 balls 13, I think Gopi is manageable because the way that Izaz is taking this innings, is really a very good constructor of the innings. If you see that in this position, KFC Kodigkal, only because of the way that he's taken this match with this clever thinking batting, isn't it? You know exactly now the 13 to get from last over, at least one big shot which is badly required, and Izaz has got a capability of doing that. So it's because in the previous the 2-3 overs he managed to get that big shot what he really wanted from his bat, and I think Gopi, but you need to see that the last 2 deliveries in the previous over, which is a dotted delivery, it might be that was a little bit drawback for the team KFC Kodigkal. At least in that 2 deliveries, they managed to get at least 2 to 3 runs. It's going to be less than 10 runs, which is a required run in the last over. Now it's 13
13 runs required for the victory, and maybe it was a little bit difficult one, but not impossible. And wait and see how well Izaz will going to take his team into victory, and wait and see which bowler will going to ask that last over. And Prajvit, he is bowling his first over. The new bowler is introduced, the young man, and wait and see how young man will going to handle the pressure. But here is Gopi. It's going to be a question of handling the pressure, whether it's a batter or there is a bowler, but those who are going to handle the pressure very well, they will definitely going to be the winner of this match. Absolutely, सतीश, दबाव को जो झेलेगा वही इस मैच में विजय दर्ज करेगा। 6 गेंदे 13 रन, और प्रज्वलित इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए बाएं हाथ के गेंदबाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज इजाज जो कि 34 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। तो यहां पर केएफ से मैच अगर जीतता है तो 1000 रुपए का नकद इनाम घोषित किया गया रियाज वी के इनकी ओर से। तो इस बीच पहली गेंद लेकर तैयार, इस बीच गेंद को छीन किया इजाज ने और सीधे गेंद डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में। डीप मिड विकेट पर संतोष बंटोल जो खड़े हुए थे, गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची। हालांकि स्ट्रोक्स में कुछ गलत नहीं था, लेकिन प्लेसमेंट था बिल्कुल गलत था, और आखिरकार इजाज का यह विकेट गिरना निस्संदेह यहां पर सतीश ऐसा कहना पड़ेगा केएफसी कोडिकल के लिए biggest drawback यहाँ पर साबित होगा। Absolutely, Gopi, it's the biggest drawback. Why not? The Izaz is a man who really taken this match till to this almost to the position where they can feel that they can win the match, but in a wrong time he's back into pavilion. It's absolutely big fish in the net. And just coming back to that dismissal, what's really wrong with that particular cricketing stroke? Almost he drags the ball. The line of the ball outside the line of off stump, so he drags the ball. That's why that ball is went in a flatter version. If it is on a little bit in a higher version, the wind will going to take this ball into the fence. And it's the fact that it drags the ball, it couldn't manage to get that elevation he's looking for. And that's what the main drawback of that cricketing stroke is played by Izaz. But a magnificent innings, Gopi. And even though the 5 balls remaining and 13 runs required for the victory, but he played some very good cricketing stroke. And he will going to get 1,000 rupees for every 6 which just came from the bat of Izaz, and Arif of Ascent KSA is already announced 1,000 rupees for every 6, but this 1,000 will going to be valuable only if KFC कोडिकल going to win this match. बिल्कुल सतीश, ये इनाम तभी मायने रखता है जब कोडिकल केएफसी कोडिकल इस मैच को जीत पाएगा। निस्संदेह बेहतरीन पारी इजाज के समाप्त हो चुके हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर रहा और यहाँ पर सही गेंद घोषित, सही गेंद घोषित। 4 गेंदें बाकी हैं और इस वक्त अंपायर ने इस वक्त मांग की है तृतीय अंपायर की ओर। जहां तक सवाल है तो देखते हैं यहाँ पर ये गेंद सही है या नहीं। तो स्कोर इस वक्त 52 रनों पर रुक चुका, 3 विकेटें यहाँ पर गिर चुके हैं। तो तो यहाँ पर देखते हैं तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं। रिजवान बी के इनकी ओर से 1000 रुपए का नकद पुरस्कार घोषित किया गया है अगर केएफसी कोडिकल इस मैच पर विजय दर्ज करता है। तो तृतीय अंपायर इस वक्त परिशीलन करते हुए कि गेंद वाइड है या नहीं, और खेल और राइट डिलीवरी, इट्स अ फायर डिलीवरी and now 4 balls and 13 runs required. The things getting much tighter now for the batsmen of KFC कोडिकल। अब चौके और छक्कों की सख्त जरूरत है यहाँ पर KFC कोडिकल के बल्लेबाजों को। बाएं हाथ राउंड विकेट प्रज्वलित की गेंद, ये गेंद उछाला इस वक्त लगा ऊपर फील्डर गेंद के नीचे आते वक्त टिम मिस कैच को लपकने में सफल, और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। लंबा से फील्डर दौड़ कर रहा है, काफी लंबा दौड़ में लगाना पड़ा, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए गेंद को बाखूबी बेहतर जजमेंट के साथ लपकने में सफल। और समीर जो कि फील्डर थे जिन्होंने इस कैच को लपका बेहतरीन तरीके से, और इस कैच की बदौलत एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा केएफसी कोडिकल के लिए मुश्किलें और यहां पर बढ़ चुके हैं। द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर देम। अब 3 गेंदें बाकी और रन चाहिए 12, 12 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 3 डिलीवरीज, और 3 चौके या फिर 2 छक्के इन बचे हुए 3 गेंदों में यहां पर लगाने होंगे। और बल्लेबाज जो कि चेतन इस वक्त मैदान पर उतरते हुए, और देखते हैं चेतन क्या करिश्मा इस वक्त बल्लेबाजी में करते हैं यहां पर। फिलहाल इस वक्त तख्ता यंग फ्रेंड्स उर्वा का यहां पर भारी लगता हुआ, और प्रज्वलित
अब तक पहले 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं, सिर्फ 1 रन प्रदान कर चुके हैं और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। 12 रिक्वायर्ड ऑफ 3 डिलीवरीज और जहां तक 13 रिक्वायर्ड इनफैक्ट ऑफ 3 डिलीवरीज, 13 टू गेट फ्रॉम 3 बॉल। 3 डॉट गेंद इस ओवर में प्रज्वलित फेंक चुके हैं। 13 रिक्वायर्ड, ये गेंद अगली गेंद इस बार ऑफ सबसे बाहर वाइड एंड नाउ इट्स 12 रिक्वायर्ड। 3 balls and 12 runs, 53 for the loss of 4 wicket, 65 the target। और प्रज्वलित इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार वाइड, एक बार फिर से वाइड एंड नाउ the bowler is now looking just little bit of under pressure। 54 now, 11 to get, 3 balls remaining और अंपायर जो कि इस वक्त विकेटों को सही करते हुए और एक बार फिर से प्रज्वलित गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त चेतन के लिए यह गेंद इस बार चेतन चूके डॉट गेंद नॉन स्ट्राइक पर निशाना और इसी के साथ विकेट गिर चुका एंड नाउ द लास्ट चांस। 2 sixes required, almost 2 sixes required in the remaining last 2 deliveries। 1 6 and 1 4 can make the match tie और 2 छक्के लगातार अंतिम 2 गेंदों में यहां पर केएफसी कोडिकल को विजय दिला सकते हैं, लेकिन यहां पर अंतिम गेंदों पर 2 करारे प्रहार लगाने के लिए जीतोड़ मेहनत मुशक्कत यहां पर करनी होगी केएफसी कोडिकल के जो भी बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर बढ़ेंगे। तो इस वक्त 11 रनों की दरकार, 10 रन टाई के लिए, 10 फॉर टाई, 11 फॉर विन, 2 balls रिमाइनिंग और प्रज्वलित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हकीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए प्रज्वलित और द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन और इस बीच तैयार प्रज्वलित बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज हकीम सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद हकीम के लिए स्विंग किया इस वक्त लॉन्ग पर, लेकिन फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। 55 10 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट डिलीवरी और अब अंतिम गेंद पर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो यहां पर यंग फ्रेंड्स उरुआ की विजय निश्चित है। लेकिन क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज और यहां पर देखते हैं अंतिम गेंद पर क्या गेंदबाज नो बॉल या वाइड फेंकते हैं या फिर सही गेंद फेंकते हैं। और प्रज्वलित इस वक्त तैयार है, यह गेंद इस बार डिफ्लेक्टेड वाइड इन फैक्ट एंड 1 run added to the total। It's 56 now, 56 for the loss of 5 wicket, still 1 ball left and 9 runs required, 8 for tie, 9 for win। प्रज्वलित bowls अगली गेंद सही गेंद, that's it। 8 runs thrilling victory for young friends who are against KFC Kodikkal। With that 8 runs thrilling victory, they are through to the next round of this competition। So a fantastic match came to an end between young friends Urua versus KFC Kodikkal, chasing the huge target of 65 set by young friends Urua। KFC made a brilliant fought back, but at last they fell 8 runs short of 9 runs short of their victory target, and finally they lost the match by 8 runs। So the next match, one more good match is now coming up। NM Mangalore will take over Torpedoes Khana and that match starts with Rijeshwar Pal। Till that we are taking a short break और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे राज्य भाषा कन्नड़ में जनाब अब्दुल समद काटीपल्ला के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत होगी NM Mangalore और टोरपेडोस खाना के बीच में। Arshad Bajal adjudged the man of the match for his fantastic batting knock of 23 runs and in the bowling department he also captured 2 wickets, and because of this all-rounding performance of 23 runs with the bat and 2 wickets from the ball, he adjudged the man of the match। I request Mr. Arshad Bajal of Young Friends to please come onto the stage and receive the man of the match award from the organisers। Mr. Arshad Bajal, please come on to the stage and receive the man of the match from the organisers because of his all-rounding performance of 23 runs and 2 wickets। So next match starts with just short while, and we'll be back right after short break with Mr. Abdul Samad Kadipalla in our state language, sweet language, Kannada। So now it's time for break. Thank you. Dhanyavad।
Absolutely, Shelly. ನಜರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಎಲ್ಲರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರಣರಂಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ರವರ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಹೈಲ್ ರವರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ 2 ಓಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. ಎರಡು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ಅರಿತು ಹೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ 2 ತಂಡವಾಗಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು, ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶರಣ್ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ, ತೌಫೀಕ್ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸತತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಆಟಗಾರ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಶರಣ್. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ. ಶರಣ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಾದರೆ ತೌಫೀಕ್ ಎನ್ಎಂ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಡೆತಗಾರ, ಎಲ್ಲರ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ಆಟಗಾರ ಈ ತೌಫೀಕ್. ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಶರಣ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ. ನೇರ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಜಾರುವುದು ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗದೆ ಚೆಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರು. 1 ಓಟವನ್ನ ತೌಫೀಕ್ ಹಾಗೂ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು 1 ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ. ಆಸಿಫ್ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ, ಶರಣ್ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ. ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಇದು. ಆಸಿಫ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟವನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ 5. 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 5 ಓಟಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶರಣ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದಂತಿತ್ತು ಆ ಹೊಡೆತ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕನ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯ ನಿಲುವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಸೆತ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶರಣ್, ಆಸಿಫ್
ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಬಹಳ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಅದು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಂದ 2 ಓಟಗಳು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 7 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿಯಾಗುವಾಗಲೇ ಶರಣ್ ತೌಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿಬಡ್ಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ, ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ದಂಡನ್ನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಆಟಗಾರ ಈ ತೌಫೀಕ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬೆಂಗರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರ ಶರಣ್. ವೇದಿಕೆ ತುದಿಯಿಂದ ತೌಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ರಾರಾಜಿಸಿದ 2 ತಂಡಗಳಿವು, ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಈ ಪರಿಸರದ 30 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿದೆ ಈ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ನೆನಪು ಈ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಲೇ ಈ ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿಗಾಗಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಿನಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ನೆನಪು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಜಾಜ್ ರವರ ಆ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಆಟ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಸೋತಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಸೋತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಜಾಜ್ ರವರ ಆ ಹೋರಾಟದ ಆ ಆಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಯು ಅದು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್ ರವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಸಿನಾನ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ದಂಡು. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಹೋರಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಆಸಿಫ್, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ನೆನಪನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5, 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಓವರ್ ಅದು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಆ 18 ಎಸೆತ ಕೇವಲ 5 ಓಟವನ್ನ 18 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸಿನಾನ್ ರವರ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಓವರ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು. ಇದು ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸಿಫ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೈಚಲಕ. ಆ ಕೈಚಲಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡನ್ನ ನರ್ತಿಸುತ್ತಲೇ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸಿಫ್. ಈ ಮೈದಾನವನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅರಿತವರು ಆಸಿಫ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದವರು ಆಸಿಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಗರಿಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸಿಫ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಾನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಾನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಾದರೆ ಅದೇ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಎಂಬ ಆ ಊರನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಿಸಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಾನ್. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ. ಇದು ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಗೆ ಮನವಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರಿಂದ. 1 ಓಟ ಇತರ ರಂಗಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ತೌಫೀಕ್ ಓರ್ವ ಅರ್ಭಟದ ಆಟಗಾರ. ಯಾವುದೇ ಮೈದಾನವಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಎಸೆತಗಾರನಿರಲಿ, ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಈ ತೌಫೀಕ್. ಎನ್ಎಂ ತಂಡದ ನಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಇದು ತೌಫೀಕ್. ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಾನ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ಆ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಾನ್. ತೌಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟ 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾರೀಸ್. ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ 2 ಮಿಂಚಿನ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೌಂಡರಿ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ರವರ ಬ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸಿನಾನ್ ರವರ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನಾನ್. ತೌಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ತೆಗೆದರು. ಒಂದು ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೌಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ. ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಿನಾನ್ ರವರ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರಿಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಭಟದ ಆಟಗಾರ, ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಂಡನ್ನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಆಟಗಾರ ಈ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸಿನಾನ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆಸಿಫ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇತ್ತು ಚೆಂಡು. ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರಿಂದ. ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ 16. ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸಿನಾನ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಿನಾನ್ ರವರ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆಸಿಫ್. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. 2 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸುಂದರ ರೋಮಾಂಚನ. ಇದು ಬೌಂಡರಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸಿಫ್ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಭಟದ ಆಟ, 10 ಓಟಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ. 2 ಓವರಿನ ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಆರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಆ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ಎಂ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೈವಾಕ್ ಎಂಬ ಒಂದು ನಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎನ್ಎಂ ಸ್ಕೈವಾಕ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಭರವಸೆಯ ಆಟ, ವಿಶ್ವಾಸದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಎನ್ಎಂ. ಮತ್ತೆ ಈ ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು. 20 ಬಂದಿದೆ 2 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ. 5 ಓವರಿನ 30 ಎಸೆತದ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒರಿಯರ್ ದೊರಿ ಅಸಲು ಎಂಬಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ 5 ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ತಂಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಎನ್ಎಂ ಇನ್ನುಳಿದ 30 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಓಟಗಳನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶರಣ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಭರವಸೆ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಶರಣ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೈದಾನವನ್ನ ಅರಿತಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಶರಣ್. ಆಟಗಾರನ ಚಲನವಲನವನ್ನ ಅರಿತ ಆಟಗಾರ ಈ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಶರಣ್. ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮೋಹನ್ಯಯ್ಯಾಡಿಯವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್. ಪ್ರಥಮ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನ ಎತ್ತಿ ಅರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ತೌಫೀಕ್. ಇದು ಜಾನ್ಮೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಮೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶರಣ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಾಸಿತ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ವೀರ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶರಣ್. ಆಟಗಾರ ತೌಫೀಕ್. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಈ ತೌಫೀಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬೆಂಗಾರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ತಂಡದ ಸಾರಥಿ. ಆ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಏಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣ್. 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ತೌಫೀಕ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಸುತ್ತಾ 1 ಓಟವನ್ನ ಮುಬೀರ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. 1 ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 3 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶರಣ್ 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಎಂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಶರಣ್. ಇಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಗುರಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಗೂಟವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಶರಣ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ರವರನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು 2 ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ 10 ಓಟಗಳನ್ನ ಉಪಯುಕ್ತ 10 ಓಟಗಳನ್ನ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿ
ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತುಂಬಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ರಾಂತಡ್ಕಾದ ಮಂಚು, ಇವರ ಆಟದಲ್ಲಿದೆ ಮಿಂಚು, ಇದು ಖಂಡಿತ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಸಂಚು. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮನ್ಸೂರ್, ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಎಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಮನ್ಸೂರ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಆಗಮಿಸುತ್ತಲೇ ಶರಣ್ ರವರ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ರವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಆಟ, ಅವರ ನೋಟ, ಅವರ ಓಟ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಪರಿಸರದ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣ್ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿ ಆಟ ಇದು ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ತೌಫೀಕ್ ಓಡಿ ಬಂದ್ರು. 2 ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶರಣ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರವರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ 2 ಓಟವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮನ್ಸೂರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ 25 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಶರಣ್ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಸೆತವನ್ನ 3ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಸೆತವನ್ನ ಶರಣ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮನ್ಸೂರ್ ರವರಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿ ಆಟ. ಮನ್ಸೂರ್ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 2 ಓಟವನ್ನ ಪಡೆದು 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಅವಳಿ ಓಟಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ರ ಮುಂದೆ 4 ಬಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 27 ಬಂದಿದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 9ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ NM ಮಂಗಳೂರು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಖಂಡಿತ ಇದು ನಾಯಕನ ಚಾಣಾಕ್ಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 27 ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ತೌಫೀಕ್ ಹಾಗೂ ಮನ್ಸೂರ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಕರೆಯೋದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಕರೆದು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸೋದು ಇದು ಸೂಕ್ತ. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಕರೆ ತಂದಿರೋದು ಈಗ ಹಾರಿಸ್ ರವರನ್ನ. ಹಾರಿಸ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋರಿಯನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎದುರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಮ್ಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಭರವಸೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾರಿಸ್. ಈ ಮೈದಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತವರು ಹಾರಿಸ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯವನ್ನ ಮೆರೆದವರು ಹಾರಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಆಟಗಾರ ತೌಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ವೇದಿಕೆ ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಬಾಳಂಗಳದಲ್ಲಿ ತೇಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬಂಗಾರೆ ಅವರ ಕೈಯನ್ನ ಸೇರುತ್ತಾ ತೌಫೀಕ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್. ಆದರೆ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 27 ಆದಾಗ ಹಾರಿಸ್ ರವರ 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರು ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ತೋಡಾರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಆಟ ಇಡೀ ತೋಡಾರು ಜನತೆಯ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಜೋಡಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಹಾಗೂ ಅಜರ್ ಇವರ ಮೇಲಿರುವ ಆ ಭರವಸೆ, ಇವರ ಮೇಲಿರುವ ಆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನ ಆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಆದ ಆ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಛಲ ಬಲವನ್ನ ಈ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಜೋಡಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರು. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾರಿಸ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ
ಅದರ ಮಲ್ಲೂರು ದಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇರೆ, ಇವರ ಆಟದ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರಿಸ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಆಟ. ಯಾವ ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲವೋ ಬಹಳ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದಂಡನ್ನ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಾ 2 ಓಟವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ ಅದರ್ ಮಲ್ಲೂರು ರವರ್ ಬ್ಯಾಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿ ಆಟ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಜರ್ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಮೌಜೂದ್. ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಚೆಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೋ ಆಟಗಾರರು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಯಾರು ಎಂದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಷ್ಟು ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಖಂಡಿತ ಇಂದು ಕೂಡ ಆ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರಿಸ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರಿಸ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನ್ಸೂರ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಹನೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಸಹನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ 4ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಹಾರಿಸ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಜರ್ ಹಾಗೂ ಮನ್ಸೂರ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಣದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾರಿಸ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ವೇದಿಕೆ ತುದಿಯಿಂದ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅದು ವೈಡ್ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಆ ಚೆಂಡು ತಿರುವು ಪಡೆದಿತ್ತು. ನೇರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅಶ್ರಫ್ ಮುತ್ತೂರುರವರ ಕೈಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. 2 ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಚೆಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರಿಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಓರ್ವ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ಭರವಸೆಯ ಎಸೆತಗಾರನು ಕೂಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರಿಸ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ. ಇದು ಸತತ 2 ಎಸೆತಗಳು ಚುಕ್ಕಿ. ಸತತ 2 ಎಸೆತಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ 31. 3ನೇ ಓವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 27 ಇತ್ತು. ಹಾರಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ 4ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 31 ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಸತೀಶ್ ಆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳಲು ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕರಣೆಗಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. For recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Bangalore, and the last over which is bowled by Harris is a little bit of putting some break on the run rate of team NM Cricketers Bangalore. Still they have got 3 overs in their innings. Definitely going to be time for the acceleration of the run rate. And Mansoor will going to take the first delivery of the over number 5, and Mubir bowls that one outside the line of off stump, and rightly behind the line of the ball. Mansoor managed to get the single for that. With that single, score moves on to 32 on the board. 32, it's a very good score in this condition. Of course, in the afternoon, it seems to be a little bit of batting paradise coming to that this particular cricket ground. There is a huge wind is passing in the afternoon. That going to be a little bit advantage for the batsman to get some big shots. That's why even it's 50 plus runs definitely required for NM Cricketers Bangalore. And here is Mubir again bowling away from Azhar. Right arm over the wicket, bounce to Azhar. Azhar this time wanted to play that his favorite reverse sweep, one of the specialist of playing switch it, and he got a single for that. With that single, score moves on to 33 on the board for the loss of 2 wicket. Both the batters
fielders. After that, two opening batters, Asif and Tausif, really produced some very good partnership for the first wicket. Then after losing two wickets, Sharan and Harris producing that vital breakthrough for Team Torpedoes Khana. Then these two batters tried to get runs in the form of single and couple. Meanwhile, yes, Mansoor wanted to change his bat. Mansoor, I am saying, is a little bit, he's got a lot of hard work about his fitness, level of fitness. Maybe he's lost, little bit lost his weight as far as my point of view after seeing him, because it's very important for each and every cricketer to maintain their the level of fitness, because heavy weight is always going to be difficult for the players to maintain their level of fitness. And Mansoor will go into face next delivery. Bowling away from Nazar, right arm over the wicket to Mansoor. Mansoor swings that one beautifully down to this corner boundary for 4 runs. The fielder trying his level best to chase that one, but ball just winning the race against the fielder. Lovely placement there from Mansoor. This is what, after changing the bat, Mansoor got a lot of confidence back in his favor and played an absolutely exquisite slog sweep shot right in the gap. There is a field in a deep square leg, but it is in front of square, but he played that one behind the square. And we can see that Imtiaz is standing at square leg in short square leg, and the batter got that one down to deep square leg boundary for 4 runs. He's very cool and calm so far, Mansoor, but opportunities created for him to play that shot, and he grabbing the opportunity to get the boundary for his team. Right arm over the wicket, Mobile Bounce. This time Mansoor plays that one once again, exquisite switch it into negation, reverse whip in fact, and plays it over that fielder. And before the fielder, Kiran will go and run back to his towards the deep backward point region. Ample time for the batter to complete that couple of runs. Slowly, Mansoor Rantadka just frees his arm in this particular over. You know exactly after that very good over the previous over. He knows that a little bit acceleration which is required for the team. NM Cricketers Mangalore. Scope numbers under 39 on the board for the loss of a 2 wicket. Mubir bowling with a short run up. Right arm over the wicket pass umpire Mohan Ayad. That again wanted to play this reverse sweep, but I've already mentioned this cricket ground is not so easy to get the runs behind the wicket. That ball is hitting that short third man region. That was a banner is implemented behind the wicket, and ball just after hitting the banner went into the hands of the fielder. Ample time for Mansoor Rantadka to get the single there, with a single score number on to 40 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 5 is in progress. Mubir, final time in this over, bowling right arm over the wicket. Already 9 runs came from that over. It's a good over for NM Cricketers Mangalore. This time, going for the switch. The ball is in the air for a while. The wicketkeeper and the bowler tried to get that one, but they missed it completely. One more dotted delivery, and Azhar not happy with himself, because he knows that the previous over also he played 2 dotted deliveries in this particular over also. The last ball he couldn't manage to connect that one properly. 4 overs completed, 5 overs completed in fact. The productive over, 9 runs coming from that over, and scoreboard is 40 on the board. NM Cricketers Mangalore against Torpedoes Khana. Yes, coming back to these two teams, NM Cricketers Mangalore and Torpedoes Khana, so far in this season, it's always going to say that it's a very good competition, and all the teams, top seeded teams, are sharing the titles equally. NM Cricketers Mangalore also clinching 2 prestigious titles. Torpedoes Khana also lifting up 2 to 3 titles. Corey Young Boys, Young Friends Rua, the 2 4 top seeded teams are almost there in a good run, and it's not like the one team is dominated this season, but every teams are putting their 100% to clinch some prestigious titles. But heavy cricket, we can see that the month of February and March till the first wicket, second wicket is going to be a heavy cricket in South Kent district, and it's going to be a very good opportunity for the cricket lovers to watch some prestigious cricket tournament. 6 over again pill for leg before wicket, ball pitching outside the line of leg stump. Mansoor wanted to get one more slog sweep shot, one of his favorite down to deep square leg, but he missed it completely from the bat, so that leg by call by umpire. With that addition of that leg by, score numbers on to 41 on the board for the loss of 2 wicket. The bowler came into attack is Sinan. Just like Abdul Samad Katipala just mentioned earlier, that he's produced 2 very good overs for Team Torpedoes Khana against Gori Young Boys. He bowled a maiden over, and now he's bowling round the wicket. Right arm, lovely delivery. He's getting some extra pace in his bowling, so that very difficult for the batter to get the ball into the bat. Because of that, the quickness of the ball, it's really creating the problem for the batter to have a connection from the bat. Again, as a little bit under pressure after they played some dotted deliveries, and he will get ready bowling to play to this. And this
time it's going to be a stroke of the frustration player. This is a stroke of the frustration player because after that Nazar played a 2-3 dotted deliveries, 3-4 dotted deliveries. A little bit that butterfly in the stomach, isn't it, of Nazar. He wanted to release the pressure from him so that he wanted to get the big shot, but not quite able to get that one from the middle of the bat. Pays the penalty for that. A deep long off fielder is taking that catch. Then wicket number 3 is back into pavilion. Nazar Malur is back into pavilion, and 3 wickets of NM Cricketers Mangalore is back into pavilion at the score of 41 on the board. Shinan suddenly is going to be the bowler, is producing some good overs for the team. Torpedoes Khana as a new batter in is one more fantastic all-rounder as far as the present cricket is concerned. Riaz coming to the middle, but no, but only 9 deliveries remaining in their innings, and wait and see how well the team right arm from the wicket. Riaz is a new batter in as Sinan bowls. This time a bowler's back drive. Lovely delivery there from Sinan. He's just testing the temperament of the batter. So far it's a very quiet over indeed, isn't it? Absolutely quiet over. Just a single run conceded so far out of the 4 deliveries. Where could be acceleration which is required for NM Cricketers Mangalore? That break which is put by the bowler, and especially the Sinan in this particular over. 4 very good deliveries. 5th time in this over. Right arm round the wicket passes umpire Pushparaj. For Riaz will go to face the next delivery. Again going to be a wide, punishable from the umpire, not from the batter, with the addition of that extra run. Scored moves on to 42 on the board. 42. Each and every run is going to be very crucial in this condition for both the teams. The Torpedoes wanted to put the break, and NM Cricketers Mangalore wanted to get the run. Right above the wicket, bounce again, going for the big swing of the bat again. He's just not quite getting that much of timing behind the stroke, but good enough for him to get the single down to short mid-wicket division with that single score. But moves on to 43 on the board. Altogether 5 deliveries bowled in this over, and only 2 runs are scored. This shows that the accuracy of that line and length which is by Sinan in this particular over. Now Mansoor back on strike, facing our last delivery of the over number 6. This time beautifully played and equally well played there, well fielded there by Imtiaz. Ball almost went like a bullet. That ball went like a bullet to that short square leg fielder, and Imtiaz stopping the speed of the stroke of Mansoor there, and he managed to get one single for that. One more very good over, tidy over there from Sinan after completion of over number 6. NM Cricketers Mangalore are 44 on the board for the loss of 3 wicket. So very good competition is going competition is going between the 2 very good teams. The very hot sunshine. The time is exactly 1:20, but we can see that the brightness, the condition which is going little bit, the hotness of the sun is going very hot, and more than hotter of this condition of the weather, the condition of this match is definitely going to be a more hotter than the weather condition, because the 2 very good teams are in between each other, and every cricket lovers want to see that is going to be a nail-biting finish in this particular match. After seeing the previous match, KFC Kodikal versus Young Friends Surwa, they wanted to see one more nail-biting finish between these 2 very good teams. And when I see last over is going to start right arm from the wicket. This time, misjudging that one, but protection is there in the deep square leg region, and that's why they managed to complete just a single in the negation. And Mansoor wanted to swing that one again, but not quite able to get more than a single for that. And here we can see that in our commentary box, a very attractive Champions Trophy, very attractive Nazar Champions Trophy 2024 just arrived here in our commentary box. So beautiful, huge one, and definitely it's going to be a dream of each and every team to just wanted to touch this very huge and beautiful attractive trophy which is situated in in front of our commentary box. 5 deliveries remaining. Right above the wicket, Riaz wanted to go for a cross-batted stroke down to deep square leg, but missed it completely. Each and every dot ball will going to put some break on the run rate of NM Cricketers Mangalore, because in the beginning, for the end of the 4 hours spent, Abdul Samad Katipalla hand over the microphone to me that NM Cricketers Mangalore are almost cruising towards a total around 60. But after that,
the two very good overs bowled by the bowlers of Torpedoes Khana, and this is the over number last is in progress as Harris bowls very good two deliveries so far. 4 balls remaining. Slight a bit of conversation now between Mansoor and Riaz about that game plan, how to play that remaining 4 deliveries. And well, wait and see how Harris will go to deliver the remaining 4 deliveries. Riaz is on strike. Harris right over the wicket. This time is a lofted dot, but it's going to be a catching practice here for Bashit down at long off. So Riaz departs. Again the batter couldn't manage to get the timing, but he's just choosing a wrong area to get the distance. Torpedoes Khana was strongly back in the game, and especially the first 4 overs which is belongs to NM Cricketers Mangalore, and remaining deliveries 2.3 deliveries which is goes in favor of Torpedoes Khana. Not only they able to put some break on the run rate, but they able to pick 2 valuable wickets of Azhar as well as Riaz. So 3 balls remaining in the innings of NM Cricketers Mangalore. Just coming back to that score, what they score, the run which is they scored in the scoreboard, we can see that only 45 on the board. That means 3 tidy overs. The first over 7 runs, second over 13 runs, third over 7, fourth over 4 runs, fifth over 9 runs, and sixth over 4 runs. This is what you are seeing, that the declining of that run rate. Of course, Mobile's over, which is 9 runs, which is a little bit expensive, and 13 runs. Otherwise, the tidy over ball by the bowlers of Torpedoes Khana. Mansoor Rantadka again is changing his bat. Maybe he's just hoping for the luck, because in the first time when he was changing his bat, he got a boundary. So now he's changing his bat, thinking about after changing a bat, can I able to get one more boundary from that bat? Wait and see. 3 balls remaining in their innings, and Harris will go to continue. Big A in the pack is on strike. Atif right over the wicket, balls appeal for leg before it is gone, is given him. Ball pitched in a line. Atif going for the big stroke across the line of the delivery, misses the line completely, finding himself right in front of middle stump. This is a fuller delivery. The batsman couldn't manage to judge that one. Atif going for the big shot, no other option at all. He need to get the big shot in this occasion, but pays the penalty for that. The wicket number 4, which is back into pavilion, and scoreboard remains on 45 on the board. 45 for the loss of 5 wicket. Harris, yes, so far he's bowled a magnificent over. 2 wickets in 2 deliveries. That means he's on hat-trick. Harris is on hat-trick, and the batter in front of him is Azim. Here is Harris bowling that hat-trick delivery right over the wicket. This is sensible batting, absolutely sensible batting there from Azim. Just picked up a single. He knows that is going to be last delivery. He need to get the timeout which is called by umpire Mohan Eddy, so that Torpedoes Khana have to bring one fielder inside the ring, and opportunity for Mansoor to get one big shot at least, to get the team into at least 50, because if they get the boundary, the 46 and 4 runs required for the victory. So last delivery, and Mansoor will going to take the strike. Right arm from the wicket, coming down the track, using his speed, driven that one down the deep long off. Bashit is at the log off, looking for the second. In comes the throw, but not good enough to stop the couple of runs. That's it. NM Cricketers Mangalore, they completed their 7 hours quota, and they managed to score 48 runs, and they set a target of 49 to win the match for Torpedoes Khana. This is going to be more interesting,
because maybe the Torpedoes Corner's captain is pleased with the performance of the bowler, because at one stage young team NM Cricketers Mangalore almost looking towards score around 55 to 60, but they managed to put some break on the run rate, especially the three bowlers did a great job in the later in the bowling department, that is Harris as well as the bowler, especially the Sinan is the man who played bowled magnificently. 2 overs, no maiden, and conceded 8 runs and picked up 2 valuable wickets. Little correction, picked up 1 valuable wicket. So absolutely good one. And altogether, it's going to be a very good match in front of huge spectators watching in this cricket event, and more than the huge spectators watching live here in this particular cricket ground, but more than I think the lot of viewers enjoying the game of cricket in the YouTube channel. Of course, team King Sports having absolutely good coverage of this cricket tournament, and wait to see how well team Torpedoes Khana will going to get this 49 runs. And highlight of the innings is the Mansoor scored 17 valuable runs. He's become unbeaten, and the 49 is going to be a target, just one shot of a 50, and we'll take a short break here, and after a short break my friend Mr. Gopi will going to take over the microphone in our national language. Looks like Gopi. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel. It's going to be a different trophy, and it's a huge and of course silver coated and beautiful attractive trophy, and certainly after seeing that trophy the level of competition definitely going to be high, because each and every team wanted to get this beautiful trophy along with that 1 lakh cash prize. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, पहली बार पैराडाइज मैदान के इतिहास में फर्स्ट एवर डे टूर्नामेंट 1 लाख का इस वक्त आयोजन किया है नजर स्पोर्ट्स क्लब 9th ब्लॉक ने। तो निस्संदेह बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, और 1,24,00,000 रुपए पहले धनराशि के रूप पर दी जाएगी। और जैसा कि ट्रॉफी के बारे में आपने फरमाया सतीश, निस्संदेह एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ट्रॉफी, वी आर वाचिंग हियर राइट फ्रॉम आवर कमेंटेटर बॉक्स। और इस ट्रॉफी जो कि इस बेहतरीन तरीके की ट्रॉफी को देखकर खिलाड़ियों में जोश और उत्साह और बढ़ चुका है, और निस्संदेह हर टीम के खिलाड़ी इस ट्रॉफी को हासिल करना इस वक्त मुनासिब समझेंगे। तो देखते हैं आखिरकार ये बेहतरीन और खूबसूरत जो ट्रॉफी है नजर चैंपियंस ट्रॉफी 2024 रनर्स और विनर्स किसके पक्ष में जाती है, और आज शाम को इसका जवाब मिलेगा। और देखते हैं तब तक क्रिकेट के मुकाबले में कौन जीतता है, कौन यहाँ पर हारता है। तो यहाँ पर द सिचुएशन स्टैंड्स सतीश, 49 द टारगेट इन 7 ओवर्स, एग्जैक्टली 7 रन्स पर ओवर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और जहां तक का सवाल है टीमों का, तो दोनों संतुलित टीम है। टॉर्पेडोज खाना हालांकि सशक्त गेंदबाजी के लाइनअप के साथ सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप भी उनके पास है। और तो जहां तक सवाल है इस वक्त, जहां तक एनएम मैंगलोर का सवाल है, तो एनएम के पास भी सशक्त बल्लेबाजी के साथ साथ सशक्त बलाढ्य गेंदबाजी का लाइनअप भी है। तो बैट वर्सेस बॉल, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि एक बेहतरीन संघर्ष हमें यहाँ पर इस हाई वोल्टेज मैच में देखने के लिए मिलेगा एनएम जप्पू और टॉर्पेडोज खाना के बीच। 49 द टारगेट, द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर, इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एंड 49 द टारगेट, दे हैव टू स्कोर for victory in the stipulated 7 overs. Out of their 42 stipulated deliveries with the help of 10 wickets, the present equation shows for them, and we are just waiting for the openers of Torpedoes Khana. I request the openers of Torpedoes Khana, please go for bat immediately, and let's see what will happen in the innings of Torpedoes Khana. One more high voltage match, the second session of this high voltage match is now going to start, and we are just taking a short break, and we'll be back right after short break with myself Gopi when the innings of Torpedoes Khana will going to begin. Thank you.
तो इस वक्त जहां तक सवाल है 49 रनों का लक्ष्य और द ओपनर्स आर नाउ कम्स आउट टू द मिडल, Aris and Ashraf. Meantime, the bowler is Riaz, and he'll be start the fresh proceedings. We are just waiting for the first ball of the innings of Torpedoes Ghana. It's going to be a very interesting match indeed. 49 they have to score in the stipulated 42 deliveries. और देखते हैं यहाँ पर टोरपेडोस गाना के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। 49 रनों का लक्ष्य निर्धारित 42 गेंदें यानी 7 ओवर में 10 विकेटों की मदद से इस वक्त टोरपेडोस गाना को बनाना है। रियाज इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए और केवल 2 मात्र फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। लॉन्ग ऑफ बिल्कुल सीधा, जबकि लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर रहा और अंपायर ने इशारा किया कि मैच की शुरुआत हो, पारी की शुरुआत हो। और यहाँ पर पहली गेंद लेकर रियाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए इस वक्त अशरफ माफ कीजिए, और अशरफ के लिए पहली गेंद लेकर इस वक्त रियाज तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा विकेट, दैट इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी। और गेंद निस्संदेह काफी तेज रफ्तार के साथ बल्लेबाज की ओर आई कि बल्लेबाज को स्ट्रोक्स खेलने का कोई अवसर यहाँ पर नहीं मिला और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। यहाँ पर कुछ हद तक अपने पैर में दर्द महसूस करते हुए रियाज एक गेंद फेंकने के बाद शायद हैमस्ट्रिंग इंजरी हो सकता है, मांसपेशियों की खिंचावट है जिसे कहते हैं, और कुछ हद तक बाधा वो महसूस करते हुए, लेकिन गेंदबाजी करने के लिए वो इस वक्त तैयार है। और शायद गेंद डिलीवर करते समय उनका जो बायां पैर है वो थोड़ा सा फिसल गया था, तो इस वजह से कुछ हद तक यहाँ पर मांसपेशियों में कुछ हद तक वो दर्द यहाँ पर महसूस करते हुए, खिंचावट महसूस करते हुए, लेकिन इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक उनके लिए। और अगली गेंद फेंकने के लिए गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंदबाजी कवर पर रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर टोरपेडोस गाना का 1 रन बिना किसी नुकसान के। निस्संदेह एक बेहतरीन शुरुआत की जरूरत है टोरपेडोस गाना को, अगर उन्हें एक 49 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो निर्धारित 7 ओवर में। जहां तक एनएम जप्पू का सवाल है तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत, और वो बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत देने की पूरी कोशिश इस वक्त करते हुए गेंदबाज आरंभिक गेंदबाज रियाज एनएम जप्पू के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर आने वाले गेंदों में क्या होता है। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, पहली बार आरिस इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। आरिस काफी खतरनाक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। अंडरआर्म क्रिकेट का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है, और इस बीच रियाज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद आरिस के लिए इस बार मोड़ा गेंद को, लेकिन ठीक तरह से नहीं है। गेंद पहुंची इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑन पर 1 रन बल्लेबाज को मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो रियाज एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए सामना करने के लिए तैयार। इस वक्त अशरफ, दर्शकों की तादाद काफी हद तक बढ़ चुकी है। सुबह जितने दर्शक दिखाई दे रहे थे उससे कई ज्यादा दर्शक इस वक्त मैदान के इर्द गिर्द नजर आते हुए और खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए, और मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। और रियाज फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद तो खेला स्कोर होता विकेट, गेंद पहुंची इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर की बाईं ओर से डीप बैक थर्ड मैन पर रहा है। और जब तक गेंद को पीछा करने के बाद, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे फील्डर गेंदबाज के विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, ही प्लेड दैट वन टू स्क्वायरली जस्ट वाइड ऑफ द कवर पॉइंट फील्डर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इज गॉट अ कपल रन फॉर दैट स्ट्रोक, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और रियाज अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अशरफ के लिए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। और ये गेंद रियाज की, ये गेंद इस बार उछाला, oh, that is a chance, that is an absolutely chance for the extra cover fielder। तो फील्डर जो खड़े हुए थे एक्स्ट्रा कवर पर, शायद उनके लिए मौका हो सकता था, लेकिन अंतिम क्षण में कुछ ज्यादा प्रयत्न उन्होंने नहीं किया, तो इस वजह से गेंद उनके आगे यहाँ पर टिप्पा खाते हुए, और बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल लेकर, तो 5 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज रियाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। और इस बीच अंपायर पुष्पराज जो कि कुछ कहते हुए इस वक्त जो डीप पर खड़े हुए खिलाड़ी उनसे, और एक बार फिर से खेल यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ। दोपहर का वक्त लगभग
काफी प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। दोपहर के 1:40 यहाँ पर बच चुके हैं और इस बढ़ती हुई वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती नजर आते हुए और इस बीच गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। रियाज गेंदबाजी करते हुए स्विंग किया लेकिन 2 स्क्वायर, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। अगर थोड़ा सा सीधे गेंद को लेफ्ट करते तो शायद छक्का उनके पक्ष में आ सकता था, लेकिन इस बार उन्होंने गेंद को खेला 2 स्क्वायर और सिर्फ एकमात्र रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर। 6 विदाउट लॉस, स्टेडी स्टार्ट फॉर टॉर्पेडोज खाना चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 49 in 7 overs. This is an absolutely steady start for them. 6 runs they managed to score after completion of first over. And let's straight away coming back to the equation. 49 minus 6, that means 43 more runs now they have to score for victory in remaining 6 overs, and the required run rate is now gone up to exactly 7.17 runs per over. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. जहां तक मैच के विजय का सवाल है, अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा मैच बराबरी पर रुक चुका है। तो एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर किया जा रहा है किंग स्पोर्ट्स द्वारा, और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस मेगा श्रृंखला का यूट्यूब पर मुआयना करते हुए, यूट्यूब पर देखते हुए, जो कि किंग स्पोर्ट्स इस वक्त एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर दे रहा है। और जहां तक सवाल है अगले ओवर का, तो गेंदबाज आतिफ नया ओवर प्रारंभ करते हुए, लंबे कद के खिलाड़ी, एक अंडरआर्म क्रिकेट के परिपूर्ण ऑलराउंडरों में से एक जाने जाते आतिफ इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए और इस वक्त उनका सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज आरिस। और दूसरा पावर प्ले ओवर, अशरफ माफ कीजिए, और दूसरा पावर प्ले ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ टॉर्पेडोज खाना की पारी में। और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए, सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ। निस्संदेह यहाँ पर इस भीषण गर्मी तले एक बेहतरीन हाई वोल्टेज मैच यहाँ पर एक शानदार प्रगति करता हुआ टॉर्पेडोज खाना और एनएम जप्पू के बीच में। और दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स काफी मात्रा में इस मैदान के चारों ओर मौजूद, अपनी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल यहाँ पर वो बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ। हेलो हेलो, तो यहाँ पहली गेंद, हेलो, तो इस वक्त गेंद को ढकेल दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। तो 2 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी है और 3 रन यहाँ पर बन चुके हैं। कुल मिलाकर स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 रन बन चुके पहले 2 गेंदों पर, यानी 8 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 8 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और आतिफ इस वक्त, मंसूर आतिफ की ओर आए, कुछ उन्होंने समझाया कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए और वो इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइकर के बल्लेबाज अशरफ के लिए, और अशरफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार आतिफ की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस वक्त गेंद को उछाला, इस वक्त जस्ट गेंद इस वक्त लंबा सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद फेंकी थी और इस धीमेपन को पहले ही पहचान लिया यहाँ पर बल्लेबाज अशरफ ने खूबसूरती के साथ गेंद को बल्ले के लाइन पर लाते हुए उछाल दिया मिड ऑन फील्डर के सिर के ऊपर से, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए। और जरूरतमंद चौका इस वक्त लग चुका है टॉर्पेडोज खाना की पारी में और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर निश्चित रूप से बराबर का टक्कर जो कि यहाँ पर जारी है। और आतिफ फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज आतिफ इस गेंदबाज इस वक्त आतिफ गेंदबाजी करते ड्राइव किया, विकेट सटते हुए और बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डिंग, हाफ स्टॉप। इस वक्त बैकअप होता हुआ के लिए बल्लेबाज पर थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने का।
बेहतर स्टॉप इस वक्त किया था पॉइंट के फील्डर अपनी अपनी बाई और डाइविंग लगाते हुए, लेकिन पूरी तरह गेंद को नहीं रोक पाए। हाफ स्टॉप उन्होंने किया, जब तक गेंद को बैकअप करके स्ट्राइक रन पर थ्रो करते। बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट के जरिए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन यहां पर पूर्ण कर लिया। एरिस और अशरफ ने स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 14 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। सो स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। और फिर से एक बार गेंदबाज आतिफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अशरफ के लिए, जो कि काफी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए, यह गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद। एक बार इस बार इस धीमेपन पर चकमा खा गए, धीमी गेंद को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 14 रन बिना किसी नुकसान के। और आतिफी एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद इस बार गेंद को उछाला मिड विकेट पर, फर्स्ट बॉल रन का खतरा इस वक्त स्ट्राइकर रेट पर, और इसी के साथ आसान सा रन आउट इस वक्त स्ट्राइकर रेट पर होता हुआ। अशरफ की पारी समाप्त। स्ट्रोक इस वक्त खेलने के बाद रन के लिए दौड़ पड़े थे, कोई रिस्पांस नहीं नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज द्वारा, और गेंद सीधे पहुंची मिड विकेट पर आफ्टर फर्स्ट बाउंस। और आखिरकार दोनों बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक रन पर एक छोर पर, और आखिरकार आसान सा रन आउट इस वक्त स्ट्राइक रन पर होता हुआ विकेट कीपर मंसूर द्वारा। तो पहला विकेट गिर चुका है और अशरफ की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है। 11 रन उन्होंने बनाए एक चौके की मदद से, और अपना विकेट गंवाने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए 14 रनों पर पहला विकेट यहां पर गिर चुका है Torpedoes Kana ka. It's 14 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress for Torpedoes Kana. Newman, one more good striker of the ball. Imtiaz is now coming out to the middle as a number 3 batsman. और वो इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए काफी जिम्मेदारियों के साथ। तो इस वक्त खिलाड़ी मुजफ्फर के इस वक्त पानी ग्रहण करते हुए खेल, जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। बहुत ही सुंदर सा विशाल सा यहाँ पर ये मैदान कृष्णापुर 7th ब्लॉक का पैराडाइज मैदान, जो कि काफी कई मशहूर श्रृंखलाओं के लिए गवाह है। और यहाँ पर एक और मशहूर और बेहतरीन श्रृंखला की शानदार प्रगति होती हुई नजर चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के नाम पर दे आर कंडक्टिंग दिस फैंटास्टिक टूर्नामेंट। नजर स्पोर्ट्स क्लब 9th ब्लॉक कंडक्टिंग दिस फैंटास्टिक टूर्नामेंट इन द सेलिब्रेशन ऑफ द 20th एनिवर्सरी इन द नेम ऑफ नजर चैंपियंस ट्रॉफी 2024। फर्स्ट टाइम एवर दे ऑर्गेनाइजिंग अ डे टूर्नामेंट कैश वर्थ 1 लाख, 1 लाख कैश का पहला दिन का टूर्नामेंट यहां पर आयोजन इस वक्त किया गया है नजर स्पोर्ट्स क्लब 9th ब्लॉक द्वारा। और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा ये डे टूर्नामेंट जो कि 1 लाख का है, पहली बार पैराडाइज मैदान के इतिहास में यहां पर आयोजन किया गया है। तो ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए, और इस बीच नए बल्लेबाज इम्तियाज सामना करने के लिए तैयार। 2 ओवर की समाप्ति, 14 रन बन चुके हैं। 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। फैजल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो द विकेट, गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ा, रन के लिए दौड़ पड़े, रस्ते की मामला हो सकता है। इस बार विकेट जरूर चटकाए गए, लेकिन अंतिम क्षण में मैं समझता हूं बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। तो काफी जोखिम भरा रन था इस वक्त, खतरा पैदा हो सकता था एरिस के लिए, लेकिन अंतिम क्षण में अपना विकेट बचाने में सफल और 1 रन के साथ इस बीच स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइक का, तो इम्तियाज के पास स्ट्राइक मौजूद, और फैजल इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए काफी दूर दूर तक पहला क्षेत्र अक्षर में यहाँ पर दिखाई देता हुआ। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर, और यहाँ पर लॉन्ग ऑफ बिल्कुल सीधा, जबकि एक्स्ट्रा कवर थोड़ा सा स्क्वायर, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, एक्स्ट्रा कवर और गली। तो अगली गेंद लेकर इस वक्त फैजल तैयार, नए बल्लेबाज इम्तियाज अंपायर से गार्ड लेने के बाद इस वक्त सामना करते हुए फैजल की गेंदों का दाहिना तो द विकेट। फैजल गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची, लेकिन इससे पहले की गेंद वहां पर फील्ड बल्लेबाज के पास समय ताकि 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल सके, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, फैजल गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, मंसूर के पहुंच से बाहर, और इस बीच 1 रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। वाइड का भी इशारा हो चुका है, अंपायर
पुष्पराज द्वारा, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। रन इस वक्त चाहिए बल्लेबाजों को टॉर्पेडोज खाना के, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए टॉर्पेडोज खाना के बल्लेबाज रन बनाने का हर तरीके का प्रयास, हर तरीके की कोशिश यहां पर करते हुए धीमी गेंद ड्राइव किया, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एट द लास्ट मोमेंट, ड्रिवन दैट वन, फंबल एंड दे कम बैक फॉर द सेकंड रन इजीली। अंतिम एक्शन में गेंद से अपनी नजरें हटा ली थी, शायद रियाज वहां पर फील्डर थे, और रियाज के हाथों से जैसे ही गेंद छिटकी, बल्लेबाज 2 रन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यशस्वीतम दूसरा रन यहां पर पूर्ण करते हुए। तो अब कुछ हद तक रन आसानी के साथ बनते हुए टॉर्पेडोज खाना के लिए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। फैसल एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इम्तियाज के लिए ये गेंद, इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। पहले फील्डर को पीछे खड़े हुए भाप लिया था, बल्ले और पैर को साथ लाते हुए गेंद को लक्ष्यात्मक तरीके से ढकेल दिया। इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा 1 रन पूर्ण कर चुके थे। 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और फिर से एक बार फैसल गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप किया, इस वक्त खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर रक्षणा मौजूद, प्रोटेक्शन नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ इस वक्त स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फैसल दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और एरिस इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, इम्तियाज सामना करते हुए रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी के साथ 1 रन प्राप्त कर चुके। 3 ओवर की मुकम्मल इन्हें समाप्ति हो चुकी है, 3 गॉन एंड आफ्टर 3 overs टॉर्पेडोज खाना लुकिंग इन अ pretty good situation in fact। 23 runs they managed to score for losing 1 wicket, and now just 26 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs, with a required run rate of exactly 6.5 runs per over, and at this situation the equation seems to be a much easier now for them। Still they got 9 wickets kept intact, 9 विकेट सुरक्षित, और देखते हैं इन बचे हुए 9 विकेटों की मदद से यहाँ पर टॉर्पेडोज खाना 26 रनों को जोड़ पाता है या नहीं। तो आतिफ गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और चौथा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ टॉर्पेडोज खाना की पारी में सामना इस वक्त करने के लिए तैयार इम्तियाज, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, और 4 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए आतिफ। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, डीप कवर पॉइंट इस वक्त तैनात, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार आतिफ गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार इम्तियाज के लिए, और विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप्स के अति निकट इस वक्त बैठे हुए मंसूर, और ओवर की पहली गेंद लेकर आतिफ इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार इम्तियाज के लिए ड्राइव किया मिड विकेट पर, नजदीकी मामला, ओवर थ्रो, और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर कोई बैकअप वहां पर नहीं था, और टीम के अन्य खिलाड़ी उनको कोसते हुए कि किस लिए उन्होंने थ्रो किया था इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर, लेकिन खतरा वहां पर मौका जरूर था। अगर निशाने स्टंप्स पर निशाना टकराता तो निश्चित रूप से यहाँ पर बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी। तो 1 रन यहाँ पर मिल चुका है, 24 रन बन चुके हैं, 24 द स्कोर नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। और कुल मिलाकर अब 23 गेंदें बाकी, और रन से चाहिए 25। 25 runs required in remaining 23 deliveries. The equal battle is now on. और आतिफ एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए हारिस, और 3 से 4 बार गेंद को जमीन पर टिप्पा खिलाने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर आतिफ तैयार। ये गेंद इस बार गेंद उछाला और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है, Aris का विकेट गिर चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा। Just wanted to play that one too early and the ball came quite lately, and because of that no contact between the bat and boys, got his stoppage, and finally shot extra cover fielder made no mistake. So a vital wicket lost and an important breakthrough for NM Majapu, and a vital wicket lost for Torpedoes Khana. Second wicket gone, and at this time Aris departs, and now it's 24 for 2.
So after the departure of Aris, the new man, one more good batsman for their side. Basit is now comes out to the middle. और इस वक्त बासित सामना करेंगे आतिफ की गेंदों का, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इस वक्त आतिफ अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज बासित सामना करते हुए इस वक्त ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया, रन के लिए दौड़ पड़े, शॉट में विकेट पर गेंद पहुंची, इम्तियाज काफी तेज और आखिरकार एक रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। जैसे ही बासित ने ऑन साइड पर गेंद को ढकेला, इम्तियाज ने नॉन स्ट्राइक रन से दौड़ना शुरू किया और यशस्वीतम यहां पर एक रन पूर्ण करते हुए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड 21 बॉल्स लेफ्ट एंड 24 रन रिक्वायर्ड फॉर टॉर्पेडोज खाना। और फिर से एक बार आतिफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इम्तियाज के लिए लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, वाइड का इशारा और वाइड के इस तोहफे के रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर दिशाहीन गेंद इस वक्त आतिफ ने फेंकी थी और आखिरकार वाइड के रूप में रन प्रदान करते हुए आतिफ एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज के लिए यह गेंद डेलिकेट, एब्सोल्युटली डेलिकेट रिवर्स शॉट इस वक्त खेला इम्तियाज ने और एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट यहां पर कर चुके हैं। एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 20 बॉल्स रिमाइनिंग, 22 रन रिक्वायर्ड। व्हाट अ मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और जहां तक स्ट्राइकर एंड का सवाल है तो बासित इस वक्त अपने जूते के फीते को इस वक्त बांधने के बाद एक बार फिर से अपने बल्लेबाजी के मार्ग पर तैयार और आतिफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार अपील जोरदार, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। शायद गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी और इस वजह से अंपायर ने इसे नकार दिया और सही तरीके से और इस बीच सही तरीके से और स्कोर इस वक्त रख चुका कुल मिलाकर 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 22 रिक्वायर्ड, 19 बॉल्स लेफ्ट। और निस्संदेह दबाव इस वक्त दोनों टीमों के खिलाड़ियों के ऊपर साफ बढ़ता हुआ नजर आता हुआ। विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है और आतिफ एक बार फिर से तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट बासित के लिए अगली गेंद, यह गेंद इस बार बासित ने गेंद को मोड़ा, मिड विकेट पर रन नहीं मिलेगा। आफ्टर फर्स्ट बॉल बेहतरीन गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति। So 4 overs completed and after completion of 4 overs, Torpedoes Ghana are now 27 for the loss of 2 wicket, 22 needed in remaining 3 overs. That means in 18 deliveries and the required run rate is exactly 7.33 runs per over. And as far as the victory of this match is concerned, still I must say the match is now still in balance. तो इस वक्त 5वां ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ और जहां तक सवाल है बचे हुए 3 ओवर का, तो देखते हैं 3 ओवर में टॉर्पेडोज घाना के बल्लेबाज लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं। 22 रिक्वायर्ड इन 3 ओवर्स और 3 ओवर के खेल में क्या क्या होता है ये अब आपको राज्य भाषा कन्नड़ में जानकारी देंगे मेरे अजीज दोस्त जनाब अब्दुल समद काटीपल्ला। आइए समद साहब, धन्यवाद, थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿ ಅವರೇ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯದತ್ತ ನಾವು ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ನೆನಪಿಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಓಟ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 17ರ ಮುಂದೆ 21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ಜೋಡಿ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಎನ್ಎಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಸಾಧನೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ರಿಯಾಜ್ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಇದು ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಕೈ ಚಳಕ ನೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ. ಆ ಜೀವವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವುದಾದರೂ ಅವರು ರೆಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದತ್ತ ಮನ್ಸೂರ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 28. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ರಿಯಾಜ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಬಾಸಿ ತಪಾಯ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನ ಆ ಗೆಲುವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಟಗಾರ ಈ ಒಂದು ಬಾಸಿತ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಇದು ವಾಮಂಜೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು, 3 ಶೆಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕಾರಣ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ರಿಯಾಜ್ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ರಿಯಾಜ್ ಸತತ 2 ಎಸೆತಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾದರೂ ಬಾಸಿತ್, ಇದು ಗರ್ಜಿಸುವ ಹುಲಿ ಬಾಸಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಯಾಜ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಇದು ಅಪಾಯ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು +1, ಇದು ಹೊರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಬಹುಮಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ, 30 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಪಂದ್ಯ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪಂದ್ಯ. ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಬಿಸಿಲನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸಿಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವ ನೋಟ ನಮಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ NM ಮಂಗಳೂರು ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಯಾಜ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕ, ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ವೀರ, ಬೆಂಗಾರೆ ಹುಲಿ, ಇದು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ರಿಯಾಜ್ ಪ್ರಥಮದ 3 ಎಸೆತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಟಗಾರನ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು ಅಂತ ಆ ರಭಸದ ಚೆಂಡು, ಬಿರುಸಿನ ಚೆಂಡು, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಚೆಂಡನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು ರಿಯಾಜ್. ಆದರೆ ತದನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ +1, 4 ಓಟಗಳು ಬಹುಮಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಾಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 32, 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 15 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 17 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಇದು ರಿಯಾಜ್, ಇದು 3 ಶೆಡ್ಡೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರಿಯಾಜ್. NM ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಆಸರೆಯಾದ ರಿಯಾಜ್, ಎತ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರಿಯಾಜ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಲೇ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೆರುಗನ್ನ ತೋರಿಸಿದ ಬಾಸಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ವೇದಿಕೆ ತುದಿಯಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಬಾಸಿತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೊಡೆತ, ಶಬ್ದಭರಿತ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೊಡೆತ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡೊಡನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಮುತ್ತೂರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡೊಡನೆ ದಂಡನ್ನ ಎತ್ತಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ಇದು ನಾಯಕ, ಇದು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ನಾಯಕ. ಆ ಆಟದ ಶೈಲಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟ, ಇದು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಆಟ, ಇದು ಇಮ್ತಿಯಾಜನ ಆಟ, ಇದು ನಾಯಕನ ಆಟ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 34 ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 34 ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಬಾಸಿತ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು 5ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ, ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ರಿಯಾಜ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಬಾಸಿತ್ ರವರಿಂದ. 1 ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರಿಂದ. ಅದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಓವರಿನ ಸಮಾಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 35. ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿಕೆಟ್ಗಳು 2. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ಬಾಸಿತ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 12ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 14 ಓಟ. ಒಂದು ಮೈನ ವಿರೋಧಿಸುವ ಆಟ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ನೆನಪು ಖಂಡಿತ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ NM, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪೆಡೋ. ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಅಂಡರಾಮ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಕಾಳಗ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಹನ್ನೆರಡರ ಮುಂದೆ 24. 12ರ ಮುಂದೆ 24. 12ರ ಮುಂದೆ 14. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮೈದಾನ.
ನೋಡುಗರನ್ನ ರಂಗೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಗೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೈದಾನ. 12ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 14 ಓಟ. ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ, ಸುಹೈಲ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡುಗರನ್ನ ಕಂಗೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮೆಗೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ಎತ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಫೈಸಲ್. ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟತನದ ಉತ್ತರ ನಾಯಕನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸಮಯೋಲೋಚನೆಯಾಟ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ರವರ ಆಗಮನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೇಳಿಸ್ತಂದ್ರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದಾಂಡಿಗರಿದ್ದರೂ ದಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾಯಕನ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ನಾಯಕ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊರತ ಬಾಸಿತ್ ಜಾಗವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ 2 ಓಟವನ್ನ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯ ರೋಮಾಂಚನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಯೋಜನೆ. ಇದು ನಜರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ 38. ಎತ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಸಲ್, ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಫೈಸಲ್ ದಂಡನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಬಾಸಿತ್. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬಾಸಿತ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಜೀವ ಇದೆ. ಎನ್ಎಂ ತಂಡ ಬೆವರನ್ನ ಇಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಮುರಿಯುವ ತನಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ಎಂ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫೈಸಲ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ದಾಟಿ ಫೈಸಲ್. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ. ಇದು ಹುಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಓಟ. ಇದು ಅಂಡರಾಮಿನ ರಂಗೇರಿಸುವ ಆಟ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಣ. ಆ ಜಾಣತನದ ಆಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 6ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಸಿ ದಿಟ್ಟತನದ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆಯನ್ನ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಫೈಸಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಬಾಸೇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಗೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದನ್ನ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ 4-4. 44 ಉಲ್ಲಾಲ 41 ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 41 ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ 6ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಫೈಸಲ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈಸಲ್. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 42 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 6 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 7 ಓಟಗಳು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನ್ಎಂ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪೆಡೋ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 6ಕ್ಕೆ 7 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶ್ಫಕ್ ಎನ್ಎಂ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಎನ್ಎಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಜರ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ನಾಣ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಾಗಿ 2 ತಂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ 3500 ಮಂದಿ ಈ 2 ಗಂಟೆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರಂಗೇರುವುದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. 6ರ ಮುಂದೆ 7, 6ರ ಮುಂದೆ 7. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ತೌಫೀಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಜೀಬನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಈ ಎನ್ಎಂ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಾಟ. ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಓಟ. ರಿಯಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. 5ರ ಮುಂದೆ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಎಸೆತ 6 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಿದೆ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಸರ್ಕಲಿನ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಆ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೆನಪು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಅಜಯ್ ಕೈಕಂಬ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಅಬ್ಬು, ಎನ್ಎಂ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಅಬ್ಬು, ಆ ನಗುಮುಖದ ವೀರ ಅಬ್ಬು ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಎನ್ಎಂ ಇಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಹಸಿದ ಎರಡು ಚಿರತೆಗಳಿದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಸಿತ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಣಿಯದ ನಾಯಕ ಅದು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬೆಂಗರೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಮುಂದೆ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ, 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ, ನೋಡುಗರನ್ನ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಯಾರಿಗೆ? ನಗರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹವಾಗುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಲಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಾಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ 4 ಮುಂದೆ 5. ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಜಯಿ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. 5 ಎಸೆತ 6 ಓಟ, 5 ಮುಂದೆ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ, 5 ಮುಂದೆ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೌಫೀಕನ ಆ ಕೈ ಚಳಕ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನೋಡುಗರನ್ನ ಕಂಗೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯ. ಎನ್ಎಂ ಈ ಬಾರಿ ತೌಫೀಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಇದು. ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತೌಫೀಕ್, ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತೌಫೀಕ್. ಬೇಕಾಗಿದೆ 4 ಮುಂದೆ 5, 4 ಮುಂದೆ 4 ಮುಂದೆ 5 ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ತೌಫೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೌಫೀಕ್ 4 ಮುಂದೆ 5 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಮುಂದೆ 5. ತೌಫೀಕ್ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಸಿತ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ. ಎತ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೌಫೀಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡಿದ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರ್ಷಾದ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಈಗ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಇರ್ಷಾದ್. 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ 5 ಓಟಗಳು, 3 ಮುಂದೆ 5. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯ, ನೋಡುಗರನ್ನ ತುದಿಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ನಗರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೈದಾನದ ಹೀರೋ. ಇದು ಟಾರ್ಪಡೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇದು ಸಿನಾನ್ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮುಂದೆ 5 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪಡೋ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶಮೀಮ್ ರವರಂತೂ ಸಿನಾನ್ ರವರ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟವರು. ಆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಡೇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದ ಎನ್ಎಂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಂಗೇರುತ್ತೋ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಬಾಸಿತ್ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವನಾದ ಅದೇ ಆಟಗಾರ ಬಾಸಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲಿಕೇಟ್ ಹಲವಾವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಕ್ಯಾಲಿಕೇಟ್ ಹಲವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ 2 ಓಟ ಬಾಸಿತ್ರವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಇಮ್ರಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ರಂಗೇರುವ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿದಿತ್ತು ಎನ್ಎಂ. ಆದರೆ ಬಾಸಿತ್ನಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಮ್ರಾನ್. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 2 ಎಸೆತ 3 ಓಟ. And press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon
for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ರೋಫಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸವ್ಯಸಾಚಿಗೆ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ, ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ. ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲಿ ರಂಗೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. 2ರ ಮುಂದೆ 3, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್, ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ತೌಫೀಕ್, ದಂಡಿನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಸಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಬಾಸಿತ್ರವರ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್, ಒಂದು ಹಿಡಿದ ಕ್ಯಾಚ್, ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ರುಚಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಾಸಿತ್ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ, ನಾವು ಊಹಿಸಿದಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ NM ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಸೋತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಟದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿದಾಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅಪಾರ ಆಟಗಾರರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬೆಂಗಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲು ಈ ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಉದ್ಯಮಿ BMR ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಳಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಸೌಹಾರ್ದದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಬೆಳಗಿದ ದಾವೂದ್ BMR ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ದಾವೂದ್ BMR ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲಭರಿತ ಪಂದ್ಯ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. So thank you very much, Abdul Samad Katipala. What a fantastic match which is comes to an end, and a little bit disappointment finish for NM Cricketers Mangalore. What could be they came to very near to the victory, but the catch has been the matches, which is a greatest slogan of cricket once again, which is justified in this particular match after the which is a catch drop of Bashit Ali is definitely going to be a huge drawback in this particular match, and NM Cricketers Mangalore lost the match, and congratulations for Torpedoes Khana by winning that nail batting finish on this particular match. Meanwhile, I request man of the match award winner, captain of Torpedoes Khana Imtiaz, please be reported here immediately
to collect your man of the match award from Dawood, of the proprietor of BMR Gold and Gold Diamonds, one who conducted the very successful cricket tournament, the BMR Trophy 2024 in this particular cricket ground. And Imtiaz will going to collect that very beautiful memento, the best batsman award from Dawood, proprietor of BMR Gold. Congratulations, Imtiaz, for your responsible innings. There is a huge competition for the man of the match because three of them is contributed. One is Ashraf is contributed with 11 runs and Bashit is contributed with 13 runs. To Imtiaz, being the captain of the side, he played a responsible innings of 12 runs and is judged as a man of the match in this very good match. Now it's going to be a yes in the local pool. We need to get one team to get into the finals. This is the quarter final of in the local pool, and Nazar 9th block takes on the challenge of Friends Bala, and one more good match in front of very good spectators, because locals in the sense the host team 9th block will going to test their luck in this quarter final against the very good formidable Friends Bala, and it's going to be one more very good match. So captain of Nazar 9th block and won the toss, and they elected to bat first. Quite interestingly, not that much of interesting because the most of the team, especially coming to this particular stadium, and sometime the toss winning captain loves to bat first because chasing always going to be a big ask, and we can see in this particular cricket tournament and in the particular cricket stadium. It's a hot sunny afternoon, time exactly 2 past 15 in the afternoon, 2 past 20 in fact, and absolutely the temperatures which are recorded in more than 32 degrees Celsius, but a strong breeze which is passing in the middle of the ground, making this hot condition slight a bit of manageable condition for the players as well as for the umpires. And 2:22 is exactly the time here, and sunny afternoon, and probably after that the winter season will going to finish, and especially in the month of February till the end it's a little bit cool, but afterwards the March April is definitely going to be one of the difficult condition in Mangalore, and they need to deal with the hot temperatures. Little bit umpire have to wait a little bit 5 minutes because the technicians a little bit having a lunch break. Just 2 minutes. I request the teams please wait for 2 to 3 minutes. So opening batters came into middle, Azim and Nagraj, the opening batters. The umpire, please wait. The cameraman having a lunch already. He already got finished, just 1 or 2 minutes which is required. And because not only we are very interested, but those who are watching live telecast of this cricket tournament, maybe they are having some good time. But good time here for international cricket, because in under 19 India takes on Australia in the World Cup under 19, and already there is a match which is going to started, and Australia they're batting first against India, and the last report came maybe it's a 43 for the loss of 1 wicket, right Gopi, because he was watching here live telecast, is very much interested. Gopi, what is the present scenario, can I know? Yes, that is a World Cup under 19 is going on at South Africa, Benoni, the place where is playing at the big mega final. And the report last game, and team Australia, the batting first 56 for 1 in 13 overs. The pressure is coming from our latest technology, the Gopi in the behind commentary box. Again, the first ball, it's going to be a bye. The first one comes up here in this quarter final in the local poll. It's a 1 without loss of any wicket, and wait to see. Well, India will going to take the revenge of the World Cup. Australia defeated India after India unbeaten in the senior category, and now it's going to be the same team in the under 19 in the final, and wait to see how under 19 young boys will going to take the revenge against Australia. But here is a very good match, is progressing, and good comeback here by Gitesh, one of the fantastic all-rounder, is in action. At second ball, it's a dotted delivery.
Nagaraj is on strike. Gitesh away from us. Right arm over the wicket. Pass on by Mohan Ayadi. Lovely delivery in the headed batsman going for the cross-batted shot. Chance of run out there. Oh my goodness. Ball hitting the batter there, and they're going for the extra run. By call by umpire, and sometimes it's happening here. Gitesh might be a little bit unhappy with that ball hitting the batter, but it's not a mistake of the batter. It's not a deliberate what we call a distraction. It's not a deliberate distraction. Batsman wanted to get the second run, and Gitesh trying for the run out. That time batsman coming across, and that was accidental. It's not deliberate. And that's why umpire conceded runs 3 on the board without loss of any wicket. This time again, place it down to Scarlet, opportunity created for the run out. This time definitely going to the batsman, finding short of his crease. Nagaraj, I think so, batter need to go to the pavilion as they wanted to get the quick single in the occasion. Good piece of fielding there by that short mid wicket, quickly releasing the ball to the hands of Gitesh, and Gitesh this time not missing the opportunity to dismiss the wicket of Nagaraj's run out. And the wicket number first is back into pavilion. It's a 3 on the board for the loss of 1 wicket. Gitesh to continue for the new batter. Nihal came into middle. Right arm over the wicket. Nihal this time nicely driven. Beautiful looking stroke there from Azim direction. Nihal is a non-striker's end because run out taken place in a non-striker's end, and Azim will go into strike now. Nihal strikes takes the strikes now because Azim picked up a single down to deep long on, and scoreboard numbers on to 4 on the board. Nihal is on strike. Gitesh bowling with a short run up. The power play is on. Slight bit of change in field now. No, not change in the field, but the fielder a little bit changing their position. And Rajesh coming towards extra cover region, and right arm over the wicket bounce. Wicket keeper fails to collect the ball, and chance of run out was created. And Ashit every time when the bowler supposed to defeat the bat of the batsman, the wicket keeper fails to collect the ball. Frustration for the bowler. Gitesh is not happy with the Ashit behind the stump because each and every run going to be very crucial. The first over completed. It's 5 for the loss of 1 wicket. Nazar 9th block. The Aus team are in the quarter final facing Friends Bala. It's 5 for the loss of 1 wicket. The one team which is got a place in the semi-final, Azad Khatipalla, and the winner of this match will go into face against Azad Khatipalla in the semi-final. And this is the quarter-final, and a very good match between these two teams, Friends Bala versus Nazar 9th block. Two very good teams in this local area. And here is the bowler will going to continue. Here is Shrikant lip correction. Right arm over the wicket. Delivers. Swept that one down to square leg. They're going for the quick single. Slight a bit of fumble from the fielder, so batter will go in to complete that quick single, risk single. But risk is a part of the game, so that both the batters complete that single. With the single, score numbers on to 6 on the board for the loss of 1 wicket. Wicket of Nagaraj is back into pavilion. He's out for duck and run out after facing 3 deliveries. And Shrikant will go into ball the next delivery. The over number second and last over of the power play is in progress. Right arm over the wicket bounce. This time I wanted to make a little bit room to play the shot, but bowler did a great job just following the batter, and Nizam wanted to get that one down to extra cover region because he knows that there is no fielder in the extra cover, there is no fielder in the offside region in the deep. The two protection which is given in the onside region, the deep mid wicket and the deep long on, so that a little bit encouragement field. Azim's just a little bit excited seeing the field that they can get the boundary if he hit the ball into the over the top of the infield. That's why he wanted to get that one into the extra cover, but misses that one completely. This time across the line, swings that one, ball is in there, and fielder going back and completes the catch. Shaman the fielder
just going back one of the safest pair of hands. Just kept the eye on the ball till the last moment. Once it looks like a little bit confusion whether it is going to be a mid-wicket fielder's catch or the fielder, the long-on fielder will going to come there. But at last it's the fielder will going to complete that catch. Shravan in the relegation, and wicket number 2 of ninth block is back into pavilion. Azim this time wanted to get that one into mid-wicket region, but couldn't manage to get that the timing behind the stroke, and he just pays the penalty for that. And the ninth block searching for the right track, a little bit struggling in the middle against a very tidy bowling performance. Shrikant got the wicket. The new batter coming to the middle is Yashir. With a lot of responsibility, ninth block required some partnership badly. And now extra cover is going back. Now the captain again bringing that fielder into the 20-yard circle. Driven, beautiful looking stroke, but straight to the hands of deep mid wicket, and the throw which is coming from the deep from the mid wicket. Ashid he's got a promotion from wicket keeper to deep mid wicket. After that he's missed the ball behind the stump in the first over, and Aman, the wicket keeper, now is doing some extra duty. This time a well snapped ball is in there. Ashit just given up, and after one bounce he collected an ample time for the batter. Complete second. Oh my goodness, Aman is a very athletic, and way that is charging to that throw coming from the Ashit well in front of the stumps, and just wanted to get the big stumps, but he just misses the stumps. Both the batters complete that couple of runs. With that couple of runs, Kobada moves on to 9 on the board for the loss of 2 wicket. We can see that all kind of battle here for the place in the semi-final. That these two teams definitely they put their 100% in this game. They wanted to win the semi-final. Alright, I'm over the wicket delivers. Again swept that one very nicely into the fine, very fine indeed. Before the fielder from the square leg to run across to his right to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. Ninth blocks little bit they got runs in this over after completion of over number 2. And searching for the right track after winning toss selected to bat first. Another ninth block, a 10 on the board for the loss of 2 wicket. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. Nazar Sports Club 9th block proudly presenting this Nazar Champions Trophy 2024 as their and the occasion of their completing their 20th anniversary, and they're celebrating quite in a unique style, and just like we are mentioning about in the first time in the history of Krishnapura, the under daylight they are organizing cricket tournament, and most probably the huge cash prize rupees of 1 lakh for the winners, and 50,000 for the runner off, and more attractive prizes just like we mentioned about earlier, that gold coin for the winner of the man of the series. And this is going to be one of the attractive part of this cricket tournament. Man of the match, best batsman, best bowler, and many individual prizes. Thanks to the donors who are provided this man of the match, best batter, best bowler Mansoor Casey, and man of the series, the gold coin which is donated by Rizwan BK, and the trophy is a very attractive trophy you can see in our commentary box of champions and runner of trophy, which is donated by Firoz Al-Zubail. Thank you very much all the donors for your contribution for the success of this cricket tournament, and Mansoor Casey who has donated man of the match, best batsman, and best bowler. Again first ball what the batters completed their single. That the new bowler is introduced, leg spinner Prashad, the experienced campaigner for the side of Friends Bala is in action. He did a very good tournament in this particular Nazar Champions Trophy in last Sunday. Because of some very good bowling performance, they managed to win 2 matches, and we will see how well Prasad will going to continue his form in this very crucial quarter-final match against Nazar 9th block. And scoreboard is 11 on the board. Prasad, right now over the wicket, balls, tossed up delivery. Oh my goodness, ball is looks like it's ball in the air for a while. Wicket keeper wanted to get that one, but couldn't manage to get that one. And maybe the Aman is asking Prasad to not to give any flight in the delivery, but Prasad is the kind of bowler is definitely will going to be a very clever bowler. You know exactly what kind of delivery is required. This time it's going to be opportunity created for the catch for the fielder, a deep long one, long off in fact, and one more wicket is back into pavilion. Really the batters of 9th block is really throwing the wickets. Nothing a stroke, isn't it? Never looks like he is completely controlled that cricketing stroke. The line is outside the line of off stamp. He just going for the stroke, went to the onside region,
And certainly you need to pay the penalty for that. And ball went high up in the air. And a long off fielder absolutely got a very good running catch in the deep. It's 11 on the board for the loss of 3 wicket. Nazar ninth block are looking in a deep trouble. Yes, Friends Ball has got some fantastic fielding department, and one fielding which is went very viral. The fielding of Rajesh in the last Sunday not only saved that boundary, but one catch which is absolute one of the catch of the tournament. The way that is caught that one in the mid wicket region, almost looks like boy is catching the ball, which is ball is going away from the boundary line, and at last moment he managed to keep his body balance. He's been outstanding. Because it looks like once he will going to lose the balance, he can out of the boundary line. But they managed to keep his body balance in the last moment. This is the beauty of some good fielders. And the catches win the matches. But was what we're talking about. The perfect example in the previous match. Nannam cricketers Mangalore lost the match because of one drop catch. Here is again. Right arm over the wicket. Just some loose delivery. And batsman will go and hammer that one into what a huge one. This is a biggie. Just I wanted to take the word from Gopi, because he is always enjoying that huge sixes as a biggie. But sometimes, yes, we need to get that word if the batsman hitting the six with a huge margin. Absolutely a magnificent struck, isn't it? But Prasad is not really bowled very well. That's why Aman is asking in the previous delivery, fan told that he's giving some flight in the delivery, means asking for trouble. And batsman Munna is welcome by the six for the bowler. This is again driven that one rocketing towards the fence. Ball went like a tracer bullet. Munna now getting into the act for the acceleration. This time nothing wrong with the line of the delivery, I mind you. This one is absolutely perfect delivery. The leg spinner bowling outside the line of off stump along the carpet, but the way that batsman is taking that position, absolutely exquisite. Munna just moving towards the off stump, hitting the ball down to deep square leg boundary for 4 runs. With that boundary score, jumps into 21 on the board. Very important runs coming in this over. 6 and a boundary, changing the almost completion of this game. Munna is on fire. 10 runs in 2 balls with a strike rate of 500. Prasad will going to continue. Again he wanted to go for the big shot. Again he got a very good position this time. Again he wanted to play that one across the line of the Prasad. This time managed to ball that one almost around the outside the line of off stump. One more over completed. After completion of over number 3, team Nazar ninth block are looking good in this particular over. They got a 22 now after 3 overs, and that means they're going exactly 7.33 runs per over. Prasad first time in this particular tournament are looking expensive. It's not so easy in the afternoon for the leg spin bowlers, because the direction of the wind is blowing towards the onside region, and if you bowl one short pitch delivery, it is little margin for error. The batter will go to grab the opportunity to dispatch that one into the fence. Yes, coming back to that biggie, that's a word which is coming from the very legendary commentator international level, Tony Greig, when Sachin Tendulkar in Sharjah, when he played that magnificent innings against Australia, when Sachin Tendulkar dispatching the big strokes into the fence. That time Tony Greig in the commentary box is always loves Sachin Tendulkar. He's a big fan of Sachin Tendulkar, and he's enjoying the commentary when his batsman hitting the huge six. Sachin Tendulkar is always shouting with the "It's a biggie, absolutely a biggie." And now my friend Gopi is taking that word and entertaining the crowd here. Sometime my job is also take that word that biggie absolutely become very popular, more than absolutely Gopi and Bilkul Satish. Again, lovely delivery indeed, and one more delivery which is almost looks like is missing the hands of the wicketkeeper behind the stump, and one more single added to total. With that single scope and moves on to 23 on the board. 23 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Gitesh is on attack. Right arm over the wicket, single-handed reverse. Oh my goodness, absolutely disaster. The man in terrific touch, Munna, going back to pavilion. This is absolutely huge fish in the net for team Friends Bala, losing Munna in this condition, and Nazar ninth block absolutely losing a huge wicket. Man in a very good touch.
hitting boundary and sixes, is back into pavilion. It's not a good thinking from the batter's point of view, but sometimes just thinking about Nihal, probably the man is in the Tigers end. Everyone thought that it can sacrifice this wicket for Munna because he's looking so good. But you cannot underestimate any batter because Nihal can be the very effective batsman. He's coming as a number 3 batsman. He can play some good innings for his team. The new batter coming to the middle is jersey number 08, Ashwath. Gitesh being the one of the top all-rounder for the side. One who will represent for the Sneha Maremar, the top teams in South Canara district. Bowling away from us, right arm over the wicket balls. Again, this time Nihal nicely behind the line of the ball. Just allow the ball to coming to his bat and just placing that one down to short cow point region for a easy single. With that single score numbers on to 24 on the board for the loss of 24 for the loss of 3 wickets. And 4 wickets in fact, but very interesting to see that batsman yes, something he's he's just got something in his pocket. He wanted to return that one into their partner. Gitesh again back to his bowling mark. Ashwath is on strike. Oh, what a delivery! You can't do that. You can't do that against Gitesh. You are playing your first delivery, mind you, Mr. Ashwath. You are playing your first delivery, and playing that kind of orthodox cricketing stroke is not a good sign. And officially, you need to see that which bowler you are going to face. And this is absolutely nowhere in near to that line of the ball, the bat, and misses it completely. And Gitesh strikes with a one more fantastic delivery, and one more big wicket is back into pavilion. The 5th wicket is back into pavilion of Nazar 9th block. It's a 24 for the loss of 5 wicket. So coming to that under 19 big final is going on. Australia, last report came, it's a 74 for the loss of 1 wicket after 18 overs. Looks like it's a good going for Australia under 19, and they have to need to break the partnership because the partnership is going very well between 2 batsmen, UHL Began and Harry Dyson. The 2 batters are in the middle for Australia, and that under 19 final. Right now over the wicket, again lovely delivery. Gitesh, time opportunity is created for the run out, and looks like umpire will go into refer for the 3rd umpire for the decision. Well, what really going here for the 9th block? Absolutely, they're throwing the wicket. I'm not saying that the opposition team are picking up the wickets, but I think 9th block, they're throwing the wickets absolutely unnecessary. Especially in this particular over, Gitesh managed to tight the things here after that expensive over the previous over ball by Prasad, which is 11 runs came from that over. 12 runs came from that over of Prasad, but Gitesh so far is looking so good. Just a single run and responsible for the 2 wickets, so 3 wickets so far in this over. One is run out, one is bowled out. Now it's going to be one more opportunity is created for the run out. Whether the batsman is safe or not, but as the body language of the wicket keeper looks like is very confident that he got a wicket here. But we need to see the confident level of the 3rd umpire. After getting a different angle from technicians of King Sports, will going to provide to get the best result of this run out. Everyone's eye on to this right of our commentary box, where it is 3rd umpire will go into observe in the monitors to see that the batsman will going to be out or not. Yes, for the latecomers watching this prestigious cricket tournament in the name of Nazar Champions Trophy 2024, which is proudly organized by Nazar Sports Club 9th block in this prestigious cricket stadium, that is Paradise Ground, and known to be a Paradise Ground. It is a school ground of 7th block in Krishnapura, and responsible. It is definitely that's witnessing so many prestigious cricket tournament, and it's got a long history, this Paradise Cricket Ground, and till my young age, when I was representing for Hanuman cricketers, it's more than 35 years back.
Still, I got memories of playing in this particular cricket ground. That time, the teams like huge teams like here in Krishnapura, the Paradise Krishnapura, Torpedoes Khana, just like we are just Abdul Samad Katipala mentioning about the team Torpedoes Khana has got a history of more than 30 to 35 years. But still, I remember we played against those teams. The Paradise is one more team, has got some very good players in the side. Lot of sweet memories in this particular cricket ground. Not out from the third umpire, the decision which is coming from the third umpire. The batsman looks like he's safe, but we can see that little bit. Just I want to observe the face of wicketkeeper. Aman is a little bit surprised that after that decision which came from the third umpire is not out. He looks like he's very confident, but yes, batsman is safe here. And Gitesh will going to continue. So far it's a very tidy over, and just like what I mentioned about he's a match turner, he's a game changer of at any situation, from the ball and from the bat. Nicely played. This is the kind of technique you need to implement when you're playing that reverse sweep. It's a perfect technique, isn't it? Getting into the line of the ball, changing your position quickly, and getting the over which is completed. 4 overs completed. After completion of over number 4, the team Nazar ninth block after 4 overs there, 25. That means they're going almost just over 6 runs per over. 3 overs remaining, and wait and see how well the team Nazar ninth block. Little bit correction, 6 overs match. So Gopi, can you wait for another 2 overs, because I will going to finish this innings, because we thought it was a 7 overs match, so that I thought we will going to share 4 into 3, 4 plus 3, but now it's already 4 is completed. If I hand over the microphone to you, you will going to finish too early. 2 overs for Gopi. So yes, the 5th over will go into start here from the commentary box, and Shrikant will go into ball that deliver right over the wicket, beautifully driven just over the infield. The fielder going back, running back in fact, and ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. With that couple of runs, Kobar moves on to 27 on the board. This is a very important time for Nazar ninth block, that they need to convert each and every deliveries into the scoring one, so that they can put some very good score in front of formidable fence bowler Shrikant. Right arm over the wicket, drives that and beautiful looking stroke down to cow point region, but protection is given in the deep in the cow point region, so that batter have to settle for the single. Sahil is looking very well, and is striking the ball very well. You know exactly they're dealing with the slog overs, and not to lose any deliveries here onwards. Need to convert each and every one, every delivery into the scoring one. If it is a single, if it is a 2, everything is very well valuable in this slog overs. Lovely shot, driven that one side to the hands of one of the safest pair of the hands in the deep square leg. What you just mentioned earlier, the name which is called as Rajesh, is absolutely is not just a kind of a fielder, but I want to say him as he's a bird. He is a bird having some 2 wings, where it can move anywhere. And what a great piece of fielding there by Rajesh. The moment that ball is left the bat of the batter, ball went like a tracer bullet. And more than the speed of that ball which came into him, they have a look at the speed of the fielder. Rajesh is charging from the deep of square leg region. Absolutely one of the best fielder I've ever witnessed in this present cricket, and especially when coming to that division of mid wicket and deep square leg. Absolutely one of the very quick mover of the ball. Excellent cricketing, excellent catch which comes in and is taken a stunner, and one more wicket is back into pavilion. Right arm over the wicket balls. Oh, lovely delivery, wicket keeper. Aman missed it completely. It's not a good time for the wicket keeper after Ashit missed 1 or 2 deliveries behind the stump, so that Aman asked to keep the wickets. But again, it's not so easy for the wicket keeper. That's the common miss 6, and Skobar moves on to 29 on the board. The over number 5 is in progress. Shrikant again, right arm over the wicket, and it's going to be a punishable from the umpire. It's a bonus run here for Nazar ninth block. 1 plus 1, 2 to the total. Runs are coming. 31 on the board. Nazar ninth block has got some very good bowling department. I just watched the 2 matches in the last Sunday. The bowlers of Nazar ninth block absolutely they bowled very well in the 2 matches, so that it's going to be not a good sign here for Friends Bala conceding runs, because they need to fight hard for each and every runs when they're going to chase.
Again the bowler continues. Srikanth, right arm over the wicket balls. Lovely delivery, equally well played there by the batter. Plays it down to deep long on region. Wahab is the batter, came into middle. Is a very mighty personality from Wahab. Maybe is a perfect batsman to handle that slog overs because of that muscles what he has got to get some big shots. The wait and see. Scoreboard now moves on to 32 on the board. Right arm over the wicket balls. This time square of the wicket, he plays it down to short cover point region, and before the fielder from the backward point region to run across his right to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. Good going here for Nazar ninth block, particularly in this over, and scoreboard now moves on to 33 on the board. 33 over number 5, which is comes to an end. The last over remaining. 33 on the board in the 5 overs. It is going to be a very good score, just going over the 6 runs per over. And now wait and see how Nazar 9th block will going to get some runs in this last over. The batter out there in the middle, Sahil as well as Wahab. Wahab is in non-striker end, Sahil is in a striker's end. The discussion is going on. Very hot sunny afternoon, so that will slide a bit of water break here required for the fielding team, and the extra player bringing the water to the fielder. But I'm not really worried about what about the umpires. Umpires there was just looking towards no one bringing water for us. Definitely they will go in, the volunteers will going to bring the water for umpires after this over, because break will going to take in this after this over, so that umpire will going to get some drinks break. It is a very hot, it's not so easy for umpires also. Right arm over the wicket. Oh, that's going to be a big wide. Absolutely is a big wide. Wide plus 1, 2 more to the total. And with that couple of runs scored, but moves on to 35 on the board. 35, the timed out. Umpire saying that the fielding team exceeds time limits too early. And because just a first delivery which is bowled, and they couldn't manage to maintain that time which is given for the fielding team, so they need to bring one fielder inside the ring. So that will go into benefits the batter, and whenever you are asking one fielder to bring inside the ring, that means only 4 fielders are now outside the circle to save the boundaries. Opportunities created for the batter to get some the gap driven. The square of the wicket down to deep cover point region, but we cannot run second because I already mentioned they got a fantastic fielding unit. And going for the second means asking for trouble. Just a single. With that single, score moves on to 36 on the board for the loss of 5 wickets. 6 wickets in fact, and again across the line wanted to sink that one, missed it completely, and Aman a little bit searching for the ball, but he managed to gather the ball in the second attempt, and no damage done. Shravan bowling away from us. Right arm over the wicket ball. Oh, lovely delivery. Wicket keeper this time. Aman again missed that ball in the first attempt, but in the second attempt quite easily completes the formalities of stump out, and Sahil departs. 2 very good deliveries bowled there by the bowler Shravan. This is not a good thinking from the batter's point of view, because you are dealing with the last over. At least you manage to get a single in each and every delivery. It will take 6 runs. And 6 runs definitely going to be a good run in this condition, because if we add another 6 runs to that one, it's going to be a 42. There's a 36 on the board. 3 balls remaining. Wicket 7. Jersey number 1 is coming to the middle to take a strike in the striker's end. Munna, the new batter in. 3 balls remaining in the innings of another 9th block. Well, wait and see how well the batter will going to take these 3 balls. Right arm over the wicket, across the line, swings that one, going for the run, chance of run. This time, this is going to be very interesting, whether the run out which has taken place in the striker's end. First umpire will going to look for the run out in the striker's end. If it is a not out, then definitely the non-striker's end, there will be run out. But yes, but the question raising here is, which batsman going to be out? Wahab or Munna? An umpire referred for the third umpire to see that.
Umpire, I have to see that one out which is taken place, whether it is in the striker's end first or it is a non-striker's end. What a fantastic cricket tournament is in progress. Absolutely one of the discipline of cricket tournament, I want to say. And the organizer did a great job. It's not so easy. If you see that only 2 days of cricket tournament is organized, but more than 2 months of efforts is required for organizing such a wonderful cricket tournament. So striker and batsman is back to pavilion 09. Wahab. Zero 09 jersey, what third umpire saying that 09 jersey will be the batter need to be in the into the pavilion. Wahab is given out by the third umpire. Uzef is a new batter in. It's turning out to be a great over there from Shravan. 4 deliveries, absolutely perfect deliveries. Fifth time in this over. Right above the wicket. Again, one more opportunity is created for the run out this time. He misses the stumps. Looks like he misses the stumps, and batsman definitely going to be safe. They completed single, and with that single score number under 37. Now, last delivery of the innings of another ninth block will go into commence. .37, last ball remaining. The batter is in strike, Munna. Balls, rise, opportunity of cotton ball, missed it completely. They complete single, looking for 2 then. They're very difficult to get a couple of runs here. They're looking for the second. Umpire says it's all over. Just a single will go into considered. So that's it. Their ninth block, they completed 6 overs quota, and they managed to get a very good total in this 6 overs. And they scored 38 runs, and they set a target of 39 to win the match. And wait and see how well the team Nazar ninth block will go into restrict their opposition Friends Bala, and wait and see how Friends Bala batter will going to get that 39 runs in the stipulated 6 overs. Altogether, it's going to be a very good match because of the target which is set by the team Nazar ninth block. Definitely it's going to be a challenge, but only if the bowlers of Nazar ninth block will go into ball well. If the fielder will go into support the bowler well, it's going to be one more good match in front of very good spectators out here in this most beautiful and prestigious cricket ground and Paradise cricket ground. We'll take a short break here in the commentary box, and after the short break, my friend Mr. Gopi will go to take out the microphone in our national language, Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त 39 रनों का लक्ष्य इस वक्त फ्रेंड्स बाला के सामने नजर 9th ब्लॉक ने रखा है इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए, और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होती हुई तो दोनों आरंभिक बल्लेबाज गितेश और चेतन मौजूद इस वक्त फ्रेंड्स बाला की ओर से, जबकि गेंदबाजी हुजैफ इस वक्त शुरू करते हैं। और जहां तक गितेश का सवाल है, इस श्रृंखला के पिछले मैचेस में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन पिछले रविवार को उन्होंने दिया था जब लोकल पूल के मैचेस खेले गए थे। फ्रेंड्स बाला की ओर से एक बेहतरीन प्रदर्शन बल्लेबाजी और गेंदबाजी में उन्होंने दिया था, और यहाँ पर उस बल्लेबाजी में इस वक्त उस सफलता के सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश में इस वक्त उनकी पारी की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। और जहाँ तक हुजैफ का सवाल है, इस वक्त फील्डिंग में वो जमावट करते हुए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार कमेंटेटर बॉक्स के बिल्कुल सामने दो झगमगाती हुई ट्रॉफियों का अनावरण इस वक्त किया गया है। विनर्स और रनर्स ट्रॉफी निस्संदेह यहाँ पर देखने वालों की नजर उन ट्रॉफियों ने देखने वाले के नजरों को इस वक्त मुड़कर स्टेज की ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया है। ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ इस वक्त उछाला, इनफील्ड क्लियर करते हुए कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई इस बार गेंद को रोका बेहतरीन तरीके से। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क मेड बाय द डीप एक्स कवर फील्डर। पहले गेंद को रोका, जैसे ही उन्होंने भापा कि वापस वो सीमा रेखा गेंद सीमा रेखा की ओर बढ़ रही है और खुद सीमा रेखा के अंदर गिरने वाले गेंद को हल्के से ढकेल दिया सीमा रेखा के अंदर और खुद सीमा रेखा के ऊपर गिर गया। इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का, और इन 3 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। गितेश का खाता यहाँ पर खुल चुका है। इट्स 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर, और चेतन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार हुजैफ की गेंदों का। निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा 39 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक बेहतर शुरुआत की जरूरत फ्रेंड्स बाला के बल्लेबाजों को। जहां तक सवाल है नजर 9th ब्लॉक का, तो मेजबान टीम है इस श्रृंखला की, इस श्रृंखला के होस्ट टीम है इस श्रृंखला का, तो उन्हें इस वक्त अगर 38 रनों के अंदर फ्रेंड्स बाला के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है तो कुछ विशेष रणनीति के साथ पहले ही ओवर से एक घातक गेंदबाजी उन्हें यहाँ पर करनी होगी। तो इस वक्त उस घातक गेंदबाजी की तलाश में हुजैफ गेंदबाज जो है इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और सामना करने के लिए तैयार। इस वक्त पहली बार चेतन हुजैफ की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद स्टीयर किया बैकवर्ड पर जाने के बाद ठीक तरह से नहीं, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला। इससे पहले कि शॉर्ट पॉइंट पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे फील्डर, बल्लेबाज के पास समय था कि एक रन के साथ तेजी के साथ अपना छोड़ बदल सके, और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस, और हुजैफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त जारी, और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त खेल दिया है। गेंद पहुंचती हुई इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर, जहां पर गेंद को फील्ड किया जाता नेट पर टकराने के बाद गेंद को, और एक रन का इजाफा इस बीच हो चुका है। 5 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। इट्स 5 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर, और इस बीच हुजैफ गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए गितेश इस वक्त स्ट्राइक ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, और चेतन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और हुजैफ अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त मोड़ दिया। स्टंप्स को कुछ हद तक कवर करने के बाद स्कोर लेग पर और तेजी के साथ 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 7 विदाउट लॉस, 6 रनों पर माफ कीजिए बिना किसी नुकसान के 6 विदाउट लॉस। और जहां तक सवाल है इस वक्त 2 गेंद, और 2 गेंद को देखना यह है कि गेंदबाज किस तरह से फेंकते हैं इस ओवर में। तो इस बीच ये गेंद को ड्राइव कर दिया मिड विकेट पर, रन इस बीच नहीं मिलेगा, और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज हुजैफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज गितेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। हुजैफ को कुछ समझाते हुए नजर 9th ब्लॉक के अन्य खिलाड़ी, और अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, और गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट
शॉट फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। 7 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर के मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड 7 विदाउट लॉस। And just talking about the next match, Young Friends, one more big match is now coming up. First semi-final of this competition is going to play between Young Friends Urwa versus Torpedoes Kana, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और जहाँ तक सवाल है इस मैच का, तो बैक टू दिस गेम एंड 5 overs remaining, still in overall calculation, and still they have to score 32 runs for victory in remaining 30 deliveries. That means in remaining 5 overs. That means the required run rate is exactly 6.40 runs per over. और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए साहिल, और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ उनकी पारी का दूसरा पावर प्ले ओवर सामना करने के लिए तैयार गितेश। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज साहिल ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गितेश के लिए, और गितेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 30 गेंदें बाकी, 32 रन और चाहिए विजय के लिए, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार साहिल। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद ड्राइव किया गितेश ने, सोच के रनों का खतरा नॉन स्ट्राइकर एंड पर शायद खतरा पैदा हो सकता था, स्ट्राइकर एंड पर भी हो सकता था, लेकिन थ्रो काफी वाइड और गेंद को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए इस वक्त गेंदबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और इस बीच बल्लेबाज के पास सुरक्षित वापस लौटने का मौका था। तो दोनों बल्लेबाजों के बीच कुछ हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन आखिरकार सब कुछ सुरक्षित दोनों बल्लेबाजों के लिए, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिए 7 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। साहिल फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद, इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, 1 रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़ा और यशस्वीतम 1 रन यहाँ पर पूर्ण करते हुए, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। लेग बाय के रूप में यह रन जो कि उनके खाते में यहाँ पर जुड़ चुका है। तो साहिल और एक बेहतर लेंथ लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई, और साहिल कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद दाहिने हाथ के बल्लेबाज चेतन इनको इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला एनफील्ड क्लियर करते हुए कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई, और इससे पहले की गेंद को काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। विद ट्विस्टेड बैट गेंद को खूबसूरती के साथ स्कूप किया था एनफील्ड क्लियर करते हुए, और 2 रनों के साथ दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज पर वापस लौट चुके हैं, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, 10 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त प्रकृति पर। साहिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, कुछ हद तक फिसल गए रन अप लेते वक्त, और जो कि कंक्रीट का पिच है, तो इस वजह से अगर कुछ हद तक मट्टी या रेती वहां पर कंक्रीट पिच पर आ जाती है तो खिलाड़ियों को फिसलने की संभावना ज्यादा रहती है, और यहाँ पे ऐसे ही हुआ था, रन अप लेते समय फिसल गए थे गेंदबाज, और एक बार फिर से संभल कर अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद परिवर्तन लेग कटर गेंद थी, और इस लेग कटर गेंद पर चकमा खा गए, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद लाइन पर गए, टिप्पा खाई, मिडिल स्टंप को केंद्रीकृत कर आती हुई गेंद उनके फ्रंट लेग पर टकराई, और आखिरकार अपील को पुरस्कृत करते हुए अंपायर हरीश पटेल ने अपनी उंगली उठा दी। तो इसी के साथ यह पहला विकेट गिर चुका। चेतन डिपार्ट्स और फ्रेंड्स बाला आर नाउ लूजेस देयर फर्स्ट विकेट। इट्स 10 for 1। Shravan, the batsman, is now
working towards to the crease with lots of responsibilities as a number 3 batsman और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार शाहिल की गेंद को। तो बेहतरीन लेग कटर गेंद के जरिए पिछले गेंद पर विकेट उन्होंने प्राप्त किया चेतन का, और लेग बिफोर विकेट यानी पगबाधा के रूप में। और यहाँ पर श्रवण का आगमन यहाँ पर होता हुआ स्ट्राइकर की ओर इस वक्त वो कदम बढ़ाते हुए, और शाहिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और श्रवण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए निस्संदेह, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, एक बेहतरीन कसी हुई गेंदबाजी की जरूरत है इस वक्त नजर 9th ब्लॉक के गेंदबाजों को। अगर उन्हें फ्रेंड्स बाला के गेंदबाजों को बल्लेबाजों को 38 रनों के अंदर अगर रोक कर रखना है तो 39 रनों का लक्ष्य। और इस बीच गेंदबाजी इस वक्त दाहिने हाथ ऊपर विकेट, बेहतर गेंद थी, नॉट सो मिसिंग 2 फॉर सादिल एक्स्ट्रा क्विकर, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका 2 अंकों पर यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और शाहिल फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर पहुंचे, विकेट कीपर के हाथों पर टकराने के बाद वाइड का इशारा। ऑफ कटर गेंद थी, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। अभी भी अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, और दोनों अंपायर कुछ बातचीत यहाँ पर करने के बाद अपने अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ। तो इस बीच गेंदबाज शाहिल इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गीतेश के लिए, और ये गेंद बेहतर गेंद थी गीतेश के लिए। हम साइड पर गेंद को उछालना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाया, बाई का इशारा, विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाया, विकेटों के पीछे 1 रन बाई के रूप में मिला, और बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद। 2 overs completed, 13 on the board for losing 1 wicket and 26 runs more now they have to score for victory in remaining 4 overs. That means in remaining 24 deliveries with a required run rate of exactly 6.5 runs per over. तो यहाँ पर जगमगाती हुई जो 2 चांदी की ट्रॉफियां इस वक्त ठीक कमेंटेटर बॉक्स के सामने विराजमान है, इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि आज उनका विजेता यहाँ पर कौन होगा। विजेता और उप विजेता कहना पड़ेगा, विनर्स और रनर्स ट्रॉफी इस वक्त इंतजार कर रहे हैं उन टीम के सदस्यों का, फाइनल टीम के सदस्यों का, पहले और दूसरे क्रमांक दूसरे स्थानी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और निस्संदेह इस स्टेज की शोभा को ये सिल्वर कोटेड ट्रॉफीज और भी बढ़ाती हुई, और काफी बेहतरीन तरीके से विन्यास किया गया है इन ट्रॉफियों को। और नजर चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का चैंपियन और रनर्स अप कौन होगा, आज शाम को इसका उत्तर यहाँ पर मिलेगा फाइनल मैच के पश्चात। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला के मैन ऑफ द सीरीज यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के इनाम के तौर पर सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन यहां पर दिया जाएगा। इस बार पहली गेंद विकेट गिर चुका है, ऑफ स्टंप उखड़कर गिरता हुआ गीतेश का, और फ्रेंड्स बाला का बेशकीमती विकेट यहां पर गिर चुका है। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, गेंद के लाइन पर नहीं आ पाया, बीट हो गए, गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए ऑफ स्टंप को उखाड़ कर ले गई। और गीतेश यहां पर पिछले मैचेस में जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था, इस मैच में कुछ ज्यादा खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए, और 4 रन बनाने के बाद 5 रन बनाने के बाद पेवलियन वापस लौटते हुए, और 13 रनों पर दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है फ्रेंड्स बाला का। तो 23 गेंदें बाकी हैं, 26 रन और चाहिए, 26 रन टू गेट इन रिमेनिंग 23 डिलीवरीज। और इस बीच बल्लेबाज हर्षित नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद अश्वथ अपनी पहली गेंद पर विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं, और यहां पर हर्षित बल्लेबाज इस वक्त करने के लिए तैयार।
और दूर दूर तक क्षेत्र इस वक्त फैल चुका है पावर प्ले के 2 ओवर्स के पश्चात, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट अश्वथ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद स्वीप किया। इस वक्त गेंद पहुंची स्क्वायर लेग फील्डर की बाईं ओर से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन का इजाफा। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को श्रवण वापिस से खींचते हुए देखा कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा चुका है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। 14 for the loss of 2 wickets. And this is the 3rd over in progress. I request once again all the players of Young Friends Surua and Torpedoes Karna please to report to the stage immediately to make a sign in the official chat. The first semi-final match of this prestigious cricket tournament, Nazar Champions Trophy 2024 will be played right after this match. और इस बीच गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अश्वथ, और इस बीच ये गेंद इस बार श्रवण के लिए धीमी गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर लगभग जमीन के सहारे आई। ये गेंद के धीमेपन को बल्लेबाज समझ नहीं पाए चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। तो यंग फ्रेंड्ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಕಾರಣ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು। तो इस बीच गेंदबाज अश्वथ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, परफेक्ट ऑफ कटर, जस्ट गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन, एंड दिस इज टू बी अ फैंटास्टिक ओवर इन नजर 9th block's point of view. Just a single run conceded by the Ashwath in this over. So the equal battle is now on. 14 for the loss of two openers for Friends Bala, और अश्वथ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर, 1 more dot delivery, and this is turning out to be a fantastic over now. 5 balls 1 run and 1 wicket for अश्वथ, और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए, और दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करेंगे श्रवण के लिए जो कि 2 लगातार डॉट गेंदें खेल चुके हैं। इस बार गेंद को उछाला है लेकिन वहां पर फील्ड थी नहीं, गेंद इस वक्त सीमा लगा था बहुत 6 रनों के लिए, और यहाँ पर अश्वथ जो गेंदबाज है हताश मनोभावना के साथ पिच पर बैठ गए, घुटनों के बल अपने सिर को अपने दोनों हाथों में धर लिए कि छक्का यहाँ पर उन्होंने प्रदान किया है, लेकिन दूसरे खिलाड़ी उन्हें इस वक्त यहाँ पर दिलासा देते हुए कि कोई बात नहीं, क्रिकेट में ये सब जायज है। लेकिन ये जो स्ट्रोक था श्रवण का एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट टाइमिंग्स के साथ एफर्टलेसली स्ट्रोक को उछाला गया था वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए, बेहतरीन स्ट्रोक श्रवण के बल्ले से लगता हुआ। तो अंतिम गेंद पर अश्वथ छक्का प्राप्त कर चुका है। पहले 5 गेंदें बेहतरीन फेंकने के बाद 3 ओवर की समाप्ति 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर 20 for the loss of 2 wickets after completion of 3 overs for Friends Bala. 19 more runs now they have to score for victory in remaining 18 balls. That means in remaining 18 deliveries. And as far as the victory of this match is concerned, still I must say this match is now evenly poised. देखते हैं क्या होता है उनकी इन 3 बचे हुए 3 ओवर में, और इससे पहले कि चौथा ओवर पर माइक्रोफोन पर अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए राज्य भाषा कन्नड़ में जनाब अब्दुल समद को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बाकी के 3 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। आइए समद भाई, धन्यवाद, थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿಯವರೇ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಕರ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಶ್ರವಣ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 6 ರನ್ನ ಸಿಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ತಂದು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿಲ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷಿತ್ ದಂಡಿನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು, ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಹರ್ಷಿತ್ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆಟದ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲಾ ತಂಡದಿಂದ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರ ಸಾಹಿಲ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ
ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಆಧಾರವಾಗುವವರು ಈ ಸಾಹಿಲ್. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು, ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಓಟ ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 24ಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. 24 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಗೀತೇಶ್ ಹಾಗೂ ಚೇತನ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರ ಸಾಹಿಲ್ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ, 4ನೇ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿಲ್ ಹರೀಶ್ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಅವಳಿ ಹೊಡೆತ ಆಟಗಾರನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷಿತ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಈಗ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಎಸೆದ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಧೃತಿ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ತಂಡದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಮೂಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಟಗಾರ ಶ್ರವಣ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುತ್ತಲೇ ಶ್ರವಣ್ 8 ಓಟಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರವಣ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಹಿಲ್ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, 4ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಸಾಹಿಲ್. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರವಣ್ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಓವರಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರವಣ್ ರವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 27. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 12 ಓಟಗಳು. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. 12 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್. ಎರಡೂ ತಂಡ ಒಂದು ವಿರೋಚಿತ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಕಾಣಬಲ್ಲಂತಹ ಎರಡೂ ತಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಈ ಎರಡು ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಸೆಗಾರ ಅಸ್ವದ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಲವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸುವವರು ಎಸೆಗಾರ ಅಸ್ವದ್. ಕ್ಷೀಣಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವವರು ಈ ಅಸ್ವದ್. ಕುಸಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತನ ನೀಡುವವರು ಈ ಅಸ್ವದ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಡಿದರು. ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ನಾಗರಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಬಹಳ ಸುಸೂತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ವದ್, ದಂಡಿನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಹರ್ಷಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್. ಸಾಹಿಲ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡೆಸೆದು 1+1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ವದ್ ರವರು ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡೆಸೆದು 1+1 ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರವಣ್. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ತಂಡಕ್ಕೆ. 2 ಸಿಕ್ಸರಿನೊಂದಿಗೆ 16 ಓಟಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರವಣ್. ಕಳೆದ ಆದಿತ್ಯವಾರವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಜಯಬೇರಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು ತಂಡವನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಸ್ವದ್ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ,
ಅದೇ ಶ್ರವಣ್ ಹೊಡೆಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ರಾಜ ಶ್ರವಣ್. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಸ್ವದ್ರವರ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ನಿಹಾಲ್ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರವಣ್ ರವರ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟದ ಫಲದಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲಾ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೈಪೋಟಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ ನಜರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಗಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಎರಡೂ ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು ಶ್ರವಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲಾ. ಶ್ರವಣ್ ರವರು ಬರಬೇಕು. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 1 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಸಿಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾದವರು ಶ್ರವಣ್ ರವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ರಣರಂಗ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಶ್ರವಣ್ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಫಾನ್ ರವರು ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಶ್ರವಣ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರವಣ್ ರವರು ಹೊಡೆದ 2 ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಶ್ರವಣ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲಿಂದಲೂ ಆ ಬಂದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬದಲಿಸಿತು. ಶ್ರವಣ್ ರವರಿಗೆ ಆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಇರ್ಫಾನ್, ಖ್ಯಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇರ್ಫಾನ್ ರವರು ಆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರ್ಫಾನ್ ರವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರವಣ್, ನಿಮ್ಮ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅರ್ಭಟದ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಾಗಿ
Welcome back, and match will going to start. Semi-final, and semi-final in the Mangle pool, and two very good teams in the semi-final, and it's going to be absolutely one of the high voltage match in front of the very good spectators here, and the two teams they got a place in the mega semi-final, and the team Torpedoes Khana with the home condition will going to play against Young Friends Surwa, and the news coming from here just a toss which is completed. The captain of Young Friends Surwa, after winning the toss, they elected to field first, so that Young Friends Surwa, there are fieldsmen out there in the field, and the prayer is on of Torpedoes Khana. Just they wanted to yes, have some game plans. It's very important for each and every team when they are going to play the big match against a big team. They need to have some kind of game plan. Strategy is so important in cricket, and because this is going to be a last opportunity, there is no excuse, and coming to the semi-final is going to be the great achievement, but coming to the final is going to be a different feeling, and both the teams doesn't want to miss this opportunity to enter into the mega final of this prestigious cricket tournament, Nazar Champions Trophy 2024, which is proudly organized by Nazar Sports Club, 9th block, as they're celebrating their 20th year, and one of the history as far as this particular cricket ground is concerned. The 1 lakh cash prize rupees for the day match, and runner will going to get 50,000 cash prize along with the attractive trophies, and we can see this very attractive trophies in our commentary box, and certain nevertheless it's going to be the great battle we are expecting for from remaining 4 teams. They got eye on this very delightful attractive trophy that they wanted to be in the mega final. Let's wait and see which team is going to be the luckiest one to get that trophy and cash prize of rupees 1,50,000. Friends Bala, they won their quarter-final match against host team Nazar 9th block, and thanks to the innings of Shaban, really changing the complexion of the game with some delightful cricketing stroke, the 2 sixes which is really changing the game, and takes his team into the semi-final. Now opening batters are coming to the middle for the team Torpedoes Khana. The very aggressive Ashraf walking towards the middle along with his partner Harris, and the bowler Shanawaz, as always known to be one of the economical bowler, and certainly the economical bowler coming in that power play overs, and wait and see how well Shanawaz will going to get the start here. So just wanted to see the field set in the power play overs. The one fielder in the deep long on and deep mid wicket, between deep Skalag and mid wicket Santosh Bantwal down at deep mid wicket, and it's only 2 fielders you can keep outside the circle in the power play. In the onside division, fielder down at square leg, one fielder down at short wideish mid on, that is the short wideish mid on, in fact I'm talking about, and one fielder at short mid off, and short extra cover, short cover point, backward point. All the fielders are very close together, that is a backward point and short cover point and extra cover and mid off. Hanif is going towards backward point region. So both the teams have played a very good game of cricket, and the first Young Friends Surwa defeated KFC Kodikal, very formidable KFC Kodikal in their quarter-final match, and team Torpedoes Khana defeated one of the favorite NM cricketers Bangalore with a nail batting finish, and the captain of the side Imtiaz played a very good innings, and they become the champion, they become the winner. Now very interesting to see Hanif there. Slide a bit of comedy fire there in the field, that Hanif is not getting any place there, and he's saying, why I'm there in the field, you are not giving me to stand in a position where I wanted to be. And now he's coming towards the mid wicket, mid on region, short mid wicket, the square leg, local boy, and definitely has got some extra support, and
Shanawaz, the first ball, driven that one down, takes a cover, dance of run out is great, and throw coming from the wall. Very good piece of fielding there by Santosh in that occasion. What could be a chance of run out there? Bowler Shanawaz looks like he just completely missed that throw coming from the hands of Santosh. That was a very good piece of fielding there by Santosh, one of the experienced campaigner. But as far as the fielding bowling is concerned, is absolutely masterclass. Again, he fielded that one very well. And returns the ball quickly to the hands of Shanawaz, fails to collect that throw from that fielder Santosh. So Harris facing his first delivery. Shanawaz balls outside the line of leg stump, going for the sweep shot. Mix up and chance of run out there, and again they miss that opportunity. Two chances. Both the batters are in the same end. My goodness, can you believe this? Total misunderstanding between the wicket. Once it's Ashraf wanted a single. That time he is not interested. What we are talking about, the white signal umpire. The bowler coming right in front of umpire, so that umpire couldn't manage to see that one. It's a wide outside the line of leg stump. White called by umpire. With that extra score, moves on to 3 on the board. So what a golden opportunity missed out by young friends who got 2 chances in 2 deliveries. Shanawaz, right arm over the wicket, balls to Ashraf. Ashraf drives, again match chance number 3. My goodness. Again the ball which is slashed that one beautifully, but the placement is not good enough. The jersey number 22, Samraz, fails to get that catch. And Ashraf got opportunity here. The 3 chances in 3 deliveries. This time top edge, but ball will go to land it safely. But unfortunately, just for a single. Just ball is going over the net. Altaf sings that one across the line, but unfortunately, ball went into that declared area. Declared area in the sense, I think the batter will going to retain the strike or not. Umpire need to see. Strike which is rotated, so that yes, during that stroke, so that the batsman Harris need to be there in the striker's end. Right now over the wicket, bounced again, the swings that one, missed it completely. Wicket keeper behind the stump did the rest. Excellent delivery there from Shanawaz, but 3 chances to run out and 1 catch which is missed out by the fielder at Cow Point region. Harris back on strike. The big semi-final is in progress. Right arm over the wicket, delivers. Again driven that one right in the gap. One bounce into the fence for 4 runs. Harris just driven that one with the direction of the wind. The fielder there in the deep mid wicket, almost in the cow corner. He couldn't manage to handle the bounce of the delivery with the direction of the wind. Ball just after gliding in front of the fielder, going over that tall fielder. And with that bound, Discover jumps into 9 on the board. Absolutely fantastic slog sweep shot coming from the blade of Harris. It's 9 on the board without loss of any wicket. Runs started to flow here for Torpedoes Khana after defeating NM Cricketers Bangalore in the quarter final. The team of Torpedoes Khana looking so confident in the middle. Shanawaz, final time in this over. Right arm over the wicket, balls. Beautifully ball, perfect one indeed. Ball just passing between bat and pad, but ball misses the stumps. This is going to be a good over for the point of view of Torpedoes Khana. They got 9 runs in that over. After completion of first over, it's 9 on the board for the without loss of any wicket. Team Torpedoes Khana against Young Friends Surwa. Very bright sunny afternoon. Almost it's evening. It's not afternoon. It's a 3 past 40, and we can see that 6 overs. 6 over side to be played as per the
decision of the organizers, because another 2 matches to be played after this. Imtiaz brought into attack to bowl the second over. The one more experienced campaigner for the side of team Young Friends Urwa. And Imtiaz, the bowler, one who represented for Deadly Kankanadi home team. Imtiaz. This is going to be second over, so that the second over of the power play is in progress. Ashraf is on strike. Starts with a beautiful delivery just within the reach of the batter, outside the line of off stump. Ashraf wanted to get that one in the offside region, but misjudging that one. Last moment he is just not offering any stroke. Ball went into the hands of wicket keeper, and there is no chance at all for any run. Imtiaz, right above the wicket bounce. Desam tries that one straight to the answer fielder. This time again, Santosh absolutely is brilliant. What a fantastic piece of fielding there by Santosh there. Umpire referring for the third umpires. Umpire referred for the third umpire to give the decision of the run out. Santosh has got a very good time in the field. The first over also is got a very good fielding in that region, one of his favourite area. That is mid off and extra cover. And the body language of Young Friends Urwa looks like they got a wicket, but here need to wait for the umpire decision, the third umpire, whether the batter is safe or not. I request one of the field umpire to please be reported here, because so out, which is called from the third umpire. The right decision from umpire, because yes, the ball is in the hands. So if the ball hits stumps, means the ball is in his hand. So that it's going to be good enough to call that out for the umpires. So it's going to be out. So Harris back into pavilion, and wicket number
one which is back into pavilion, and opening batter Harris is back into pavilion. So new batter in is Bashit coming to the middle as a number 3 batter, and immediately the announcement is coming here for Bashit as 1,000 rupees for every 6, which is announced by Rahil, and opportunity for Bashit to get 1,000 rupees for every 6, but here is sensible batting which is required for the team. They lost the wicket of Harris, and here is Imtiaz bowling away from us. Right above the wicket bounce to Ashraf. Ashraf lofted high up in there. Will it go into a chance? I don't think it's going to be a huge one. What a shot that coming from the blade of Ashraf. Definitely it's going to be a huge one. This is a monumental, one of the biggest 6 I want to say. First time seeing that ball is travelling into the commentary box. And last Sunday also some 6s which just came from the bat of the players, but it's the first 6 I'm seeing that ball is always coming, almost coming to the commentary box, the right of our commentary box. It's a huge one from big striker of the ball, Ashraf. What a fantastic striker of the ball. He's been outstanding. He's a man in form. Always going to be danger for the opposite team. 15 on the board. Right over the wicket balls. Very interesting to this that Ashraf just want to get away from this line of the ball. Hello. Ashraf again, right arm over the wicket balls. This time driven just over the infield, and long way to go for Santosh Bantwal before he coming to the picture. Ample time for the batter Ashraf to complete that couple of runs. What a fantastic striker of the ball, and everybody remember this name after that innings which is played in Guttigar, when it's a 29 required from the last over. But that's not a big thing, but when it is required 19 runs in 2 balls, and he made an history in under-arm cricket that 19 runs in 2 balls, it can be manageable. And he's just sending the message that cricket is still an unpredictable game. One more very good delivery there from Imtiaz, but the team Torpedoes Khana, they got what they really wanted in that second over of the power play. After completion of over number 2, Torpedoes Khana are looking so good so far. It's 17 on the board for the loss of 1 wicket. They're going exactly 8.5 runs per over. Thus, coming back to these 2 teams, both the teams has got some very good players in the side. Even though young friends are not really having some regular players in their side, but 2-3 players, 3-4 players, absolutely they have got good enough to give any kind of challenge for Torpedoes Khana. That's why Torpedoes Khana knows that, because if you're having a batsman like Arshad Bajal, the batsman like Santosh Bantwal, it's always going to be good enough for one team to good enough to handle with the 6 overs, because it's not a big format of games, just a 6 overs format of game, and 1 or 2 batsmen will go into bat through the innings. It's going to be a different ball game. That's why Torpedoes Khana, they wanted to set a big total. They know that not easy to defend less than 40, less than 35, but they wanted more than that, so that wanted to put some pressure onto the young friends Urva. Bashit is on strike. The bowler is in attack is Shahnawaz. Bowling is second and last over Piscota. Pass umpire Arish Padil. Right arm over the wicket bounce. Bashit swept that one firmly down to deep square region. And Santosh Bantwal very quick to react to that one. Charging in from the deep square region. Fields the ball. And ample time for the batter to complete the single with that single scope and moves on to 18 on the board in the over number second. Third is in progress. Deep square leg, deep wideish long on, mid wicket. Long off is that deep extra cover, short cover point to short square leg, short mid wicket. Shahnawaz. This time Ashraf lofted that one, but there is a protection in the deep long off region. He will go to cut it up the coming back for the second. Excellent running between the wicket. Especially the Bashit is running towards the dangerous end. That was a non-striker's end. He's just asking Ashraf to come to the non-strikers and come to the strikers end, because that was the safest side for the striker to run. And the score moves on to 20 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Again Shahnawaz bowling with a short run up. Right arm over the wicket bounce. This time tries that one straight. Oh, Anif
Ball just passing between his two legs. They're coming back for a second. In comes the throw from the day, but not good enough. Not good enough to stop that couple of runs and couple of runs which is completed. Slight a bit of firework coming in that ground to local boy Hanif for that misfield, but you can't blame Hanif for that because he's not playing regular cricket, isn't it? Some kind of excuse which is required for Hanif, and but we need to appreciate his effort. And meantime, outside the line of off tempo, misjudgment by Ashraf. This is second time I'm watching Ashraf. He couldn't manage to judge that line when the bowler bowling that line outside the line of off stump. He just missed it. Thinking about it might be a wide, but well within the reach of the batter. Scoreboard numbers on to 22 on the board. One more lovely delivery, absolutely perfect one there from Shahnawaz. Now he's just saying that what is the weakness of the batter. That's just reading that yes, the batsman is not good enough to strike the ball in the outside the line of off stump. He bowled two regular deliveries in that line. Absolutely good thinking from the bowler's point of view. 22 on the board. The same line. This time he will go to get. Oh, what a save! Oh my goodness, boundary. It looks like as ball is touches the rope and it's going to be a boundary. With that boundary, scoreboard moves on to 26 on the board. 26. It's 26 on the board. Almost he's just got a jump, and got a jump in the sense it looks like he saved that one, but the unfortunate ball after landed, ball just going back little and touches that line. And 3 overs completion of over number 3. It's 26 on the board, and Gopi right time he came into here because he just might need to remind that it's a 6 overs match, not a 7 overs match, because the last quarter final I completed 6 overs. This time no excuse, isn't it, Gopi? And now it's a 26 on the board. Gopi, Torpedoes Kana looking in a commanding position because against a very strong bowling department, getting the 26 runs. 26 runs on the board, good score on the board, and in a similar run rate, Gopi, it's going to be a 50 plus. Once it's going to be a 50 plus, definitely it's going to be a danger sign for young friend Surwa because even Torpedoes Khan also got some bowling department. एग्जैक्टली सतीश, बिल्कुल सही बात आपने फरमाया. यहाँ पर 26 रन बन चुके हैं, 50 के आंकड़े तक पहुंचता है टॉर्पेडोज खाना, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक चुनौती भरा स्कोर कहलाएगा क्योंकि जैसा कि आपने कहा टॉर्पेडोज खाना एक बेहतरीन गेंदबाजी का लाइनअप भी रखता है, बल्लेबाजी के साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ. तो यहाँ पर पहली गेंद पर 1 रन बन चुका है और यहाँ पर रनआउट की मात्रा. तो यहाँ पर 1 रन बन चुका है और जहां तक सवाल है हनीफ का, जो कि यहाँ के लोकल बॉय है, अगर उन्हें एक इनाम इस वक्त रखा गया, अगर कोई रनआउट हनीफ करते हैं तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार बीएमआर ग्रुप इनकी ओर से दिया जाएगा. हर रनआउट के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार हनीफ को दिया जाएगा. सिर्फ हनीफ के लिए ये इनाम लागू होता है जो बीएमआर ग्रुप ने यहाँ पर घोषित किया है. तो इस बार रगत को ड्राइव कर दिया. स्कोर ऑफ द विकेट वाइड स्लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. एक बार विकेट अरेज का गिर चुका है. उसके बाद अशरफ और बासी पारी की भागदौड़ को यहाँ पर संभाले हुए, खासकर अशरफ एक बेहतरीन पारी अपने टीम के लिए यहाँ पर खेलते हुए. और गेंदबाज इस वक्त तैयार अरशद बजाल गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, just shuffling across the line, wanted to pull that one on the outside area. The ball passed below his bat and the leg stump uprooted it. Fantastic delivery from Arshad Bajal, and he just got the rate of the batsman with this beauty. And that is the wicket number 2nd, and at last Basit departs and a 2nd wicket loss. It's 28 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress for Torpedoes Kana. Remember, this is the first semi-final of this prestigious cricket tournament. Nazar Champions Trophy 2024 is now progressing here, which proudly presented by Nazar Sports Club 9 Block in the celebration of their 20th anniversary. They are organizing such a fantastic tournament in the name of Nazar Champions Trophy 2024. First time ever in this beautiful Paradise ground, they are organizing a day tournament worth 1 lakh. And the tournament of 1 lakh, first time day tournament organizing by
Nazar Sports Club 9th block in this beautiful in the history of Paradise Ground Krishnapur. So this first day ever tournament of rupees 1 lakh progressing along nicely for the first time in the history of Paradise Ground Krishnapura. This time driven that one down to mid off run के लिए तोड़ पड़े, यहाँ पर रन आउट का मौका गवा चुके हैं और काफी नजदीकी मामला हो सकता था अगर निशाना स्टंप्स पर टकराता था। तो आखिरकार रन से बल्लेबाज को मिले जरूर एक और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 29 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर प्रगति टॉर्पेडोज काना इस वक्त करता हुआ और निश्चित रूप से यहाँ पर टॉर्पेडोज काना के रनों के रफ्तार पर अगर पाबंदी लगा रही है तो यहाँ पर एक बेहतरीन गेंदबाजी में वापसी यहाँ पर करनी होगी यंग फ्रेंड्स उरुआ के गेंदबाजों को और उस बेहतरीन गेंदबाजी की तलाश में अपनी अगली गेंद लेकर अरशद इस वक्त फील्ड में कुछ जमावट करने के बाद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई विकेट कीपर छूटे, विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी और इस बीच सिर्फ बाई का इशारा अंपायर द्वारा और बाई के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। जबकि चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर और सामना इस वक्त करते हुए बल्लेबाज सिनान और अरशद बजाल इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव करना चाहा, गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए बल्ले के बाहरी किनारा टकराने के बाद शॉर्ट टर्न की दिशा में गेंद पहुंची जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद 4 overs completed, 31 on the board, 2 wickets lost and now just 2 overs remaining in the rings. The first semi-final match of this prestigious cricket tournament, Nazar Champions Trophy 2024, is now progressing here. तो इस वक्त जहां तक सवाल है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल बाकी और देखते ही बचे हुए 2 ओवर में टॉर्पेडोज काना के बल्लेबाज अपने बचे हुए 8 विकेटों की मदद से और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो 5वां ओवर यहाँ पर शुरू होता है। 5th over starts in the innings and the bowler starts the fresh proceedings from the commentator box and is he's starting a fresh over और बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। प्रज्वलित गेंदबाज बाएं हाथ के गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली गेंद बेहतर गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, जोरदार अपील, लाइन पर गेंद टिप्पा खाई जरूर लेकिन लेग स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकलती हुई और सही निर्णय अंपायर हरीश पटेल द्वारा इस गेंद पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। जबकि 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है और यहां पर प्रज्वलित एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अशरफ सामना करते हुए ये गेंद इस बार अशरफ ने गेंद को उछालना चाहा, बेहतरीन तरीके की गेंदबाजी, टिप्पा खाने के बाद गेंद को नीचे रखने में सफल और सफल होते हुए गेंद को साइड पर उछालना चाहता अशरफ ने चूके और गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई बिंदु लेग स्टंप को बिखेर कर ले जाते हुए और इसी के साथ ये विकेट प्रज्वलित प्राप्त कर चुके हैं और अशरफ की बेहतरीन पारी पर यहाँ पर पर्दा गिर चुका है। कुल मिलाकर अशरफ का जहां तक सवाल है कुल मिलाकर उन्होंने बनाए 19 रन, स्कोर्ड 19 runs into his credit including one boundary and 6 each in just 16 deliveries he faced. He scored 19 runs including 1 boundary and 1 6 and after that playing a good knock of 19 runs in 16 balls including 1 boundary and 1 6 he is back to pavilion and the third wicket lost for Torpedoes Kana and now they are 32 for the loss of 3 wickets. Tanveer, one more good striker of the ball for Torpedoes Kana is now comes out to the middle और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार प्रज्वलित की गेंदों का। तो प्रज्वलित तक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और जहां तक यंग फ्रेंड्स उर्वा का सवाल अपने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में वो इस वक्त इस मैच में खेल रहा है लेकिन सेमीफाइनल तक आना कोई मामूली बात नहीं है और यहाँ पर खासकर KFC कोडिकल जैसे बलाढ्य टीम को उन्होंने पिछले मैच में
पराभव किया अपने प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में, तो निस्संदेह एक बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर वो जारी रखते हुए। जहां तक सवाल है इस वक्त टॉर्पेडोज काला का, तो पिछले मैच में इस श्रृंखला के प्रबल खिताब के प्रबल दावेदार टीम एनएम मैंगलोर को बेहतरीन तरीके से रोमांचक तरीके से पराभव किया था। टॉर्पेडोज काला ने बेहतरीन रोमांचक जीत के साथ इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुका है और इस बार गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट पर 1 रन के लिए, और इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले में इनका फाइनल मैच में प्रवेश प्राप्त करने के लिए मैंगलोर पूल से इस वक्त संघर्ष जारी है यंग फ्रेंड्स उरुवा और टॉर्पेडोज काला के बीच में। और इस बीच 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। पंचवित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सिनन सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला डीप मिड विकेट पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। आफ्टर फर्स्ट बॉल कलेक्टेड बाय द फील्डर जस्ट इनसाइड द फेंस, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। जबकि 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। प्रज्वलित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद उछालना चाहा, गेंद इस वक्त सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मोमेंट, और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद इस वक्त गेंद साइड पर स्विंग कर दिया डीप मिड विकेट पर। हनीफ के पहुंच से बाहर और गेंद वाइड स्लॉप और सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। गेंद को इस वक्त खेला था हनीफ मिड विकेट पर खड़े हुए थे, उनके दाईं ओर से गेंद निकली और डीप मिड विकेट और वाइड लॉन्ग ऑन के बीच जो गैप है, अंतर है, उस अंतर से गेंद इस वक्त निकली 2 फील्डरों के बीच से सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है बल्लेबाज तनवीर के बल्ले से और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स फॉर टॉर्पेडोज काला, and now they are looking in a good situation, and now just a last over remaining in the innings। अंतिम ओवर का खेल बाकी उनकी पारी में। शाम के 4 इस वक्त बज चुके हैं, 4:04 इस वक्त बज चुके हैं, और इस वक्त शाम पर धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद है और गर्मी की तीव्रता हालांकि घट चुकी है जरूर, लेकिन गर्मी कुछ हद तक अभी भी बरकरार मैदान पर है और खिलाड़ी और दर्शक इस गर्मी का एहसास अभी भी करते हुए, और मैदान पर दर्शकों की संख्या काफी हद तक इस वक्त बढ़ चुकी है। मैदान के इर्द गिर्द इस वक्त दर्शक इस वक्त नजर आते हुए इस मैच का मुआयना खामोशी के साथ करते हुए, और निश्चित रूप से एक हाई वोल्टेज मैच इस श्रृंखला का यहाँ पर खेला जाता हुआ यंग फ्रेंड्स उरुवा और टॉर्पेडोज काला के बीच में। और इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष इस वक्त जारी है इन दोनों टीमों के बीच। तो अरशद बजाल अंतिम ओवर शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त सिनन। तो ओवर की पहली गेंद लेकर अरशद बजाल तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सिनन के लिए अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बॉल्ड आउट ऑफ स्टंप अप्रूटेड, एंड दैट इज एन एब्सोल्युटली ब्यूटी फ्रॉम अरशद बजाल। गेंद लगभग तेज रफ्तार के साथ थी, कुछ हद तक डिविएट होते हुए अंतिम क्षण में गेंद को साइड पर पुल करना चाहता। गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए बल्ला ऊपर से अड़ा गए, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद बल्ले को वंचित करते हुए सीधे ऑफ स्टंप उखाड़ कर ले गए, और एक बेहतरीन गेंद पर अरशद बजाल यहां पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं सिनन का, और चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है 38 रनों के योग पर। इट्स 38 for 4। तो इस वक्त नए बल्लेबाज इम्तियाज, हालांकि कुछ देर से उन्हें भेजा गया है जरूर है, लेकिन यहां पर आखिरी ओवर में वो मैदान पर उतरते हुए और देखना यह कि बचे हुए 5 गेंदों में वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं तनवीर के साथ मिलकर। तो अरशद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए, और इम्तियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त अरशद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इम्तियाज फील्डिंग का मुआयना करने के बाद अपनी ओर की अपनी पहली गेंद सामना करने के लिए तैयार।
So welcome back once again. Next ball and the leg stump has been uprooted. So one more wicket for Arshad Bajal in this over. The batsman just wanted to loft that one, and by Imtiaz not succeeded, and he lost his wicket in the face of bowled. तो एक और विकेट इम्तियाज के रूप में गिर चुका है. 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर बेहतरीन ओवर यहाँ पर साबित होता हुआ हर्षद बजाल का. और कुल मिलाकर 3 गेंदे अब उनकी पारी में बाकी. और नए बल्लेबाज नंबर 7 बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतरते हुए अकरम, जो कि एक और आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं टॉर्पेडोज काना की ओर से. तो अरशद बजाल का एक बेहतरीन ओवर यहां पर साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ 2 रन पहले 3 गेंदों में वो प्राप्त करते हुए 2 विकेटों को प्राप्त करने में सफल, और सिर्फ 2 रन उन्होंने प्रदान किए इस ओवर में. और इस वक्त वो गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अकरम के लिए. और फील्डिंग में कुछ हद तक जब आउट करने के बाद बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अरशद, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त अकरम के लिए. इस बार उछाला लंबा पर, लेकिन फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे. लंबा पर गेंद का इंतजार करता, थोड़ी सी मिसफील्ड, और एकमात्र रन बल्लेबाज को यहाँ पर मिलेगा. चाहे तो बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर ले सकते थे अंतिम क्षण में, लेकिन उन्होंने पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन नहीं लगाया था कि गेंद वहां पर मिसफीड होगी फील्डर द्वारा लॉन्ग ऑफ पर. और सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद दिस टाइम आई थिंक इट कुड बी टेकन जस्ट इनसाइड द फेंस एट लॉन्ग ऑफ. यस इट डज. एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. टॉप एज पर गेंद टकराई, हवा में काफी देर तक रही, और लॉन्ग ऑफ पर एक बेहतर जजमेंट के साथ अपने आगे की ओर आते हुए फील्डर ने इस कैच को लपका. और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. तनवीर की पारी समाप्त. नाउ इट्स 41 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एंड विकेट नंबर 3 इन दिस ओवर फॉर अरशद. एंड दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ फैंटास्टिक ओवर फ्रॉम अरशद. In the young friend's point, Urwa's point of view, is not progressing. Just a last ball remaining. He conceded just 2 runs in this over. और अंतिम गेंद कुल मिलाकर उनकी पारी का इस ओवर में बाकी. और उस अंतिम गेंद का सामना करने के लिए गेंदबाज का सामना करने के लिए बल्लेबाज शरण इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए. और अरशद अपने 5वें विकेट की तलाश में अब तक 4 विकेटें वो प्राप्त कर चुके हैं अपने गेंदबाजी में. और इस ओवर में चौथा और कुल मिलाकर अपना 5वां विकेट प्राप्त करने के कोशिश में अंतिम गेंद उनके कोटे के लेकर इस वक्त तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट. और अरशद इस वक्त शरण न सामना करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर बल्ले का अंदरूनी किनारा शॉट्स को लेग पर नॉट मोर देन अ सिंगल. फैंटास्टिक ओवर केम्स टू एन फ्रॉम अरशद. और 6 निर्धारित ओवर समाप्त होने के बाद टॉर्पेडोज काना ने बनाए 42 रन. 42 रन स्कोर्ड बाय टॉर्पेडोज काना आफ्टर completion of their 6 overs quota for losing 6 wickets. And now the target for 43 for young friends to qualify for the grand finale of this competition. 43 they have to score in the stipulated 30-60 levels. That means they stipulated 6 overs with the help of 10 wickets with a required run rate of exactly 7.17 runs per over. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. 43 the target in 6 overs. 43 रनों का लक्ष्य 6 ओवर में यंग फ्रेंड्स उरुआ के लिए इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए बनाना है टॉर्पेडोज काना के खिलाफ. और देखते हैं इस लक्ष्य तक वो पहुंच पाते हैं. फिलहाल उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी चंद लम्हों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे फिर से राज्य भाषा का में जनाब अब्दुल समद कटिपल्ला के साथ, जब यहाँ पर यंग फ्रेंड्स उरुआ की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. ವರಕ ಮಂಡೂಲ ಇದಿಲಿ ಆ ಚೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಜಂದುಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲ ಸರ್ ಯಾರ್ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡಲ್ಲೇ
ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟ. ಗೆಲುವಿಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಾಕಿ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಮ್ಮ ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಎಂಬ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಭರವಸೆಯ ಹೊಣಲನ್ನು ಹೊತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ದಂಡನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಆಟಗಾರನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಶರಣ್ ಅದು ಔಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಳುವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬೆಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಶರಣ್ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಾಶರಾಗಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಎಷ್ಟರ ತನಕ ಕ್ರೀಸನ್ನು ಆವರಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಶರಣ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ರವರಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಖಾತೆಯನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ 47,000 ಜನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸರಿ. ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಿದೆ. ಆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಏರುವುದರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 47,000 ಜನ ಈ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಶೋತೃಗಳಿಗೆ, ಆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. ಶರಣ್ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹರೀಶ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ಮತ್ತೆ ಶರಣ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷದ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲ, ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ರವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್. ಕಾರಣ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎದುರು ಆ ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆವು. ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ರೋಬೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರಾದ ಶಾಕಿರ್ ರವರ ಎತ್ತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರಿನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ಎದುರು ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣ್ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 5 ಓಟ ಬಂದಾಗಲೇ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬೆಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸುಸಜ್ಜತೆಗಳನ್ನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕ. ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕ ಎಂಬುದನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು NM ತಂಡದ ಎದುರು ಆ ದಿಟ್ಟತನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಿನ ಮೂಲಕ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶರಣ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಬಹಳ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ₹15,000 ಬಹುಮಾನವನ್ನ KJS ಶರೀಫ್ ರವರು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
KJF ಬಶೀರ್ ರವರು BC ರೋಡಿನಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷದ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯ ಚೆಂಡು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. 2 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ರವರಿಗೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ, 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಶರಣ್ ಪ್ರಥಮ 2 ಎಸೆತಗಳು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ರವರಿಗೆ ಎಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ, ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಬಹಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾರ್ 3ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಸಿಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದಾರಿಯನ್ನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ಅಶ್ವಿನ್ ತಮನ್ನ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಓಟ. ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಮೈದಾನದ ಮುಕ್ಕು ಮೂಲೆಗೂ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 10. 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಶರಣ್ ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಕೊನೆಯ ಸತವನ್ನ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಹರ್ಷದ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಬೌಂಡರಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಆಟ ಇದು. 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲದು ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು. ನೋಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಗುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗಿನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಮತ್ತೆ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಸಿನಾನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಆಜಾದ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸಿನಾನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನ ಎಸೆಯಲು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ರವರಿಗೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ ರವರ ಗುಡುಗು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ರವರ ಮಿಂಚಿನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್. ಓರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಜಾಣ ಈ ಸಂತೋಷ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ ರವರ ಪ್ರಜ್ವಲಿಕೆ ಆಟ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ. ಸಿನಾನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷದ್ ರವರಿಗೆ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಹರ್ಷದ್ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನ, ಅದರಲ್ಲೂ 2 ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗಿರುವ 13 ಓಟಗಳನ್ನ, ಉಪಯುಕ್ತ ಓಟಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಾನ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಈ ಬಾರಿ 1 ಓಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಟದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುವಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ ಹವಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳು ಬಂದಿತು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಸಿನಾನ್ 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 3 ಬಂದಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನಾನ್ ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕದೊಂದಿಗೆ. ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ತುಳಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್. ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಕೂಡ 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 3 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷದ್ ರವರನ್ನ ವಂಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಾನ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಾನ್ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇತ್ತು. ಇದು ತಪ್ಪು ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ 4 ಎಸೆತ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿ ಎಸೆದು ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ರವರಿಗೆ. ಸಿನ್ಹಾನ್ 5ನೇ ಬಾರಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ತಮ್ಮ ದೈತ್ಯ ಆಟವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಾನ್ ಅವಕಾಶವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಷದ್ ರವರಿಗೆ. 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಈ ಜೋಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅದು ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಬಶೀರ್ ರವರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಾನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಗೂಟವನ್ನ ಭದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಹರೀಶ್ ಬಜಾಲ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ 18 ಓಟ ಬಂದಿದೆ, 5 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನ ವೇದಿಕೆ ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಿನಾನ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಸೆತ, ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಲೇ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳು ಬಂದಿತ್ತು, 2 ಬೌಂಡರಿ ಎಂದು ಒಳಗೊಂಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಗತಿಯ ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಎಸೆದು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದು ಓರ್ವ ಕೆಚ್ಚದ ಎಸೆತಗಾರನ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ 100ನೇ ಓವರನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಎಸೆಗಾರ ಶರಣ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಸಲೀಂ, ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸಲೀಂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ರವರ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕೋಟಾದ ಕೊನೆಯ ಓವರಿಗಾಗಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅದೇ ಶರಣ್ ರವರನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. 18 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಶರಣ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ರವರಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ ರವರ ಗುಡುಗು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ರವರ ಆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟ. ಶರಣ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್. ಕಾರಣ ಇದು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ. ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲಿಗೆ, ಸೋತರೆ ನಿರಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ತಂಡನ. ಆದರೆ ಕೇವಲ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ. ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಚೆಂಡು, 1 ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣ್. ಸಂತೋಷ್ ತಾಳ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮದ ಆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಶೀರ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಶೀರ್ ರವರು 15,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು ಈ ಜೋಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತುಂಬಲು ಸಮ್ರಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಸಮ್ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್
ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆಜಾದ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟಕ್ಕಾಗಿ. ಎತ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಶರಣ್ ಪ್ರಥಮ ಆ ಓವರಿನ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿರುವುದು ಉಳಿದ 3 ಎಸೆತದ ಗತಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು. ಶರಣ್ 4ನೇ ಬಾರಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಶರಣ್ ರವರು ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಟಿ ಸಮ್ರಾಜ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶರಣ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಇದು. ಆಟಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬಂಗಾರೆ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನೇರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿದ ಚೆಂಡು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ರಾಜ್ ರವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಸಮ್ರಾಜ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. ಮುಂದಿನ ಆಟಗಾರ ಸಗೀರ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ತಾರೆ ಈ ಸಗೀರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡವರು, ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಗೀರ್ ರವರ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ಎದುರು ಆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಗೀರ್ ಆಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಶರಣ್ ರವರಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದೆ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರ, 2 ಓಟವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ. ಸಗೀರ್ 2 ಓಟವನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 22 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಎಸೆಗಾರ ಮತ್ತೆ ಶರಣ್, ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗಿದ್ರೆ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಸಗೀರ್. ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಗೀರ್. ದಂಡನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಶೈಲಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಸಗೀರ್. 1 ಓಟ ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 20 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರವರ ಆಗಮನದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ಪದ ಪುಂಜಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನೆ ತಣಿಸುವ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರವರ ಆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲೇ. Hello. Well, thank you very much, Abdul Samad Kadibullah. The match is evenly poised because situation here is 23 on the board and target 43. That means 20 runs required for the victory and 18 balls remaining. And Gopi, suddenly it looks like the match is evenly poised because of the 2 wickets which is back into pavilion in a very quick session, and the previous over Sharan managed to produce a vital breakthrough for Torpedoes Khana. Because of that, it's going to be anybody's game. And Harris got a ball in his hand, and the batter Sagir will going to take the strike of the bowling of the bowler Harris. Right arm round the wicket bounce. This time sensible batting, place it down to short cow point region just for a single. Now the man who's definitely going to be noticed in this particular match because Ashad Bajal is the one definitely
the victory which is left to that young friends who are left to is this man, and 25,000 I think cash prize which is announced by Bashir Shanti Angadi, and 15,000. Ravish 5,000 altogether, 17 plus 5 plus 2 altogether 25,000 which is announced for Arshad Bajal if he manages to win the match for young friends Suruva, and he will go and get 25,000, but more than 25,000, but Arshad Bajal need to see the situation and condition of the game. Right arm ball system going for the big swing of the bat. Of course he got a success in 2-3 times in this particular cricketing stroke, that is a switch hit, but this time the bowler is too clever and he's seeing the intention of the batter as he going for the switch hit. He ball outside the line of leg stump and misses the ball completely. Each and every dot ball going to be very crucial in this particular match. 24 on the board, 19 which is a required run, and the delivery which is remaining which is 16, and oh my goodness, it's going to be a very interesting match. And team Torpedoes Khana certainly wanted one tidy over, at the same time sensible batting which is required here, and maybe Diamond Ali same jersey ಹಾಕಿದವರು Diamond Ali ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, Torpedoes Khana ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Harris to continue, right arm round the wicket to the left hand batter. Arshad again wanted to go for the big shot, again the ball is missing the bat completely. Back to back two dotted balls, but I'm not really understood what kind of stroke he is attempting for, but some kind of urgency looks like there from Arshad Bajal, but 3 very good deliveries bowled by the bowler Harris. Now the deliveries remaining 15, runs required 19. The difference little bit going larger and larger, each and every dot balls, that 19 required, but I don't think Arshad Bajal is a kind of batsman, he can decrease that difference with one proper cricketing stroke. Right arm over the and the wicket balls. This time, what are you talking about, the proper stroke? The ball is in there and Chalan is underneath it. This is a huge fish in the net. This is definitely going to be a huge fish in the net, as Arshad Bajal wanted to break the shackle. After that, back-to-back 2 dotted deliveries, something which is going in his mind, that he wanted to get a big shot, but he just choosing that wrong area. That was a deep extra cover, one of the longest part of the ground, particularly coming to this cricket ground. And Gopi, suddenly the wicket of Arshad Bajal will going to take the match little bit away from young friend Surva. The Torpedoes Khana are strongly back in the game after that wicket of Arshad Bajal. बिल्कुल सतीश, अरशद बजाल का विकेट का पता निश्चित रूप से यहाँ पर यंग फ्रेंड्स के लिए ड्रॉबैक साबित हो सकता है. यहाँ पर अरशद बजाल ने गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट उछाला था जरूर, लेकिन अंतिम क्षण में ऐसा कहना पड़ेगा अगेंस्ट द विंड उन्होंने गेंद को खेला और गेंद अपने रफ्तार को खोती हुई सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर छलन जो फील्डर खड़े हुए थे उनके हाथों में पहुंचे, और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका. तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है, कुल मिलाकर 24 रनों पर 24 द स्कोर स्टैंड्स, 19 टू गेट, 14 बॉल्स रिमेनिंग. और अरशद बजाल क्रीज पर होते तो शायद कुछ हद तक यहाँ पर आत्मविश्वास यंग फ्रेंड्स हुआ होता, लेकिन अभी भी मौका जरूर है. लेकिन इस वक्त यंग फ्रेंड्स हुआ के लिए ड्रॉबैक ये है कि दोनों बल्लेबाज जो हैं क्रीज पर नए बल्लेबाज है. दोनों बल्लेबाज इस वक्त सागिर और शाहनवाज का आगमन इस वक्त हो चुका है, और इस वक्त कमबैक करने के लिए इस वक्त एक दिलेर भरी गट्सी बैटिंग की जरूरत है यहाँ पर यंग फ्रेंड्स हुआ को. Absolutely, Gopi, and gutsy batting which is required for the team young friends. But the question raising here is that the batsman, the Shagir and Shahnawaz, can they able to do that job? Again, oh, what an attempt there from Harris. Almost the body is in the air when he was trying for the catch. So definitely that will going to become a viral tomorrow. And the way that the Harris is almost his body is floating in the air, isn't it, while trying for the catch. If he manages to get that catch, it's going to be one of the best catch of the tournament. But the batter Shahnawaz got a single for that. Single takes the team total score into 25 on the board. 25 in the sense, another 18 more runs required for the victory, and delivers remaining 13. Now 5 difference between run and ball. It's going to be a huge or not, let's wait and see. The last time in this over turning out to be a very great over there from Harris.
Right over the wicket, bounce to Shagir, dotted delivery, one more dotted delivery. It's been outstanding over there from Harris, really changing the complexion of this game, because Gopi, the more than that it's an economical over. I want to say the wicket of Arshad Bajal in that particular over definitely going to be a turning point of this over. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर अरशद बजाल का विकेट का पता निस्संदेह मैच का टर्निंग पॉइंट यहाँ पर साबित हो चुका है। निस्संदेह पहले ओवर में अरशद बजाल ने जब 14 रन बनाए थे तब ये पूर्वानुमान लगाया गया था कि यंग फिंच के बल्लेबाज छा जाएंगे, लेकिन उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओवर ने बेहतर कमबैक करते हुए इन 3 ओवर में टॉर्पेडोज खाना के गेंदबाजों ने पासा को पलट दिया। 3 ओवर में 1 से 4 ओवर के दरमियान 3 ओवर में सिर्फ 11 रन उन्होंने प्रदान किया सतीश। दे कंसीडर्ड 11 रन in 3 overs, in between 1 to 4 overs. That means and that is the main turning point of the match. ना सिर्फ उन्होंने 11 रन सिर्फ प्रदान किए उन 3 ओवर में 2 से 4 ओवर के बीच, बल्कि 2 विकेटें भी, 3 विकेटें भी उन्होंने उखाड़े। और यहाँ पर तख्ता टॉर्पेडोज का भारी लगता हुआ 18 रन चाहिए 12 गेंदें, लेकिन मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ। ये जो ओवर शुरू होने जा रहा है सतीश, दोनों टीमों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस ओवर में कम से कम 10 से 12 रन बटोरते हैं यहाँ पर तो यंग फिंच इस मैच में वापस आ सकता है, वरना टॉर्पेडोज का पलड़ा और भी भारी हो जाएगा। Absolutely, Gopi, because Sinan is the kind of bowler and so far has got a very good tournament here and from the bowling as an economical bowler, and it's going to be a big challenge here for young Fencer. This time outside line of off stamp, going for the big drive, but the punishment not from the batter but from the umpire, because that ball is going far away outside the line of off stamp, and with that extra scope and the moves on to 26 on the board. But one thing is clear is here in this particular match, Gopi, that the victory of young friends almost depends upon the 2 batters, opening batters Santosh and Arshad have to play that one till the end, and because they're not having a regular players in the side, and this is what a big problem for the young friends is, that not having the full strength, what they really regularly, they're not regular cricketers are not playing in that playing 11, but still I think the good comeback here by the bowlers of Torpedoes Khana, especially I think need to appreciate the captain's decision, because Sharan bowled that first over. Gopi, you're just talking about the 14 runs came from that first over, but in the second over Sharan is looking so different, and second over he picked up 2 valuable wickets and won the big wicket of Santosh in that over. So this is what the little bit drawbacks here for team Young Friends in that over. Also they lost 2 wickets, and especially the wicket of Samraz, who is back-to-back wicket after Santosh back into pavilion. Very next ball Samraz is back into pavilion. This might be the little bit turning point of the game, that Arshad started to feel the pressure as he couldn't manage his regular cricketing stroke. Now timed out, what umpire is saying that too early, and window over number 5 is in progress. They almost exceeds the time limit, and they need to bring one fielder inside the ring. So it's going to be opportunity for the left-hand batsman, because the square leg inside the ring, the fielder from the deep mid wicket coming a little bit squarer. The Ashwin is there in the deep mid wicket region. Again going to be wide 1+1. This is going to be a bonus run here for young friends. See on what we are talking about so far has got a very hello. So 1+1 run, 1+1 added to total. With that couple of runs scored, moves on to 28 now. Now the most important thing to see here in this particular over, Sinan conceded some runs in the form of extra, and that is going to be a bonus on here for young Fencer. There's some driven that one down to wide-ish mid-wicket region. The fielder is there in the middle. The foul there for the fielder. They're coming back for the second, and they completed. Asking for the third umpire, Pushparaj. Looks like the batter Shagir little bit struggling to reach his home, but I don't think it's not a good running between the wicket, because probably there will be second runs. But Shagir will run very slowly to that striker's end. But now we need to see that whether it's going to be out or not. And if it is out, Gopi, certainly one more big wicket is for team Torpedoes Khana, and young friends who are certainly will going to feel that now time will definitely going to be making a little bit tougher and tougher, because they're not having regular players in the side. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर ये विकेट गिरता है तो यंग फ्रेंड्स के लिए काफी मुश्किलें यहाँ पर पैदा हो सकती है। और शागिर मैं समझता कुछ हद तक शागिर धीमे थे यहाँ पर, शायद वहाँ पर दूसरा रन हो सकता था, लेकिन अंतिम क्षण में शागिर लगभग कुछ देर से दौड़े यहाँ पर, लगभग आधे सेकंड सोचने के बाद उसके बाद उन्होंने दौड़ना शुरू किया दूसरे रन के लिए। फलस्वरूप इस वक्त यहाँ पर वो
मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो देखते हैं इस वक्त तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं, और यंग फ्रेंड्स को अगर कम बैक करना है यहाँ पर तो निस्संदेह यहाँ पर शागिर को बचना होगा, लेकिन यहाँ पर शागिर बच नहीं पाए और रनआउट के रूप में उनका विकेट गिर चुका है। और निस्संदेह सतीश ये विकेट का पतन जो है शागिर का यंग फ्रेंड्स को और मुश्किलों में यहाँ पर ढकेल सकता है। Exactly, Gopi, but definitely the Shagir is being the tall man. I'm not really understand why he's a little bit slow to react to that second end, because it's not a bit of fumble from the fielder. But good thing to see that Tanvir recovered quickly from that fumble, and he's just realizing there is opportunity created that the batter is slow to react to that second end. 29 on the board. That means 14 more runs required for the victory, and balls remaining 10. The match is still alive, I want to say, even the difference which is between run and ball just a 4, but I don't think it's going to be a big difference because one delivery will going to change the complexion of the game. And wait and see. The new batter coming to the middle is Karthik. Karthik is experienced campaigner. Whenever there is a left and right combination, it's always going to be, seems to be handy for the chasing team. Not a good sign for the fielding team because of that left and right combination. Wait and see how well this batter will going to contribute from the bat. Sinan. Balls top edge. Opportunity created for the catch. One more wicket is back into pavilion. Karthik departs. Karthik departs. Back-to-back 2 wickets in the 2 deliveries, putting more pressure into the young friends over. Still they have to get 14 more runs to win this match in remaining 8 deliveries. 9 deliveries, little bit action. 9 balls remaining. 14 runs required for the victory. And now the team, Torpedoes Khana, they're strongly back in the game. And yes, Gopi, after that 2 white balls, 3 extras conceded in this over. Sensible batting which is required, isn't it? But this time, young friends, they're throwing the wicket. Throwing the wicket means they're losing a very important one delivery. This will make a big impact. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर सेंसिबल सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की जरूरत है। यहाँ पर अपने विकेट को फेंकते हुए, और जहां तक सवाल है, ज्यादातर रिवर्स शॉट के प्रयत्न इस वक्त करते हुए और विकेट अपना गंवाते हुए। यहाँ पर भी देखिए किस तरीके के शॉट ऑफर किया था बल्लेबाज कार्तिक ने और उनका विकेट गिरा। तो 9 गेंदे इस वक्त बाकी, 14 रन चाहिए। 13 फॉर टाई, 14 फॉर विन। और यहाँ पर इस ओवर में बचे हुए 3 गेंदे में कम से कम 5 से 6 रन यहाँ पर जरूर बनाना होगी यंग फ्रेंड्स को यहाँ पर कम बैक करने के लिए। जहां तक टॉर्पेडोज का लगा सवाल है, इस वक्त उन्हें इन 3 गेंदों को, जो गेंदबाज है, उन्हें काफी बेहतर फेंकना होगा। Exactly, Gopi. After the shackling start there from Shinan, he is strongly back in this over with some good deliveries, and now definitely going to be a little bit road becomes a little bit difficult for young Fensurva, and we didn't see how well they will going to come out from that trouble. Right arm over the wicket. Oh my goodness, that's what I'm talking about. This is a cricket. You can't say anything in cricket. I've already mentioned the one delivery is good enough to change the complexion of this game, and will it going to be that delivery? Because the white ball means you need to re-ball. And 1 extra run will be added to total. Scoreboard numbers on 30. That means 13 runs required for the victory in 9 deliveries. Shinan. Driven straight to the end, little bit correction. The fielder Tanvir there in the mid wicket region. They're going for the second. It comes the third and direct hit. But I think the batsman maybe is a safe. But umpire Arish Patel doesn't want to take any risk in that occasion, so that is straight away asking for the third umpire to give the decision. And yes, Gopi, this is going to be very interesting. Everyone's eyes into that third umpire, and will it going to be out? Of course, the supporters of Torpedoes Khana want to see that third umpire will going to give the out. At the same time, the supporters of Young Fensura want to see that if it is a not out, definitely the game is in their hand, because if 2 runs completed, then it's going to be 32. And that means 11 runs required for the victory from remaining not out is called. That's what I'm talking about. The body language, which tells everything, isn't it? It's good enough to see the body language of the batter and the fielders. That is the batsman quite with the save there. Umpire Arish Patel knows that, but whenever it is a directed Gopi, umpire always doesn't want to take any risk, because it's always going to touch and go. And definitely it's going to be not out. 2 runs added, total 32. That means 11 runs required for the victory from 8 balls. The difference reduced to be from 5 to 4, 4 to 3 now. And this is not a good sign. This is not a good sign for Torpedoes Khana, but certainly it's a good sign for young Fensurva. 8 balls remaining. 11 runs required for the victory. Samir going for the expansive drive. Losing this delivery in this situation means
putting himself into pressure. Samir after that he got 2 runs, slight a bit excited to play that one same kind of cricketing stroke, but bowler this time too clever to bowl that one outside the line of off stump, and now the ball remaining 7 and runs required 11. Here is the bowler bowling right arm around the wicket. Sinan bowls to Samir. Samir drives a run into the hands of Imtiaz as short mid wicket. Imtiaz will not going to bother about the single. You know exactly you need to concede only single in that for the last 11 of the over. Now last over remaining, 10 runs required for the victory. Gopi seems to be a little bit difficult, but always says in cricket that difficult road often leads to beautiful destination, and destination here for young friends Urva is at 10, and destination for the Torpedoes Khana is that they need to restrict 10 runs in the last over. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त डेस्टिनेशन है 10 रनों का इस वक्त यंग फ्रेंड्स के लिए, जबकि डेस्टिनेशन इस वक्त टॉर्पेडोज खाना के लिए उन 6 गेंदों को इस वक्त क्विट करने का। तो यहाँ पर 10 रन 9 फॉर टाई, अगर मैच टाई होता है तो इस वक्त इस श्रृंखला के नियमानुसार टॉस किया जाएगा। तो 9 रन अगर यंग फ्रेंड्स बनाते हैं अंतिम ओवर में तो मैच टाई होगा, अगर 10 रन बनाते हैं तो मैच में विजय रहेंगे। तो यहाँ पर अंतिम ओवर शुरू होने जा रहा है और गेंदबाज इस वक्त मुबीर गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, और जहां तक मैच के विजय का सवाल है तख्ता थोड़ा सा इस वक्त तक टॉर्पेडोज खाना का भारी लगता है, लेकिन मौका जरूर है इस अंतिम ओवर में सतीश यहाँ पर यंग फ्रेंड्स को बाउंस बैक करने का। 10 फॉर विक्ट्री, 9 फॉर टाई, 10 फॉर विन, और देखते हैं सतीश इस अंतिम ओवर में उनकी पारी में क्या होता है। Absolutely, Gopi, and wait and see that. Is on 10 to get from 5, 2 runs for every delivery. Right above the now wicket keeper misses it, but not more than a single. Not more than a single. The ball has got a little bit outside edge of the batter Shamir there, and now 1 run scored in the 2 deliveries. That means 4 balls remaining. They need to get 9 runs to win this match. 1 proper cricketing stroke, which is badly required for young friends Surwa, but 4 proper very good delivery, which is required for Torpedoes Khana. So Mubir has got a responsibility. The left-hand batsman is on strike is Shah Nawaz. Can he become the Nawaz here for his team, young friend Surwa? Here is again bowler bowling right arm over the wicket to this Shah Nawaz. Shah Nawaz swings that one down to square leg region, looking for the second. In comes the throw. They're going for the second. No, they're going against. There will be opportunity of second run there, but Shah Nawaz is not interested to come back for the second. Now 3 ball remaining, second timed out called by umpire. Now 1 more fielder need to bring inside the ring. 3 balls remaining and runs required 8. 7 for tie, 8 for victory, 3 balls remaining. Advantage here for the chasing team is that now only 3 fielders outside the circle. Only 3 fielder outside the circle. The opportunity is created for the batsman to get the placement. Can they able to get the advantage of that fielding restriction? Now the little bit headache here for the captain of Torpedoes Khana, where to set that 3 fielders. 1 fielder going back to deep square leg, 1 at mid wicket, 1 at deep long on. No one there in the deep in the offside region. No one there in the offside deep in the offside region. There is a short mid of short extra cover, short cover point, and very very close together, because it's very difficult to see that unorthodox field set in the offside region. 3 balls remaining, 8 runs required for the victory. Here is Mavir, right above the gate, tries a run down to deep long off region. Field will behind the ball, and that will go into miss that trying hands of Harris. The boundary coming up. 2 ball 4. Now 4 required from 2 balls. This is what I'm talking about, Gopi, the advantages.
This is why the discipline is always going to be a key for the success. They spent a lot of time to set a field, pays the penalty for that, but match is not yet over, but match which is a little bit coming in little bit in favor of young friends Silva. That boundary definitely will going to open the gate for young friends Silva. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर समीर का जो चौका है निस्संदेह यंग फ्रेंड्स सिल्वा के लिए विजय के द्वार को खोल चुका है। बेहतरीन तरीके से गेंद को इस वक्त उछाला था। इस वक्त खासकर सिर्फ 3 फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर है, इसका फायदा उठाते हुए गेंद को इस वक्त मिडल फील्डर के सिर के ऊपर से उछाल दिया। लंबर पर फील्डर जरूर मौजूद थे, उन्होंने काफी जीतों कोशिश की गेंद को सीमा रेखा के अंदर धकेलने की दौड़ करा, लेकिन नाम कामयाब। और इस चौके के साथ अब 2 balls 4 runs 3 for tie 4 for win। और निस्संदेह यहाँ पर अगर मैच टाई होता है तो टॉस के जरिए विजेता को निर्धारित किया जाएगा। तो इस वक्त द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स और समीर इस वक्त चौका प्राप्त करने के बाद काफी हद तक आत्मविश्वास प्राप्त कर चुका है। देखते हैं अगली गेंद पर वो किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाते हैं। 3 for tie 4 for win, 2 गेंदें बाकी और देखते हैं क्या होता है सतीश इन बचे हुए 2 गेंदों में। Well, Gopi, heartbeat is going high and 4 runs required for the victory. 2 balls remaining. Here we go. Decide the delivery. Right above the wicket, left it, just over the infield. Down to the apex cover. It's going to be your boundary. Yes, he does. Young friends Urva, they won that one dramatically. It's absolutely dramatically. And here is Samir becoming the hero for young friends Urva. This is what the beauty of the cricket is all about. This is the beauty of cricket is all about. The 2 back-to-back boundaries coming from the blade of Samir. Then what a match, Gopi. Absolutely unbelievable victory here for team young friends Urva. And Torpedoes Corner seems to be a little bit unlucky here that almost took matches in the hands. And I've already mentioned, Gopi, the cricket is a game of glorious uncertainty. This is a perfect example. Exactly, Satish. What a fantastic batting shown by Samir. 2 consecutive boundaries for young friends Urva, and he brought a memorable victory for his team. This is an outstanding performance. And Torpedoes Kada, after defeating a strong team in Mangalore, they become the strong contender for the title. But now they are knocked out of the tournament because of the fantastic batting performance from Arshad, and in the last over from Samir, they brought the memorable victory, thrilling victory with just 1 ball to spare. This is an outstanding match, magnificent match came to an end. What I am talking, Satish. Well, Gopi, but I want to say they appreciate this man, Arshad Bajal. If you see that everyone is celebrating, but he is just going towards the losing team side, just saying that all is over, man. That the match is definitely, the cricket is cricket, and winning and losing is a part of cricket. But this is what you need to see, that you need to appreciate the effort of Torpedoes Kana, because they tried their level best to win this match, but quite unfortunately they are lost the match, and now it's a time for announce the man of the match. But I'm not thinking about that name. Definitely the people will going to remember for a long time, and especially the young friends captain will going to remember this one. But I am really remembering that name, which is announced at 25,000 for finishing the match for Arshad Bajal. Why not he will going to give that same amount for the Samir? He's finished the match for his team, so he's definitely the man of the match here. So man of the match, which is goes to the man really changing the complexion of the game. As a little bit the new face in the young friends Urva, but he is just played a absolutely memorable innings for his team, and which is none other than Samir of young friends Urva, who judged as the man of the match for playing a match-winning knock for his team. ದಯಮಾಡಿ ಸಮೀರ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಸಮೀರ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So what a memorable victory, Gopi. This is what young friends Urva is all about. I'm not saying, Gopi, because because of the records what young friends has got, they got a capability of bouncing back. Well, now I think the Bashir, the manager, just hear my announcement and straight away announced the 5,000 rupees for Samir for finishing the match for his team. So man of the match, Samir, outstanding knock from him, and just
taking the advantage of the fielding restriction, and Kabir will go into present as man of the match. Along with that, 5,000 cash, which is announced by the Bashir, the manager of Young Friends for Samir, and the amount 5,000 will go into straight away transfer to his account with the GPay. So cashless transaction straight to the hands, straight to the account of Samir, the 5,000 cash. And yes, it's been fantastic match. What a great match. Just talking about Young Friends and Gopi, we are just talking about why the Young Friends are always a danger team, because the way that if you're not, they are not having enough strength in the team, but the one opportunity is given for the youngster. This is what we call the grabbing the opportunity, isn't it? And Samir is the young talented player, once again showing that yes, Young Friends are still, they got some good players in the side and they can make any upset in any big matches. बिल्कुल सतीश, तो जहां तक सवाल है यंग फ्रेंड्स हुआ, प्रमुख खिलाड़ियों के अनुपस्थिति में, एब्सेंस में उन्होंने इस श्रृंखला में 2-3 मैचेस खेले हैं और यहाँ पर इस मैच में भी उनके कई प्रमुख खिलाड़ियों ने हिस्सा नहीं लिया है, तो इसके बावजूद कई यंगस्टर्स को टीम में शामिल करते हुए एक बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए टॉर्पेडोज कान्हा जैसे बलाढ्य टीम को इस वक्त उन्होंने पराभव किया है, एक रोमांचक जीत उन्होंने दर्ज की है, खासकर समीर जैसे प्रतिभान्वित उभरते हुए खिलाड़ी जिन्होंने मैच के अंतिम ओवर 2 लगातार चौके झड़कर अपनी टीम को विजय दिलाए। और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स का प्रदर्शन अपने प्रमुख खिलाड़ियों के अनुपस्थिति में भी इस श्रृंखला में काफी बेहतर रहा है। तो देखते हैं यंग फ्रेंड्स आर थ्रू टू द फाइनल ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। अब देखते हैं द्वितीय सेमीफाइनल मैच जो इस वक्त शुरू होने जा रहा है आजाद काटीपल्ला और फ्रेंड्स बाला के बीच। इसमें से दूसरे फाइनलिस्ट के रूप में कौन सी टीम इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करती है। तो यहाँ पर मैच इस वक्त शुरू होने जा रहा है और इस वक्त देखते हैं इस द्वितीय सेमीफाइनल मैच का रिजल्ट, फलितांश क्या होता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे खुद मेरे साथ यानी गोपी के साथ जब यहाँ पर मैच की शुरुआत होगी। धन्यवाद, थैंक यू। So what a fantastic match ended, and Young Friends were through to the grand finale of this competition. And the second semi-final match in a local pool is now going to start between Azad the Katipalla versus Friends Bala. और Friends Bala इस वक्त पहले बल्लेबाजी करता हुआ और ಅಲ್ಲಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನದ 4 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ वॉलंटियर्स गमनिसಬೇಕು। इस बीच पहले गेंद लेकर तैयार, एक बार सही गेंद को खेल दिया इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन थ्रो पर यहाँ पर रिसीव नहीं कर पाए। जोगिम बड़ा दूसरा रन था लेकिन यशस्वीतम यहाँ पर बल्लेबाज पूर्ण करते हुए इन 2 रनों के साथ यहाँ पर रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है फ्रेंड्स बाला के लिए। तो आरंभिक बल्लेबाज वही बल्लेबाज गितेश और चेतन इस वक्त आरंभिक जोड़ी के रूप में मैदान पर उतर चुके हैं। सलमान गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। पहली गेंद पर गीतेश ने बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट के जरिए दूसरा रन यहाँ पर प्राप्त किया और अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। शाम के 5 बज चुके हैं और द्वितीय सेमीफाइनल मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत नजर चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है नजर स्पोर्ट्स क्लब 9th ब्लॉक अपने 20वें वर्ष का था। इन द सेलिब्रेशन ऑफ द 28th ईयर एक बेहतरीन प्रगति करते हुए से ढलते हुए शाम में भी। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिना तो पर विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बात विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन स्क्वायर ऑफ विकेट गेंद को इस वक्त पंच किया था। तो बैक फुट इस वक्त गीतेश ने एनफील्ड पावर प्ले का फायदा उठाते हुए एनफील्ड क्लियर करते हुए इस वक्त गेंद को इस वक्त उछाल दिया खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और खासकर गीतेश का जहां तक सवाल है इस श्रृंखला में पावर प्ले का भरपूर फायदा उन्होंने उठाया है पिछले मैचेस में और उस सफलता के सिलसिले को यहाँ भी इस द्वितीय सेमीफाइनल मैच में भी वो बरकरार रखते हुए दूसरे सेमीफाइनल मैच में भी वो बरकरार रखते हुए अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद गीतेश के लिए लेग से बाहर की और ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाह चुके और गेंद इस वक्त जब तक शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 more run added to the total और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर बिना किसी
किसी नुकसान के 7 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। तो गितेश ऑफ द स्ट्राइक हो चुके इस वक्त, चेतन सामना करने के लिए तैयार और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद सलमान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस वक्त रिवर्स शॉट डेलिकेट गेंद को खेला इस वक्त, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। निस्संदेह जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, कम से कम 40 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा फ्रेंड्स वालों को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर खड़ा करना है निर्धारित 6 ओवर में। और आजाद काटी पल्ला का जहां तक सवाल है, उन्हें इस वक्त 40 रनों के अंदर रोकना होगा फ्रेंड्स वाला के बल्लेबाजों को अगर उन्हें एक आसान सा लक्ष्य मिलना है तो इस बार गेंद को ड्राइव कर स्कोर ऑफ द विकेट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, पॉइंट और कवर पॉइंट के दरमियान गेंद को रोका गया फील्डर द्वारा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन के साथ अपना छोड़ बदलने का, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट स्वीप करना चाहा इस वक्त, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 9 रन्स ऑन द बोर्ड, येट टू लूज एनी विकेट। ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನವರಂಗ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಇವರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭರತ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನವರಂಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಭರತ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇವರಿಗೆ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಸಮೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಗದು ಬಹುಮಾನ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇಮ್ರಾನ್ ರಂತಲ್ಕ ಇವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮೀರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ರಂತಲ್ಕ ಇವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. इस बार गेंद को खेल दिया, सिलिमिट ऑन पर गेंद पहुंची और स्कोर यहाँ पर बल्लेबाज को मिला 1, 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 10 रन बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर शुरू हो चुका है और यहाँ पर 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार इमरान रंगतर का जिन्होंने घोषित किया इस वक्त समीर प्राप्त करते हुए मैच जिताने के लिए। इस बीच पहली गेंद अगली गेंद रन से नहीं मिलेगा. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೂ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ತಲಾ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಬಶೀರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಬಶೀರ್ ಅವರು ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೂ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ತಲಾ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಣ ಬೀಳಲಿದೆ. तो धन्यवादಗಳು. तो इस बार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर जायद इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का और 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस. और इस बीच गीतेश स्ट्राइक पर आ चुके हैं. जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है फेंस बाला का, तो इस वक्त गीतेश की उपस्थिति उनके लिए बेहद इस वक्त जरूरी है. और इस बीच गेंदबाज जायद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दूसरा ओवर पावर प्ले का इस वक्त उनकी पारी में चलता हुआ. दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया. गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा. क्लीन कलेक्शन लॉन्ग ऑन फील्डर द्वारा. और इससे पहले कि गेंद को फील्ड करके फील्डर थ्रो करे, बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल सके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. जायद अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार फुल गेंद थोड़ी सी टिप्पा खाती
हुई अंतिम क्षण में, और फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहता, और आखिरकार गेंद पर टकराने के बाद गेंद जब तक फील्ड और शॉर्ट फाइन लेग पर लेग बाय के रूप में 1 रन दोनों बल्लेबाज तोड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 14 रन बिना किसी नुकसान के, और फिर से एक बार जैद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करके खूबसूरती के साथ गेंद जाती हुई विकेट पर काफी लंबा था, फील्डर लगाते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़ा और यशस्वी तम्मा दूसरे रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। गैप को टिक करते हुए इस वक्त लंगोन और डीप मिड विकेट के बीच में से खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया था, और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 16 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस, और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त गीतेश के बल्ले से लगता हुआ, एक बार फिर से जैद का सामना करने के लिए तैयार, ये गेंद एक्शन से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 17 विदाउट लॉस, गुड प्रोग्रेसिंग हियर फॉर फेंस बाला, और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो जैद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज गीतेश इस वक्त सामना करते हुए, ये स्विंग्स द टू स्क्वायर, ही जस्ट गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। अगर थोड़ा सा गेंद को सीधा उछालते हैं तो निस्संदेह छक्का उनके पक्ष में आ सकता था, लेकिन इस बार गेंद को काफी स्कोरर उछाला था नेट्स के बाहर, रास्ते पर, रोड पर, तो इस वजह से बल्लेबाज को सिर्फ 1 रन यहां पर प्राप्त होते हुए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर, और कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 2 ओवर्स कंप्लीटेड, 18 ऑन द बोर्ड, इन फैक्ट 18 रन 2 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के। दे आर लुकिंग इन अ गुड सिचुएशन एट दिस सिचुएशन फॉर Fence Bala, and still in overall calculation it is going to be 4 overs remaining in their innings. और आज इस प्रतिष्ठित श्रृंखला नजर चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का दूसरा और अंतिम दिन का दूसरा अंतिम मैच है, यानी दूसरा सेमीफाइनल मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ। आज कई बेहतर मैचेस हमें यहाँ पर देखने को मिले मैंगलोर पूल में, और खासकर लोकल पूल का दूसरा मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ। तो यहाँ पर यंग फ्रेंड्स शुरू हुआ इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले में प्रवेश प्राप्त कर चुका है, टॉर्पेडोज काना को एक रोमांचक मुकाबले में हरा कर, और देखना यह है कि दूसरे फाइनलिस्ट के रूप में कौन सी टीम इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करती है, आजाद काटीपल्ला या फिर फ्रेंड्स बाड़ा। तो मुकाबला इस वक्त जारी है इस ढलते हुए शाम में, और गेंदबाज बसीत इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करते हुए चेतन, और ओवर की पहली गेंदबाजी की ये गेंद हल्के साथ टॉस गेंद को खेलते इस वक्त गेंद जाती हुई डीप विकेट पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, और दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 19 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 19 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर, और बासित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार, और ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला डीप मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर डीप मिड विकेट पर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 20 विदाउट लॉस, रन्स आर कमिंग क्वाइट इजीली नाउ फॉर द बैट्समैन ऑफ फ्रेंड्स बाला, एंड स्लोली एंड स्टडीली दिस पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप, और इस बीच रिवर्स शॉट फॉर फैंटास्टिक शॉट इनटू द गैप एज वेल, ही गेट्स अ सिंगल, इन फैक्ट दे आर लुकिंग फॉर द सेकंड बट वोंट गेट इट, एंड फाइनली दे आर सैटिस्फाइड विद अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 22 रनों पर, 21 रनों पर, 21 द स्कोर इन फैक्ट, and this is the 3rd over of their innings is now progressing here, और गेंदबाज इस वक्त बसीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गीतेश जो कि एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, स्टंप्स को कवर करते हुए लगभग उनके बैक लेग पर गेंद टकराने के बाद सीधे निकली शॉर्ट फाइन लेग पर, बल्ले का भीतरी किनारा टकराया था, इनसाइड एज ऑन द बैट एट द लास्ट मोमेंट, और 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस, और बसीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए
ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಮೀರ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮೀರ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ 474ನವರು 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಮೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. धन्यवादಗಳು सर. So back to this game and the 46th target 46 रनों का लक्ष्य ओवर में देखते हैं यहाँ पर आजाद काटीपल्ला के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते या नहीं और फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए 46 रन बनाने 6 ओवर में. तो उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त राज्य भाषा कन्नड़ में जनाब अब्दुल समद काटीपल्ला के साथ जब आजाद काटीपल्ला की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. ನಜರ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟ ಇದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಿಂದ ಆದ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ಹಾಗೂ ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಗೆಲುವಿನ ಕುದುರೆಗಳಾದ ಆಜಾದ್ ಯೂತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಂಡದ ಎದುರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ 36 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 45 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 46ರ ಸವಾಲನ್ನ ಆಜಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಆಜಾದ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಲಿಯಾಕತ್ ಹಾಗೂ ಹಕೀಂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಈ ಎರಡು ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಆಜಾದ್ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಕಳೆದ ವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ತನಕ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನಿರುವುದು 30 ನಿಮಿಷದ ಆಟ. ಆ 30 ನಿಮಿಷ ಆಜಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಬಾಳುವಂತ ಸಮಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ 2 ತಂಡಗಳು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಈ ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಪರಿಸರದ ತಂಡ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹ ಭಾತೃತ್ವವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ 2 ತಂಡಗಳಾಗಿವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ಹಾಗೂ ಆಜಾದ್ ಯೂತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. 1 ಓಟ ತೀರ್ಪುಗಾರ 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಹನ್ ಇಯಾಡಿ ಅದನ್ನ 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿ 2 ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಅದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಗೆ ಅದನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗಿತ್ತು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ.
ದಾವೂದ್ ASC ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾದವರು. ರಕೀಬ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದವರು. ಸಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಂದೂ ಜೊತೆ ಇರುವವರು. ಜಮೀರ್ ಜಿದ್ದಾ KSA ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು. ಕಾರ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರದ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದವರು. ಫಿರೋಜ್ KSA, ದಾವೂದ್ BMR, ಆಸಿಫ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ ಹಫೀಜ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ, ಚಾಯ್ಪತ್ತಿ ಮಂಗಳೂರು, ಟುಡೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್, ಜುನೈದ್ AP ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಅಹಮದ್ ಕಬೀರ್ ದುಬೈ, ರಹೀಂ ಅಬುದಾಬಿ, ಜಾವೀದ್ ದುಬೈ, ರಶೀದ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ರಿಯಾಜ್ BK ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಜ್ವಾನ್, ಕಬೀರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್, ಮನ್ಸೂರ್ KC 9th ಬ್ಲಾಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಪೈರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾದವರು. ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಪೈರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಸೆತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರದೆ 4 ಓಟಗಳು ಬಹುಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೀತೇಶ್, ಅನುಭವಿ ಗೀತೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟ, ಪ್ರಥಮ ಓಟ ಲಿಯಾಕತ್ ರವರ ಖಾತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 5 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಜಾದ್ ಯೂತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಡೆಗಾಗಿದೆ. ಗೀತೇಶ್, ಅನುಭವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಹಕೀಂ ರವರಿಗೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಕೀಂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತೋಡಾರ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಹಕೀಂ ರವರು ಕಾಟಿಪ್ಪಳ್ಳ 11 ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಆ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೀತೇಶ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಲಿಯಾಕತ್ ರವರ ಆಟ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. 2 ಓಟ. ರಾಜೇಶ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ರಾಜೇಶ್ 2 ಓಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಆ ರಾಜೇಶ್ ರವರಿಂದ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8, ಕೇವಲ 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಗೀತೇಶ್ ಲಿಯಾಕತ್ ರವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ. ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಗೀತೇಶ್, ದಂಡಿನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಲಿಯಾಕತ್. ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಇದು. ತಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿತ್ತು, ನೇರ ಗುರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು. 1 ಓಟ ಲಿಯಾಕತ್ ರವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭ ಆಜಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 36ರ ಮುಂದೆ 46 ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 9 ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಕೀಂ ಈ ಚೆಂಡನ್ನ ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೀತೇಶ್ ರವರದ್ದು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಆಟ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಟ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ 10 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪ್ಪಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 36-30 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿದರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ, ಟಿವಿಯ ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 47,000 ಜನ ಆ ಕಳೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಇದು ಹಗಲೊತ್ತು ನಡೆಯುವ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸತನವನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಾರ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ತೋಡಾರ್ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಾಟಿಪ್ಪಳ್ಳ 11 ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ತೋಡಾರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿ ಆರಂಭ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಖಂಡಿಸಿದ್ರು. 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅದು ಔಟೇ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ
ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಹಕೀಂ ತನ್ನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಹಕೀಂ. ಆದರೆ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಹಕೀಂ ಇಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಓಡಿ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಕೀಂ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ ಕಾರಣ ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ಗೆ, ಸೋತರೆ ಮನೆಗೆ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಗೆಲುವಿಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ದಾಟಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲಿಕೆಯ ಆಟ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಜಾದ್ ಯೂತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಒಂದು ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ. ಮಿಂಚಿನ ಓಟ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಓಟ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಮಾನಿಗಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೀಗ 12 ಇದೆ. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಕುದುರೆಗಳಾಗಿ ಮೆರೆದಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸವಾಲು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಔಟ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಜಾದ್. ತಡವರಿಸಿದರು ಲಿಯಾಕತ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಲಿಯಾಕತ್. ಆದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಿಯಾಕತ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಿಯಾಕತ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. 3 ಎಸೆತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅದೇ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಯಾಕತ್ ಅವರನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಯಾಕತ್ ಔಟ್ ಆದೊಡನೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಝೈದ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಝೈದ್ ಸಮಯಾಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವವರು. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಕರ್ಷಕ ದಾಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಝೈದ್ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಈ ಜೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಚುಕ್ಕಿ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. 9ರ ಮುಂದೆ 12 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಲಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಲಾ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಆಟ, ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಝೈದ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಝೈದ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಝೈದ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಝೈದ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಇದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓವರಿನ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಶಮೀರನ 2 ಬೌಂಡರಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡವನ್ನ ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಗೆಲುವಿನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಕೊಂಡ ಆ ಗೆಲುವನ್ನ ಆ ದವಡೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದ ಶಮೀರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 25,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ಶಮೀರ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಲಾ ಈಗಾಗಲೇ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರವರ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಖಾದರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವವರು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಈ ಖಾದರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಎದುರು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವಿರುವ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ.
ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಾಲ ತಂಡದ ಅಕ್ಷಯ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರವರು ಈ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರವರೇ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಲಿದ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವೇ ಸರಿ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಕಾದರ್ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ವೇದಿಕೆ ತುದಿಯಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಹೊರತ, ಒಂದು ಓಟ ಕಾದರ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದರ್ 2 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ 15. ಕೇವಲ 5 ಓಟವನ್ನ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಬಂದಿದೆ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಲಿಯಾಕತ್ ಹಾಗೂ ಹಕೀಂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಹಿದ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಜಾದ್ ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 31 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 31 ಬೇಕಾಗಿದೆ 24 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಆ ಓಟ, ಆ ನೋಟ ಈ 2 ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಕುತೂಹಲ ಬರಬಹುದು. 24 ಮುಂದೆ 31 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾದರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. 24 ಎಸೆತ, 31 ಓಟ. ಗೀತೇಶ್ ತನ್ನ ಕೋಟಾದ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಕಾದರ್ ರವರಿಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಗೀತೇಶ್, ಅನುಭವಿ ಗೀತೇಶ್, ಈ ಮೈದಾನದ ಕಲ್ಲಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಗೀತೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟ ಕಾದರ್ ಅವರಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ. 1ರೊಂದಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ. 16 ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಫೋಟಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ಕೂಡ ಈ ಸಲ್ಮಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. 17 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೀತೇಶ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುರುಡು ಕಾಂಚನ ಕುಣಿತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್. 2ರೊಂದಿಗೆ 19 ಬಂದಿದೆ. 4 ಎಸೆತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 4 ಬಂದಿದೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್ ರವರ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಜಾದ್ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೋಡಿ, ಭಲೇ ಜೋಡಿ ಇದು ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೀತೇಶ್ 5ನೇ ಬಾರಿ ವೇದಿಕೆ ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಉದುರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 20 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 20 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಮನ್ಸೂರ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಜಾದ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ. KYC ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಎಂಬ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ಮನ್ಸೂರ್. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಈ ಮನ್ಸೂರ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಆ ಜಯವನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಹವ್ಯಾಸ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ ಜನಸಾಗರದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ನಜರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಾದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೆಲುವಿನ ಕುದುರೆಗಳು ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ್ದು ಆಜಾದ್ ಯೂತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಗೀತೇಶ್ 5ನೇ ಬಾರಿ ಎತ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮನ್ಸೂರ್ ರವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೋಹನ್ ಅಯ್ಯಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ತುದಿಯಿಂದ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಇದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿ ಆಟ ಇದು. ಚೇತನ್ ಚೆಂಡಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಆ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 21 ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗೀತೇಶ್ ಓಡಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಓಟ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಆಟ. ಆ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 3 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 22 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 24 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಓರ್ವ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ. ಈ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 3 ಓವರಿನ ಆಟದ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಲು ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Thank you very much, Abdul Samad Kadipalla. And match is still in balance. 24 required from 18 balls. So first ball, appeal for leg before he gets flum. Absolutely flum in front of wicket. No doubt at all. Ball pitched in a line. The batter wanted to play that one across the line of the delivery. Once the ball will go into miss the bat, and certainly the front foot is definitely right in front of the middle stump, and umpire Pushparaj has got no hesitation to raise his finger. The vital breakthrough here for the team Friends Bala and team Azad Katipalla have to get one good over if they wanted to back in the game. But losing wicket and getting one new player into the crease means opportunity for the fielding team to tighten up the screws. So already the Young Friends Urva, they are qualified for the mega final. The winner of this match will going to take Young Friends Urva in the mega final of this prestigious Azad Champions Trophy 2024, which is proudly organized by Nazar Sports Club. Nazar Sports Club as celebrating their 20th anniversary. So what a fantastic tournament. So far it's been outstanding organizing here by the organizer Nazar 9th block. Definitely this tournament will go into remember for a long time because of that discipline and systematically organized cricket tournament. First ball, next ball, place it straight to the fielder, opportunity created over the about, and throw which is not really having that much of enough power so that both the batters complete that quick single. With that quick single, score moves on to 23 on the board for the loss of 5 wickets in fact is back into pavilion now. Bowler Shrikant, one of the wicket taking and a good bowler for the side of Friends Bala, will go into continue right arm over the wicket to the right hand batsman Mansoor. Lovely delivery, the batsman wicket keeper Haman so excited, but I don't know what for the excitement it is. For the caught behind maybe, and yes, but no damage done from umpire square umpire also. It is just an excitement rather than confidence from the wicketkeeper behind the stump. Aman is a very athletic player and very exciting player as well because of that involvement. What they are saying, that because of that involvement, the player reacting like that. It's nothing wrong with that, but wicketkeeper always looks for wicket. He is the one encouraging the bowler. Again the bowler bowling away from us, right arm over the wicket. Ball second got inside edge of the bat and ball went towards a short fine leg region. One more single been added total with that single score, but moves on to 24 on the board. 24 on the board. Again the bowler right arm over the wicket. Bounce this time, swings it hard, and he got the distance. This is going to be a turning point of the match. What a magnificent struck coming from the blade of Shafiq. He just takes the match away from the opposition. The one proper cricketing stroke. It's good enough for the team to come back in the game. Scoreboard straight away jumps into 30 on the board. That means another 16 required from 13 balls. Well.
what we are just talking about the previous semi-final, which is a nail-biting finish, and this semi-final also inching towards the nail-biting finish, and definitely this is going to be a good match again for the very good crowd here. Just like if a Gopi is in the commentary, definitely we'll go to tell this is going to be a Paisa Vasool match. The two matches definitely going to be a Paisa Vasool match here for the spectators, because now scenario little bit changing here. 16 required from 13 balls. Driven. Approaching. Chance here for created for the catch. And is gone. Shafi making a mistake. Hitting 1-6 is not good enough. After hitting 6, taking your team into victory, that will be the strength of the batter. The ability, the potential will go into judge after that 6, how well he managed to take his team into the victory. But Shafi, after getting 6, he wanted one more, but the bowler always clever, isn't it? After bowling that outside the line of leg stump, then bowler will always thinking about what kind of delivery is required for the next delivery. That time batsman have to be very careful. The bowler certainly will go on to bowl a very good delivery, but this time batsman maybe the bat which is stuck in that pitch, and that's why it couldn't manage to get that timing which is looking for. Yes, nothing much worried about, because everyone thinking about only the Mangalore team will go to getting some announcement as a cash prize, but here is for the local team also there will be announcement. Of course, the supporter of Azad Katipalla, Masood Katipalla, announcing 5,000 rupees for Azad Katipalla if they manage to enter into the final, if they manage to win this match. But still is only poised, 12 balls remaining, 16 runs required for the victory. And Prasad is the bowler, the leg spinner brought into attack. It is going to be absolutely a good contest. Full toss, lofted, high up in there, but ball will going to travel into the fence. No, he saved that one. The going back to second chance of an out, and he missed it. Now, umpire will going to wait for the decision. This time they're going for the third run. The run out which is taken place here. Now, umpire will going to take here the decision. Whether that the ball which is saved, that whether the 6 which is saved by the fielder or not. This is really going to be very interesting. If it is 6, is going to be a turning point, one more turning point of this match. The full toss delivery there from Prasad. The feeling the pressure. Now the third umpire will going to refer. Third umpire will going to give. And if it is a save, that will go into one more big save. And the point of view of team fence ball is concerned. Well, what a fantastic match is in progress. Absolutely. The match is which is not yet over, and even the decision which is not yet over. And we can see the tense which is mounting up. Not only in that the fielding team, but even that the 5 batting team also, they are keen to see that the decision, what could be the decision here. Whether it's going to be a 6, whether it is saved or not. This is going to be very interesting. Now, I think if it is not 6, they completed 2 runs. They're looking for the third run there. Maybe that's a run out which has taken place, or no run out, because already they are referred for the third umpire, because the confusion is there, and that time they're looking for the third run. So there's no question of getting out in that particular delivery. The run will give 2 runs if the 6 which is saved. Wait and see. What a fantastic match is in progress. Absolutely, it's going to be the memorable day for the cricket lovers to watch this fantastic match. The time is getting out. Time is exactly 6 o'clock, and one more match need to be played. That is a mega final. We are just having
Afraid of definitely it's going to be reduced. The number of over will go into reduced for the finals if the time will not get enough for the mega final. And what a fantastic scenario we can see here in this very good cricket ground. And so now it's a time to that yes, in this particular time need to announce some supporters, sponsors for wishing success for this prestigious cricket tournament. Inayat Ali, General Secretary of KPCC, Dawood AAC Engineering, Rakib of Bismillah Scrap, Safa, the President of Nazar, Zamir Zida KSA, Khar Paradise Rizwan, Firoz KSA, Dawood BMR, Asif Saudi Arabia, Protec, the proprietor of his Katipalla, Chaipati, the Mangrove, Today Sports Club 9th Block, Zunaid AP Transport, Hamad Kabir Dubai. The sixth signal coming from the third umpire. Maybe the fielder touches that line and then he got a jump. That's why umpire has got evidence enough to call that a 6, and 6 will going to change the complexion of the game. 10 required from 11 balls. What a match. Just I want to see which batsman hits the 6. Mansoor is hitting that 6. Now, if Mansoor will going to get one more 6, the president of KYC, Sharif, announcing ₹1,000 for Mansoor. But more than 6, they wanted a 10 runs in 11 balls. But because already one batsman after hitting the 6, he back into pavilion. Now trying for one more 6, definitely opportunity for the fielding team to get the wicket here. Again, one more single been added to it. Now both the batters are realizing that just an sensible batting required in the middle. Scoreboard Namuzan to 37 on the board, and delivers remaining 10 runs required 8. 9 repercussion. Again they're going for the single, quick single. With the addition of that single, again the scoreboard is moving towards 38 on the board. Target is 46. That means 8 more runs required for the victory in 9 deliveries. Prasad, right a moment wicket. This time straight to the hands of fielder. Chance of run out is created there at extra cover, and it's going to be dotted delivery. Prasad trying his level best to keep this match very tight now. After that he conceded 6. Now 8 balls remaining. 8 runs required for the victory. The batter is on strike. Mansoor locked it. Straight to the hands of surface man of the hands. Once again, match is slowly turning. What a magnificent piece of fielding there by Rajesh. Once again is showing his excellence in the mid wicket. The batsman Mansoor wanted to get the one more big shot, but couldn't manage to get that distance. The ball went straight to the hands of mid wicket. The wicket number 7, which is back into pavilion. 7 wickets back into pavilion. Still match is not yet over. 3 wickets remaining. Now I want to see how many deliveries remaining. 7 balls remaining. Now 8 runs required for the victory. 7 for the tie, 8 for the victory. I request that the batsman please come to the crease immediately because we have a shortage of time. ಓಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಓಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. Yes, warm up is very much important, and the well built personality the new batters is coming into the middle there. Afnan. Now 7 balls remaining, 8 runs required for the victory. Driven. Oh, that will going to be a great miss. That will going to be a big miss by the Srikanth. The day which is not belongs to Srikanth because he is in under pressure. He is in under pressure. Now last over remaining. 7 runs required for the victory. What a fantastic match. If the match will going to end it in a tie, then it's going to be a
toss. Toss will going to decide the winner. What a match. Now Aman got a ball in his hand, got a responsibility of restricting 7 runs in a 6 ball. But Aman got a ball in his hand, but I want to see the batter who got a bat in hand in the middle. It's Zunaid as well as Afnan. And well, wait and see. Will it going to be a bowler or will it going to be a batter? It's going to be a fantastic scenario again in this semi-final. Azad Khatipalla against team of Friends Bala, one of the most reputed teams in this Krishnapura. The timed out, the dangerous of timed out we already witnessed in the previous semi-final. Will it going to be one more turning point of this match, bringing one fielder inside the ring? Already Torpedoes Khana paid the more penalties for that, and now team of Friends Bala bringing one fielder inside the ring. Maybe it benefits because 70 got, not like in the previous match where it is a 4 required from 2 balls. Now it's a 7 required from 6 ball. Right arm over wicket. Aman Das driven that one now. Again right in the wicket area. Down to lot of 40 performance. What I am talking about. Same place. The same place where Samir hits a boundary in the previous match in the semi-final, and man who hitting a boundary this time is Afnan. And definitely this long off region, Samad Khatipalla, this is going to be a very dangerous place. After seeing that the previous match, the captain of Friends Bala need to say that we need to keep one fielder in the region, because in the previous match the team Young Friends won the match by hitting the boundary in that area, the same area. Well, now it's a 3 required from 5 balls. Match is not yet over. 5 balls remaining. Aman will going to try his level best to keep the batsman quiet. Here is again the bowler right arm over the wicket. Driven up his sleeve, straight to the fielder, chance of run out, coming here, and it looks like the umpire will go in to refer for the third umpire. Well, whenever there is a boundary coming, wickets are falling. Whenever there is a 6 coming, very next ball is the wicket is falling here. The all is happening here in this cricket. The 8th wicket is back into pavilion. This is going to be very crucial. If the run out will going to take on place, if the third umpire will going to give this out, then it's going to be wicket number 8 is back into pavilion. That might be a little bit under pressure situation for the chasing team, because losing one more wicket keeps the batsman very quiet. 7 wickets already gone. If it is a run out, it's going to be 8 wickets. So out signal coming from umpire. That means they lost 8 wicket. So Bashit is not playing, so that only 1 wicket remaining. Yes, this is what cricket is all about. My goodness, can you believe this? 4 balls, 3 runs required for the victory, but the Friends Bala is not really thinking about that 3 runs. They are thinking about that 1 wicket. If they wanted to get, if they manage to get that 1 wicket, then they will go into the winner. But at the same time, team Azad Khatipalla, they desperately wanted to get that 3 runs. 1 single delivery is good enough for Friends Bala. The wicket taking delivery is good enough for them to win the match, and sensible batting which is required now from the juice batter of team Azad Khatipalla to win this match. What a fantastic match is in progress. Hafiz is the batter. The pressure is mounting up. For every runs there will be a 500 rupees. Masood announcing for Azad Khatipalla. Here we go. 3 ball. Again they're going for the single, chance of run out, and he missed it. Now 3 balls remaining, 2 runs required for the wicket. For the notice of the fielding team, the 1 wicket still remaining. It's not a 9 wicket, it's a 9 wicket, because the injured player is ready to play. The injured player is ready to play. That means it's not a good news here for Friends Bala, because they wanted to restrict that 3
2 runs from 3 balls. 2 runs required from 3 balls. Well, yes, match is not yet over. Every run 500 means already 500 rupees came into the pocket of Afnan. Not Afnan, it's Zunaid who got picked up was single run and he got a 500 rupees. Now up is time to get a 500 rupees. Or it is going to be Aman. Aman will go into try. 3 balls, 2 runs required for the victory, 1 for the tie, 2 for the victory, 3 balls remaining. Here we go. Right over the wicket, driven, straight to the hands of fielder. They want to run, they won't get. They won't get because ball went straight to the hands of short mid off. Now pressure is on. 2 balls remaining, 2 runs required for the victory. What a match. What a magnificent match we are witnessing here. Hafiz is a batter wanted to get a single run to get this match into tie. Afwan wanted to get 2 very good deliveries to win the match. Again bowler bowling right arm over the wicket. Afman balls, pushes, runs, very good thinking. The very good thinking match. The scores are level. Scores are level now. 1 run required from 1 ball. What a match. If you see there's the innings here, the 2 sixes and 1 boundary really changing the complexion of this game. Now 1 ball, 1 run required for the victory. The batter into strike now, Zunaid. If the match will going to end it in a tie, the winner will going to decide it by toss. Then final will be of 4 overs. Here is a decider delivery. 1 ball, 1 run required. Aman balls, left it, straight to the fielder. Chance of run out, and his match is ended in a time. My wait for the umpire signal. Out pitch is given by the umpire. The match is ended in a tie. My goodness, what a match! What a match! Afman is little bit correction. The bowler Aman is holding his now in this last over, and he's managed to tie the match. The captain of team Fensbala as well as the captain of Azad Katipala. Quickly, I request you to come to the middle of the pitch for the tossing ceremony. Well, the prediction is on. Abdul Samad Katipalla, what your prediction? I don't know. And yes, will it going to be a Bala? Will it going to be a Azad Katipalla? 50-50. That is Britannia 50-50. Yes. Oh my goodness, it's going to be a very interesting year. And Gitesh will going to try for the luck. Here is not effort is required. Here is only the luck which is going to be the key factor. How much luck the captains will going to have? Will it going to be captain of Azad Katipalla? Khadar, the captain of Azad Katipalla. Gitesh, the captain of Fensbala. Toss is going on here, and the toss which is on by Fensbala. The Fensbala entering into the mega final. This is what the luck is all about. The captain of Fensbala winning the toss. The celebration is on, and unfortunately Azad Katipalla, they really fought hard to win this match, but the luck is not in their favor. That's why always I'm mentioning Samad Katipalla, the luck fundamental ingredients in the success. They needed to have some kind of luck which is badly required for any team
and that luck which is goes into Friends Bala, and now it's a mega final will be going between Young Friends Urva versus Friends Bala. Congratulations Friends Bala, hard luck team Azad Katipala. They played a very good game of cricket. They lost the match but they won the heart of cricket lovers, and yes, now it's into the mega final. The team Young Friends Urva takes on Friends Bala in the mega final. The match will be off. I want to recount from how many overs. Umpires will going to decide the number of overs by seeing the condition of the light. Please note, this is not addition of the umpires and this is addition of the organizers, that the match will be of 4 overs. The match will be of 4 hours. Please note, Young Friends Urva as well as that team Friends Bala. The final will be of 4 hours. Please cooperate with us because you are the one. They need to complete that 4 hours very quickly. The fielding team have to complete your 4 hours quickly because I think Young Friends Urva they fielding first and they need to complete their 4 hours very quickly. And yes, the man of the match of the previous semi-final will go into present in the mega final. Please note, after that mega final we'll go into present that man of the match of the second semi-final. Gitesh is just as a man of the match in the second semi-final. Time to change in commentary box and time to ask Gopi to take over the microphone in our national language. Indeed, thank you. Dhanyawad Satish. So what a fantastic match ended just short while ago, which won by Friends Bala by toss against Azad Kadipala, and with that victory they are through to the grand finale of this competition. Final match will be of 3 overs is going to play, and the final match, the final clash for the title, prestigious title of Nazar Champions Trophy 2024, which proudly presented by Nazar Sports Club 9th Block for their 20th anniversary, and the battle for the title is now going to begin between Young Friends Urva versus Friends Bala, and Young Friends Urva are now fielding. 3 overs per side to be played, and the first ball of the match is now coming up. Gitesh, the bowler, Gitesh, the batsman, and the bowler Sean Nawaz starts the fresh proceedings, and the first ball of the match is now coming up. 3 overs per side to be played, and the first ball of the match is now coming up. It's already 6:20 in the evening, and the first ball Sean Nawaz bowls right arm over the wicket to the right-handed batsman Gitesh. Pelican after the pass, go to the yard, get look healthy as well. गेंद में विड्थ था और इस विड्थ को कबूल करते हुए स्कोर ऑफ द विकेट गेट को स्कूप कर दिया खूबसूरती के साथ। गीतेश ने पकड़ा था सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, तो इस चौके के साथ गीतेश अपना खाता खोल चुका है और फ्रेंड्स बाला का खाता यहां पर खुल चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के, और पहला ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। तो
एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए शाहनवाज गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज गीतेश के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव कर दिया मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती है। एक बार फिर से फील्डर वहां पर मौजूद है। सेकंड रन इज कमिंग ट्रबल इफ द थ्रो वाज एक्यूरेट एट द लास्ट में स्लाइड बिट ऑफ अ स्लोवर by the fielder at the deep mid wicket, and because of that the batsman come back for the second run very safely in the end. Couple of runs added to the total, 6 without loss in the first over. The grand finale of this prestigious cricket tournament, Nazar Champions Trophy 2024 is now progressing here. और दर्शकों से इस वक्त खचाखच मैदान इस वक्त भर चुका है, एब्सोल्युटली जम पैक स्टेडियम और निस्संदेह बेहतरीन ग्रैंड फिनाले मैच यहाँ पर खेला जाता है। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाज किया गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवर। आई थिंक द बॉल जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर सिग्नल। बेहतरीन गेंद थी, एक्सपोजिंग द विकेट होते हुए गेंद को इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट उछालना चाहता गीतेश ने। इस वक्त बातचीत जारी है तो बोल्ड आउट के लिए इस वक्त अपील करते हुए और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है। इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर एट दिस सिचुएशन। तो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है बोल्ड आउट के लिए और देखना यह कि गेंद स्टंप्स पर टकराई थी या नहीं, लेकिन बेहतरीन गेंद थी इस वक्त शाहनवाज की और आखिरकार यहां पर देखना है कि गीतेश इस गेंद पर बचते हैं या नहीं। तो शाम का वक्त 6:22 यहां पर बच चुके हैं। लगभग मैदान पर अंधेरा सा छाता हुआ, लेकिन दर्शकों का जोश उत्साह कहना पड़ेगा अभी भी उसी हद में बरकरार और इस नजर चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शानदार मेगा फाइनल मैच यहां पर प्रगति पर 3 ओवर प्रति पारी जो कि खेले जाएंगे और इस वक्त इंतजार है तीसरे अंपायर के निर्णय का। तो निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, पिछले रविवार को ये बेहतरीन शानदार क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर शुरू हुई थी और आज इस श्रृंखला का क्लाइमैक्स यहाँ पर गुजरता हुआ और निश्चित रूप से यहाँ पर इस श्रृंखला का प्रतिष्ठित खिताब अर्जित करने के लिए यहाँ पर इस वक्त मुकाबला जारी है। यंग फ्रेंड्स उरुआ और फ्रेंड्स बाला के बीच, तो इंतजार है इस वक्त तीसरे अंपायर का और यहाँ पर नॉट इज द कॉल और यहां पर बल्लेबाज बच चुके हैं। तो इस वक्त स्कोर इस वक्त रुक चुका है, कुल मिलाकर 6 रनों पर गेंदबाज की गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी और गेंद इस वक्त खेलने के प्रयास में ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाया, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के 7 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और गेंदबाज शाहनवाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त सामना करते हुए चेतन और इस बीच शाहनवाज अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। चेतन के लिए यह गेंद इस वक्त चेतन के लिए आफ्टर टॉस के इस वक्त मिड ऑन पर गेंद पहुंची और इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका है चेतन का। गेंद को स्ट्रोक को हल्के से चेक किया था इस वक्त और गेंद इस वक्त दुर्भाग्यवश हवा में उछली और शॉट मिड ऑन और मिड विकेट के बीच जो फील्डर थे सीधे गेंद उनके हाथों में पहुंचे और इसी के साथ यहां पर चेतन का विकेट गिर चुका है। 7 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है। 5 गेंदें कुल मिलाकर उनकी पारी में फेंकी जा चुकी है। अब कुल मिलाकर 13 गेंदें और बाकी हर्षित इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और जो कि मैदान पर इस वक्त अंधेरा सा छाता हुआ, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीमों के खिलाड़ियों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द यहां पर आगे बढ़ाएं। और जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, तो हर्षित का आगमन यहां पर होता हुआ और शाहनवाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए कुल मिलाकर 13 गेंदें अब उनकी पारी में फेंके जाने और बाकी। और हर्षित इस वक्त
सामना करने के लिए तैयार। और मैदान पर जो बिजली के खंभे हैं उसकी बत्तियां इस वक्त जल चुके हैं, लाइट्स इस वक्त ऑन हो चुके हैं। और इस बीच इस ओवर में अंतिम बादशाह नवाज की गेंद हर्षित के लिए, गेंद को स्वीप कर दी इस वक्त शॉट स्क्वायर की दिशा में, गेंद पहुंचे 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 8 runs on the board, 1 wicket lost and still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in Fence Bala's innings। तो कम से कम 20 रनों के लक्ष्य 20 रनों के स्कोर तक इस वक्त पहुंचना होगा फेंस बाला के बल्लेबाजों को। इन हालातों में अगर एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो, क्योंकि यंग फ्रेंड्स के पास जो बलाढ्य बल्लेबाजी का लाइनअप है, खासकर अरशद और संतोष जैसे बल्लेबाज मौजूद है, उनको नियंत्रण में प्राप्त करना तो यहां पर कम से कम 20 रन बनाने होंगे या फिर उससे ज्यादा स्कोर यहां पर खड़ा करना होगा उनके निर्धारित 3 ओवर में। तो अरशद इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामना करते हुए इस वक्त हर्षित और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त अरशद तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हर्षित इस वक्त सामना करते हैं। फर्स्ट बॉल कम्स फ्रॉम हर्षद, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बाउल्स। ये गेंद एक बार गेंद को ड्राइव किया लेकिन जगह नहीं बना पाया और गेंद सीधे पहुंचे बैक टू द बॉलर की दिशा में। बेहतर गेंद थी, मिडिल ऑफ स्टंप से अंदर की ओर आती हुई गेंद और आखिरकार गेंद को ठीक तरह से खेलने में सफल और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गया स्वयं गेंदबाज अरशद द्वारा। फिर से एक बार अरशद गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस वक्त अर्चित के लिए स्वीप किया, इस वक्त खूबसूरती के साथ गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर गेंद, वहां पर जब तक संतोष मंटोल फील्ड बल्लेबाज के बाद दूसरे रन यहां पर शायद पूर्ण कर चुके हैं। जी हां, लेकिन यहां पर इशारा हो चुका है 1 शॉट का, तो सिर्फ 1 रन वहां पर जोड़े जाएंगे और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर था, लेकिन आखिरकार बल्लेबाज क्रीज को बिना छुए दौड़े थे और इस वजह से सिर्फ एकमात्र रन उनके खाते में जोड़ दिया जाएगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 9 रन। साइड टोटल 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। अंपायर इस वक्त विकेटों को सही करते हुए और एक बार फिर से खेल यहां पर आगे बढ़ता हुआ। अरशद इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। हर्षित इस वक्त सामना करते हुए और अरशद हर्षित के लिए बाएं हाथ राउंड द विकेट अपनी ओर की अगली गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। ये गेंद इस वक्त गेंद तो खेल दिया इन द एयर, लेकिन गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए वाइड मिड ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर। स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू डबल फिगर्स नाउ, दैट मींस ऑन 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। व्हाट अ फैंटास्टिक ग्रैंड फिनाले मैच ऑफ दिस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। अरशद एक बार फिर से तैयार, इस बार गीता इसके लिए गेंद इस वक्त रिवर्स शॉट खेला इम्प्रोवाइजेशन के जरिए, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। 11 for the loss of 1 wicket, just 3 runs conceded by the Arshad in this over, and this is turning out to be a good over so far in young friends Urwa's point of view। और इस बीच अरशद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद उछाला खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर वापस जी गई, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। हर्षित के बल्ले से यह छक्का लग चुका है, absolutely fantastic strike from the bat of Harshit। He just caught that one right from the middle of the bat and loaded that one in a style over long fence for a massive one। This is a magnificent strike और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त हर्षित के बल्ले से लगता हुआ। हालांकि लंबा पर फील्डर जरूर मौजूद थे, उन्होंने जीत और कोशिश जरूर की, लेकिन गेंद को यहां पर लपक नहीं पाए और गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलती हुई लंबा सीमा रेखा को पार कर गई छक्के के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक हर्षित के बल्ले से लगता हुआ। अंतिम बार इस ओवर में हर्षद गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज हर्षित के लिए और हर्षित इस वक्त छक्का प्राप्त करने के बाद काफी आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए। ये गेंद बेहतर गेंदबाजी, गेंद विकेट कीपर चुके 1 रन मिलेगा, 1 रन एडेड टू द टोटल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 2 overs completed, 10 runs came from this over and because of this over now Fence Bala are now looking in a good situation। 18 runs they managed to score for losing 1 wicket after completion of 2 overs and now just 1 over left in overall calculation इन देयर इनिंग्स। और जहां तक सवाल है इस वक्त इस अंतिम ओवर का, तो देखते हैं यहां पर इस अंतिम ओवर में कौन सा गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हैं। शायद यहां पर गेंदबाजी शुरू करते हुए संतोष जो कि अत्यंत अनुभवी गेंदबाज है यहां पर और वो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करेंगे और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज
इस वक्त हर्षित जो यंग फ्रेंड्स रुआ के जो कि मुख्य मालक है तिलक, वो भी इस मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए, और ओवर की पहली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। पहली बार इस श्रृंखला में संतोष गेंदबाजी करते हुए स्विंग किया, इस वक्त विकेट पर गेंद जाती हुई, वहां पर फील्डर शायद मौजूद नहीं है और गेंद सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुकी है यहाँ पर 4 रनों के लिए। स्वीप शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद को थोड़ा सा खेला स्ट्राइकरली, और ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट लीनिंग फॉर दैट एट द लास्ट मोमेंट, हिट दैट वन pretty hard into the gap between wide long on and deep mid wicket, and finally he's got a boundary for that. Fantastic struck came from the bat of हर्षित, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 22 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और संतोष जो कि इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में पहली बार इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और यहाँ पर चौके के साथ उनका स्वागत किया बल्लेबाज हर्षित ने। और इस बीच फिर से एक बार संतोष तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली परफेक्ट लेग कटर, धीमी लेग कटर, स्लोअर लेग कटर गेंद थी, और इस गेंद को ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे हर्षित, चूंकि इस वक्त और धीमेपन को समझ नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 22 रनों पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। गेंदबाज की गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, एंड जस्ट बिहाइंड द स्टंप्स अर्शद मेकिंग ऑल द वर्क्स। तो फ्लाइट गेंद पर चकमा आ गए, गेंद को उछालना चाहते थे लेकिन यहाँ पर पूरी तरह पीट हो गए और अर्शद अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। तो अर्शद की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है। जहां तक अर्शद का सवाल है, इस वक्त 14 रन उन्होंने बनाए, स्कोर्ड 14 वैल्यूएबल रन्स इनटू हिज क्रेडिट, इंक्लूडिंग 1 मैसिव 6 and 1 boundary, and after being playing a fine knock for their side, he is back into pavilion, and now Friends Bala are now losing their second wicket. It's 22 for 2 with just 2 balls left in their innings. नए बल्लेबाज, न्यू बैट्समैन, नंबर 4 बैट्समैन is now comes out to the middle. अमन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है, और संतोष इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए, लॉन्ग ऑफ फील्डर को थोड़ा सा वाइडर इस वक्त तैनात किया गया है, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज संतोष तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर, फैंटास्टिक कमबैक, एंड दिस टाइम रन आउट विल हैपन एट द नॉन स्ट्राइकर एंड। तो चौका प्रदान करने के बाद 3 बेहतर गेंदें यहां पर संतोष ने फेंकी, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली कमबैक मेड बाय द बॉलर। दिस टाइम जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड अंपायर, लेट्स सी व्हाट द थर्ड अंपायर डिसीजन। तो इस वक्त यंग फ्रेंड्स रुआ की बेहतरीन तरीके से फाइनल पहुंचने के कारण विंकप पुजारी जो कि बंटवाल के शुभकामनाएं उन्होंने भेजी है यंग फ्रेंड्स रुआ की सफलता के लिए, श्रृंखला के लिए। और यहाँ पर कुल मिलाकर गेंदे बाकी हैं अब एक, और इस बार ऑफकोर्स द फिंगर, थर्ड अंपायर डिसीजन केम एंड 1 more wicket fallen, and now just the last ball remaining, and the score is 22 now for the loss of 3 wicket, and fantastic comeback made by the bowler Santosh after being conceding a boundary from Harshit. He come back very well in the next 3 deliveries, and he bowled 3 consecutive dot balls, and he is back on track now, and the last ball of the innings is now coming up. Santosh गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हैं, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, न्यू बैट्समैन राजेश इज नाउ गोइंग टू फेस द फाइनल डिलीवरी ऑफ द इनिंग्स। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद छूटे, बेहतरीन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, 4 dot balls in a row, and a fantastic finish for Santosh in the final over, and the innings is up, and the Friends Bala finished with 22 now in the stipulated 3 overs, and now the target for young Friends was 23 to lift the prestigious Nazar Champions Trophy 2024 title. So 23 the target in 3 overs, and as far as the required run rate is concerned, exactly 7.66 run per over they have to score for victory. 23 in the stipulated 18 deliveries with the help of 10 wickets. They have to score. The present equation shows for them to lift the prestigious Nazar Champions 2024 title, and let's see can they read the target or not. तो सतीश भाई आज अंतिम बार आपको माइक्रोफोन पर बुलाते हैं। 23 रनों का लक्ष्य, और अंतिम ओवर में जब दूसरे ओवर में हर्षित ने छक्का लगाया तो तीसरे ओवर में संतोष की गेंद पर एक बार फिर से चौका लगाया हर्षित, तब ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि 30 रनों तक यहाँ पर पहुंच सकता है, लेकिन उसके बाद 4 बेहतर गेंदें संतोष बंटवाल माफ कीजिए संतोष जप्पू ने फेंकी, और आखिरकार 22 रनों पर रोक कर रखा। 23 रनों का लक्ष्य, और जहां तक सवाल है यंग फ्रेंड्स के 23 रनों के लक्ष्य पर पहुंचेगा, तो उनके आरंभिक जोड़ी पर इस वक्त सारी उम्मीदें निर्भर है। संतोष
बल्टवाल और अरशद बजाल जो कि आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर उतरेंगे, और वो अगर कम से कम 2 ओवर तक टिकते हैं तो यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए लक्ष्य यहाँ पर आसान हो सकता है। और जहां तक सवाल है फ्रेंच बाला का, तो इन दोनों विकेटों को उन्हें जल्द से जल्द उखाड़ना होगा, खासकर पहले ओवर में अगर उखाड़ते हैं तो इनके लिए बेहतर होगा। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस नजर चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति कर चुके हैं नजर स्पोर्ट्स क्लब 9th ब्लॉक अपने 20वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ द 28th ईयर, द लास्ट सेशन ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, और एक बेहतरीन क्रिकेट हम इस श्रृंखला के अंतिम पारी में यहां पर देखने को मिलेगा। माइक्रोफोन पर आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Well, exactly, Gopi, just talking about the target, 23 is the target. So welcome back. The first wicket is back into pavilion, and danger man Arshad Bajal is back into pavilion with a beauty of delivery from Gitesh. Is balled on the middle and leg stump, and batsman wanted to get that one in the onside region, misses the line completely. Then finding himself right in front of middle stump, and Harish Padil has got no hesitation to raise his finger. So 3 on the board. And 3 balls completed. That means 20 runs required for the victory in remaining 15 balls. So 15 balls, 20 required to become the champion of this prestigious Nazar Champions Trophy 2024. The next ball, and new batter just coming to the middle is Samraz. He got a single there. The wicket single score Namuzan to 4 on the board. 5 on the board. 5 on the board, lead correction. 5 on the board. And here is the next one. Right on the wicket, going to be a wide. Oh, this is going to be a disaster. Absolutely disaster. This is the second time Gitesh bowling that wide +1, the wide +1, that is a 4 bonus run, and the score Namuzan to 7, and this is going to be a good start, and especially in the form of extras for Team Young Friends Urva. Right arm over the wicket, balls to Samra drives it onto the wide of that long range, and they will go in looking for the second, definitely, because the fielder will go into fumble there in the mid-wicket region, and before the throw coming from the fielder, Rajesh there, the ample time for the batter, Samras to complete that couple of runs. With that couple of runs, Kopa Damuzan to 9 on the board for the loss of 1 wicket, the final time in this over. Gitesh, right arm over the wicket, balls to Samras, sensible batting here from Samraj, you know exactly, they got the runs, what they really wanted in the first over. 10 runs coming from that over of Gitesh, and target which is a 23, and Gopi, the first over itself
that young friends they managed to back in the game because only because of the more than the contribution from the bat. I think that two wide deliveries which is given 4 runs for young friends that will become the turning point of this first over. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर 2 वाइड इस ओवर में गीतेश फेंक चुके हैं, 4 रन तोहफे के रूप में उपहार के रूप में प्रदान कर चुके हैं और ये निस्संदेह मैच का टर्निंग पॉइंट जैसा कि आपने फरमाया सतीश साबित हो सकता है. तो पहले ओवर पे 10 रन 23 होने के लक्ष्य पीछा करना एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कहलाएगी सतीश. Well, absolutely, but the match is not yet over because under this condition, still the opportunity is there for Friends bowler to back in the game. Again, a lovely sweep. Ball, very interesting to say that the surprisingly that batsman wanted umpire to give the wide, but the batsman has got a bat onto that ball. It was a defined aggression, but you can't blame for the batter. But sometimes batsman having no idea whatsoever when you're trying for the sweep shot whether the bat is involved or not. But anyhow, single is taken and scored Nazar to 11 on the board for the loss of 1 wicket. Again, Shrikant bows right over the wicket. This time, the ball is in there. Opportunity is catch. This is a result of too much defensive. The batter like Santosh, usually the man definitely wanted to hit the ball, but when it's a situation ask him to play that a little bit defensive frame of mind, just a rotation of strike he wanted to do in this situation. By doing that, Gopi is playing a different ball game, different technique is implemented and it pays the penalty for that. But this wicket will going to open the gate little bit for the team Friends bowler. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर संतोष है जो कि स्ट्रोक्स को चेक करना चाहते हैं. अंतिम क्षण में स्ट्रोक्स को इस वक्त धीरे से लॉफ्ट करके सिंगल रहना चाहते थे, लेकिन गेंद को उछाला जरूर, लेकिन काफी ऊंचा अंतिम क्षण में गेंद इस वक्त वाइड स्पीड ऑन फील्डर के हाथों में पहुंची. हालांकि वाइड स्पीड ऑन फील्डर को थोड़ा दौड़ जरूर लगानी पड़े अपने दाईं ओर, लेकिन गेंद को यहाँ पर बाखूबी लपकते हैं और संतोष का विकेट गिरना कुछ हद तक ड्रॉबैक साबित हो सकता है. अब जो कि इक्वेशन है 12 रन चाहिए जबकि गेंदे बाकी है 11 रन चाहिए, गेंदे बाकी है 10. अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, इट कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन. Absolutely, Gopi, it's going to be anybody's game, but left-hand batters are coming to the middle very surprisingly, and here is again bowler boss, a lovely delivery indeed. The wicket-keeper behind the same face to collect the ball, but just wait for the umpire single. It's a bat is involved. That's why the wicket-keeper Aman couldn't manage to gather that one, but anyhow the single is taken. With that single scope on Muzanto. 12 on the board. 12 means the target is 23. That means 11 more runs required for the victory, and delivery remaining is 9. Again the bowler Shrikant, right arm over the wicket, driven that one down to long off region. They're looking for a second. The fielder is a bit under pressure, but he handled the pressure very well. Because of that, he is not really left his eye into that ball, just kept the ball in the eye, so that batsman have to settle for the single. With that single scored Namuzanto, 13 on the board. That means 10 more runs required for the victory in remaining 8 balls. 8 balls, 10 runs required to become the champion. Here is Shrikant, right arm over the wicket, bounce. This time again they're going for the quick single. Haman hitting the stumps. Haman hitting the stumps means umpire Arish Padil has not have evidence enough to say anything. Umpire says not out. No, he's asking for the third umpire now. Asking for the third umpire definitely Gopi, it's going to be very, very difficult for the umpire in this situation because they need to do things, need to keep two things simultaneously, that the time is not we're having, the dark which is taken place. If you ask for the third umpire, that another 5 to 10 minutes will going to kill in this situation, and out pitch is a call from the third umpire. So thanks to the third umpire making a very quick decision, otherwise going to be a little bit time will going to take on here, but Pushparaj here quickly is making the decision that the batsman is out of the crease, and out of the crease in the sense the runs which is remains 10 required, the balls remaining 7. So what a match. 10 required from 7 balls. It's going to be anybody's game. Picking up each and every wicket means putting some pressure onto the young fans because it's not so easy condition for the new batter to handle this deliveries under this dark light. Shrikant will go into deliver. Next ball. 10 required, 7 balls remaining, final time in this over. Right arm over the wicket, sensible batting there from the batter Shagir this time, plays it down to short extra coverage and he will going to keep the strike. Last over remaining, 9 runs required for the victory, and Gopi from quarter final to semi-final, every matches is ended in a nail batting finish, but now the mega final is in progress. This match is also inching towards a nail batting finish because of 9 required from 6 ball. बिल्कुल सतीश,
क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल दोनों मैचेस काफी रोमांचक तरीके से समाप्त हुए थे और फाइनल मैच भी इस वक्त हेडिंग टुवर्ड्स और नई बैटिंग फिनिश 6 बॉल्स 9 रन रिक्वायर्ड 8 फॉर टाई 9 फॉर विन। अगर मैच टाई होता है तो टॉस के जरिए विजेता को निर्धारित यहां पर किया जाएगा। तो मैच निर्धारित ओवर द लास्ट ओवर ऑफ द टूर्नामेंट इज नाउ गोइंग टू बिगिन। अमन द बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक और सामना करते हुए इस वक्त शाकिर और 6 गेंदे 9 रन। तो अभी भी कहना पड़ेगा सतीश मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है। इट्स गोइंग टू बी 50-50 at this situation. Absolutely, Goped. Aman, one who did the magic in the previous match, now he is looking for one more magic in this final over, because this time he is depending on 9 runs, that time he depended 5 runs, and that's a big difference. Right now over the wicket, going for the big shot, driven that one, set down the ground, the ball is went in the gap, they're looking for the second, in comes a throw from the fielder, but it's wide throw coming from the fielder, so batter completed 2 valuable runs. Now 7 required from 5 balls. Shahnawaz is in non-Saiger zone. Shagir is in Saiger zone. 7 to get from 5. Aman will going to try for dotted delivery. Shagir will going to try for the scoring deliveries. Wait and see. Again the bowler. Back to his bowling mark. Right arm over the wicket. To Shagir. Shagir drives that one, but this time they will go in for the single. Right to going over fielder, over to, and Shagir is fell down, and I think he's in a danger. Oh my goodness. Shagir looks like has got injuries. Try to get the second run, maybe wanted to drag, and because of he wanted to, just because of he got a quick run, so immediately is seeing that is a overthrow, so he wanted to get the second run. By doing that, maybe is looks like it might be twisted ankle, maybe that is a feeling, and hopefully I hope that there will be no big injury here, and praying for his quick recovery. And says I request to please continue the match, and Shagir will going to leave the field. 1 run which is taken, that means 6 required from 4 balls. 5 for the tie, 6 for the win. New batter coming to the middle. So Shahnawaz, the hero of the previous match, Samir coming to the middle in the same situation. And well, now it's 4 balls remaining, 6 runs required for the victory. Shahnawaz is on strike. Aman is on attack. Under dark light, the mega final is in progress. Right arm around the wicket. To the right hand batsman Shahnawaz. Again driven that one to the extra cover region, just a single. That means in 3 balls, the needed 5 runs. 4 for the tie, 5 for the victory. 4 for the tie, 5 for the victory. And the new batter, the hero of the previous match, almost he earned more than 25,000 for 2 bounties. Now one more opportunity here to grab more money in the mega final. The wait and see, can he continue this, the luck in this match? Wait and see. The mega final. 5 to get from 3 balls. Aman is just changing his angle, bowling right arm over the wicket to Samir. Samir drives that one. No, just dropped the catch. Ball went in the gap. They're looking for the second. They can get easily that couple of runs. Even they're looking for the third, but they're not going for the third. Now it's absolutely opportunities created, but not so easy for the fielder to take the catch in this condition. Now 2 runs taken means 3 required from 2 balls. 2 for tie, 3 for victory. And if a match will be ended in a tie, the winner will going to decide it by toss. Again the match is inching towards the nail batting finish. Will it go into a one more tie here? 3 to get from 2. Samir is on strike. The hero of the previous match, Aman, is also in attack. It's a competition between the 2 heroes. Reverse sweep, plays it quite in the gap, but just for the single. Last ball, 2 runs required for the victory. Last ball,
2 for victory, 1 for tie, and what a match. Gopi, will it going to be one more tie here? What do you think about this last delivery? We can't tell anything, Satish, about this match because the match now stands in a balance. It could be anybody's game at this situation. देखते हैं इस श्रृंखला के अंतिम गेम the last ball of the tournament मैच किसकी ओर पलटता है या फिर मैच एक बार फिर से टाई पर समाप्त होता है और चैंपियंस को टॉस के जरिए यहाँ पर विजेता निर्धारित करना पड़ेगा. देखते हैं इस अंतिम गेंद पर क्या होता है. The last ball of the tournament is now coming up. Well, and Shahnawaz is on strike. He can be a hero. Haman can be a hero. Last ball remaining. 2 runs required for the victory. 1 for the tie. Here comes the last delivery of the tournament. And champion decided delivery. Going for the tie. Missing the line completely. The team, Friends Bala, are becoming the champion by single run, defeating young Friends Ohorua. And the celebration is on. Aman becomes a hero. Aman becomes a hero about that last delivery, which is the Shahnawaz couldn't manage to connect that one properly. The wicketkeeper completes the job. It's a victory of just a 1 run here for Friends Bala, and deserve the champion, defeating young Friends by single run. And what a fantastic tournament which is comes to an end. Thank you much. Thank you very much each and everyone for your great support for the success of this cricket tournament. And that's it. And ninth block, Nazar 9th block, they're celebrating their 20th year in a unique way after being successfully organized this fantastic cricket tournament in name of Nazar Champions Trophy 2024, and team of Friends Bala are becoming the champion. Young Friends who are becoming the runner-up. Now straight away we are going into the post-match presentation ceremony. Thank you, thanks very much, thanks a lot. A special thanks to the 3 umpires did a great job for this tournament. 4 umpires altogether. Umpire Harish Padil, umpire Pushparaj, umpire Mohan Eyade, and in the first Sunday, umpire Pradeep Kothari. All 4 umpires did a great job for the success of this cricket tournament. In our commentary box, myself, Satish Saleh, and Mr. Gopi, and Samad Khatipalla will going to give special thanks to the organizer to being the part of this successful cricket tournament. Thank you. Thanks a lot for this opportunity. And we are coming to the first match presentation ceremony, and it's over to Samad Khatipalla. Thank you. Thanks a lot. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಥಮದಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆದರದಿಂದ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ
ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದೂರ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಓರ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಫಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಆದರದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಕಬೀರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಇದರ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹಿಂದೆ ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ರಕೀಬ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಕೀಬ್ ರವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಇದರ ಓರ್ವ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಮನ್ಸೂರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಿರುವ BK ರಿಜ್ವಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ
ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು ರಿಯಾಜ್ ಬಿಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಹಿರಿಯರು, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದವರು ಆದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯರಾದ ಹಸನ್ ಬಾವಕ್ಕ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ರೂವಾರಿಗಳು, ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ಇದರ ಸಾರಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದ ಆ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಬ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಓರ್ವ ನಾಯಕನಾಗಿ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಬ ತಂಡವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲೆಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಶಫಾ ರವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದು, ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ಇದು ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಫಾರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮುಂದಿನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತರಾಗಬೇಕು. ಇದು ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಸರ್ವರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಫಾರವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದವರು, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾದವರು, ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಾದವರು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಂದೂ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟವರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸದಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಊರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರುವಂತೆ, ಆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಫಾ 9 ಬ್ಲಾಕ್. ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹುರುಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಫಾರವರ ನೆನಪು ಎಂದೂ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಚುರುಕು, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಬೆಳಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಭಗವಂತನು ಅವರನ್ನು ಹರಸಲಿ, ದೀರ್ಘಾಯುರಾರೋಗ್ಯ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡಿದ ರಕೀಬ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಫಾರ್ ಅವರು ಆ ರಕೀಬ್ ರವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಕೀಬ್ ರವರಿಗೆ ಸಫಾರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಮನ್ಸೂರ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಲಿಗೆ ಎಂದೂ ಹಸನಾದವರು ಈ ಮನ್ಸೂರ್ ರವರು, ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬಿಕೆ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು
ಆ ಊರಿನಲ್ಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಕಟವರ್ತಿಯಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬಿಕೆ ರವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಫಾರೂಕ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಫಾರೂಕ್ ರವರು ರಿಜ್ವಾನ್ ಬಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು 3 ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಥಮತ ಇಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ರವರೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು, ಅಲ್ತಾಫ್ ರವರು ಬಂದು ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ, ಸಲೀಂ ಅವರು ಬನ್ನಿ. ಸಲೀಂ ಅವರು ಬಂದು, ಸಲೀಂ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸಲೀಂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಫಿಷಿಯಲಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟವರು ಈ ಸಲೀಂ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಆ ಮೋಹನಿಯಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ, ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇರಲಿ, ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕ ವರ್ಣೆಯಾಗಿ 2 ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವರ್ಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಬೆಳಗಿದ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬನ್ನಿ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಶೀರ್ ಕೆಎಂ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಬಶೀರ್ ಕೆಎಂ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರಿಗೆ ಬಶೀರ್ ಕೆಎಂ ರವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಫಟಿಕ ಈ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರಸವತ್ತಾದ ವೀಕ್ಷಕವರ್ಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದ ಗೋಪಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗೋಪಿಯವರ ಬನ್ನಿ. ರಕೀಬ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಕೀಬ್ ರವರು ಗೋಪಿರವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಸುಹೈಲ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ತಪ್ಪಾಗದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಸುಹೈಲ್ ರವರು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರು ಸುಹೈಲ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಬಿಲಾಲ್ ರವರು ಬನ್ನಿ. ಬಿಲಾಲ್ ರವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಮೀದ್ ರವರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಮೀದ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಲಾಲ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ನಿಮ್ಮದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀಬೇಕಾದರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ನಿಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ 4700 ಜನ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ. ಇವರಿಗೆ ರಿಯಾಜ್ ಬಿಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಕಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಮದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲರ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಅವ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾನ ಅಷ್ಟು ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಮದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು
ಎಸ್, ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ನೋಡುವಾಗ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರು ಮೈಕನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವೇ ದ ಸಮಂತ್ ಕಾಟಿಪಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಕಮೆಂಟೇಟರ್. 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಾವು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಮಂತ್ ಕಾಟಿಬಾಲ. ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಮಂತ್ ಕಾಟಿಬಾಲ ಫಾರ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಸನ್ ಬಾವಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನು ಸಮಂತ್ ಕಾಟಿಪಲ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸಮಂತ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬ ಕವಿ ಕೂಡ, ದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾತಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಿರಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಿಯಾಜ್ ಬಿಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸಲೀಂ ರವರು ರಿಯಾಜ್ ಬಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಿಯಾಜ್ ಬಿಕೆ ಅವರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲೀಂ ರವರೇ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಸ್ವದ್ ಅವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ರವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ವದ್ ರವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಸುಹೇಲ್ ರವರು ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರಿಗೆ. ಹಿರಿಯರಾದ ಹಸನ್ ಬಾವಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಸನ್ ಬಾವಕ್ಕರವರಿಗೆ ಹುಸೈಫ್ ರವರು ಹಸನ್ ಬಾವಕ್ಕರವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ 3 ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ 2 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದೆ. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನೀಡಬಯಸ್ತಾರೆ. ಇದಾಗಿದೆ ಸಂದೇಶ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಇದು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಬೀರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಕಬೀರ್ ರವರು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಜುಲ್ಕಿಫ್ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದವರು, ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾದವರು ಕಬೀರ್ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಕುಡೊಂಕಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸಲೀಂ ಇವರಿಗೆ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮುನ್ನಾ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಸಲೀಂ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮುನ್ನಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಸಲೀಂ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ. ಸಫಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸನ್ಮಾನಿತರಾದ ಸಫಾರ್ ಅವರು ಸಲೀಂ ರವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಲು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು ಗೀತೇಶ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು ಗೀತೇಶ್ ರವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೀತೇಶ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷ. ಇವರಿಗೆ ರಿಯಾಜ್ ಬಿಕೆ ಗೀತೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಈ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತೇಶ್ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟದೊಂದಿಗೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅದ್ದೂರಿ ಆಟವನ್ನಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು 38 ಓಟಗಳು ಕೇವಲ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಜ್. ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಜ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಜ್. ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಜ್ ರವರು ಬನ್ನಿ. ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಮನ್ಸೂರ್ ರವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹರ್ಷದ್ ರವರೇ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ರೀಡೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿ, ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 12 ವಿಕೆಟಿನ ಸರದಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಎಳೆಯ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಕನಸನ್ನು ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡಿದ ಹರ್ಷಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲಾರವರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸತಾರ್ ಅವರು ಆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಗರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು, 1 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ 66 ರನ್ನನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ಅದೇ ಗೀತೇಶ್ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೀತೇಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ರಕೀಬ್ ರವರಿಂದ ಈ 1 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು, ಆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬಿಕೆ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗೀತೇಶ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗೀತೇಶ್ ಇಂದಿನ ಹೀರೋ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಹೀರೋ ಗೀತೇಶ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನ ಆಡಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಭರಿಸಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ ಈ ನಗರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು, ಆ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಮಹಾಶಯರುಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಹೀರೋ ಹನೀಫಾ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹನೀಫ್ ರವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಇಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇರಲಿ ಸಭಿಕರೇ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಚುರುಕುಗೊಂಡು ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಆ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಸೌಹಾರ್ದ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಭಾತೃತ್ವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಆ ನೈಜ ಆಟ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸೋತಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಕರತಾಡದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರನ್ನ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರೀಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿಯಾದ ಮಾಲಕರಾದ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ತಂಡವನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಗರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗಿದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಾರಥ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ. ನಗರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಮುನ್ನಾ, ಜುಲ್ಕಿಫ್, ಯಾಸೀರ್, ಅಸ್ವದ್, ನೌಫಲ್ ಹಾಗೂ ದೇವ್ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಸಾರಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಮಿಯಾನವನ್ನು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಬಳಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪರಸ್ಯವಾಗಿ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಮಾತು, ಹಿಂದದಿರಿ ದಿಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸದಿರಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಎಂಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports.